Hello, check. Hello. Good morning, everyone. Welcome to the King day number Sports. 2 of the Subscribe to the prestigious channel Premier League and press the 2025 bell season icon 7, for recent which is updates. proudly presented by Mudipu cricketers in this most beautiful Hello. Mudipu Welcome to Panchayat King Cricket Stadium. Sports. So we are going to Subscribe to start the with channel first and match press of the bell morning. icon for recent SMC updates. Pajir takes on United Mudipu, and here is the first ball of the day number 2. And first run as well from the bat of Gavrish. He's off the mark, and his team is also off the mark with a single. Winning the toss, elected to field first, captain of SMC Pajir, and just he wanted to exploit the morning condition here in Mudipu. Time is exactly 8:45. Here is the second ball. Oh, that will going to be a beamer which is gone over the top of the batters. So that white call by umpire with that extra. Scoreboard now moves on to 2 on the board. Bowler brought into attack from the water tank end, Karthik. Oh, lovely delivery, Yorker and beautifully bowled. Perfect one in delegation. Unfortunately, no signal coming from umpire. It means from the bat and pad. Umpire, is it leg by or bat? Leg by. So leg by, with that leg by, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Karthik. Full toss and pulls it away, and fielder is there in the deep, but he couldn't manage to get the catch. But after one bounce, he collected ample time for Gaurish to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 4 on the board. 4 without loss of any wicket. Karthik will going to continue. Right arm over the wicket. This time wanted to go for the off drive. Got just a single, and meantime Gaurish completed his second run. Total score now moves on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number first stage progress. A bright and sunny morning. The condition seems to be a little bit different today compared to the yesterday. No that much of wind in the ground, and again the ball is deflected from the leg by call by umpire. With the addition of that leg by scoreboard now moves on to 6 on the board without loss of any wicket in the over number first stage in progress. Last time in this over. Karthik in the power play, long off and deep mid wicket. The fielders are in the deep. No ball call by umpire, and played it down to mid wicket. They wanted to come back for the second, and ample time to complete that 2 valuable runs as well. So no ball call by umpire, and it was a sideline of the bowling crease, which is Karthik is overcrossed, so that no ball call by umpire, and a couple of runs for Prajwal. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 9 on the board without loss of any wicket. Karthik. Again the full toss. This time opportunity for the fielder at mid wicket, but it's a free hit delivery, so that no problem whatsoever for the batter. So 11 runs coming from the first over, and a good start for the team United Mudipu after completion of power play over. It's 11 without loss of any wicket. So 11, it might be the good start as considering the morning condition. 11 in 1 from the opening batters of United Mudipu. And it's going to be a very interesting day for cricket, the second day. Good morning everyone, welcome for the day number 2 on behalf of organizer Sri Mudipu cricketers. They're organizing their 7th year cricket tournament, and this is a day number 2 after that very successful day number 1 yesterday. We have witnessed some extraordinary performance from each and every teams. 10 teams participating, and divided into 2 groups, 5 teams in each group, and the competition to get the top 3 in each group to get into the Super 6. And after that, yes, 2 teams will going to qualify for mega final. There will be a competition for the 3rd and 4th place as well. And winners will going to get a huge cash prize of rupees 60,000 along with the SMC trophy, and runner-up will going to get 30,000 cash along with the
SMC trophy. And the third place winners get 15, and place getter will fourth place winner will going to get 15,000 along with the SMC trophy. Second over. Catch it is a call, and ball which is landed safely towards a short mid wicket region. Ample time for the batter to complete the single. Scoreboard numbers on to 12 on the board. That brings Prajwal into strike now. Prajwit, correction. Deep square leg long on. Mid wicket deep long off. Deep cow point. The fielders are in the deep for Prajwit. And here is the second one. Right arm over the wicket balls. Lovely delivery. Slower one from bowler. Lovely change of pace from Bharat. He maybe bowled as different one for Prajwit. He couldn't manage to read that slowness of the delivery. Beaten by the face, and wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Again, one more lovely delivery. He's really struggling, Prajwit, with that perfect delivery which is executed by the bowler in this morning condition. The two dot balls will going to creep the pressure onto the batters now. And the bowler Bharat so far has got a very successful start here. Driven nicely towards the mid-wicket region, but there is a fielder in the deep in the whitish long on. Before the throw coming from the deep, ample time for Prajwit to complete that two valuable runs. With that two valuable runs, scoreboard numbers on to 14 on the board. Over number second is in progress. The spread out field there, a lot of protection has been given in the onside region. 3 protection in the deep in the on, 2 in the off in the deep. This time he lofted handsomely. What a magnificent struck. The first sixer of the day, number 2. It's coming from the bat of Prajwit. Absolutely, he wanted to break the shackles in this particular over. He's struggling to read the slowness of Bharat's over, but this time he's just waiting for the delivery and hammering it down to deep mid-wicket boundary for a 6. With that 6, scoreboard jumps into 20 on the board without loss of any wicket. A lovely shot, isn't it? Perfectly struck with the power and the timing. This time, opportunity for the fielder. Wonderful catch taken in the deep long on. It was really good catch indeed there by Karthik in the deep long on. He had to cover the ground from deep long on to whitish long on. With that fantastic performance by the fielder in the deep, over number 2, which is also comes to end. After completion of over number 2, total score is 20 on the board, without the loss of for the loss of 1 wicket. 2 overs completed. Paras is a new batter in. One more technically sound player, good player for the side, is a perfect batter in a number 3 position coming to the middle. And wait and see how Paras will going to contribute from his bat. 2 overs completed, going exactly 10 runs per over. It might be a good one as for considering the condition of the morning. A little bit wind, because I can see that witness which is started to flow towards the commentary box end. It's going to be a very, very interesting. That shot selection is going to be a key for the success for the batters. And need to hit the ball with the direction of the wind. They can get some big shots. Four overs game, 2 overs remaining, excluding wides and no balls, 12 balls remaining. And wait and see how many runs the Mudipu will going to get here. And altogether, we are just wanted to see that very interesting match which is in progress. Again, driven down to deep extra cover region by Gaurish. Not more than a single. With the addition of that single, scoreboard numbers on to 21 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Kishore from the water tank and right arm over the wicket, bowls to Paras. Oh, lovely delivery. This time wicketkeeper fumbles. Chance of run out. Wide throw coming from the fielder. Again the overthrow. This is not a good fielding there from the wicketkeeper behind the stump. Not only is this fumble, it's by umpire. What is it? By or bat? Umpire by or bat? By signal korle. So couple of runs.
And 23 on the board. This time he lofted for us, but I don't think he will go to get the distance. Fielder there in the deep. And comfortably taken here. The Paras disappointed because I already mentioned it's always going to be a success for the batter to see the direction of the wind, where it is flowing. He just wanted to get the distance and extra cover from this end. It's not so easy. And he just pays the penalty for that. So wicket number 2 is back in the pavilion. Paras is not that much of effective in this particular match. Is out for duck. And wicket number 2 is back in the pavilion. 23 for the loss of 2 wicket. And, vital breakthrough here from Kishore. 23 for the loss of 2 wickets. It's a good comeback here by the bowling team SMC Pajir. They really knows that importance of this game. The new batter in is Neetu. Neetu lofted, catch it is a call. It's going to be a maximum. What a magnificent struck from the batter. It's not so easy when there is no wind at all in the ground. Getting the distance, I think you need to have more power. That's all involved in that particular shot from Neetu, isn't it? What a fantastic struck. Right from the middle of the bat, and sweet sound we can hear when he's contact that ball with this bat. Middle of the bat. Just clearing the man out there in the whitish long on. Again, one more delivery. Just chance of run out in the non-cycles end, and looks like the bowler fails to collect the throw. Of course, wicket is uprooted, but not from the ball. He's completely missed the throw from the field. And uprooted the stump with the empty hand. Its ball is not in the hands. So he survived the run out opportunities, which is missed out by the bowler in the relegation. So scoreboard now moves on to 30 on the board. Kishore. Oh, lovely delivery. Beautiful flighted one, isn't it? It's not so easy to get a flighted delivery. Over number 3, which is completed. After completion of over number 3, scoreboard 30 on the board. Run rate there absolutely maintained by the batters of United Mudipu, 10 runs per over. Last over remaining in their innings. Wait and see how many runs they will going to score here in this last over. Gaurish and Neetu, the 2 batters out there in the middle. Gaurish came as an opener for the side. He is so far dealing with the singles. And Neetu is the one who is absolutely is an aggressive frame of mind. Got 1-6 in the previous over. It was one of the best stroke of the day number 2. As he played that one against the direction of the wind, but he got the distance as well. So both the teams out of 2 matches, they won 1 match and they lost 1. So they are in 2nd and 3rd place. And this is absolutely going to be a very good contest between these 2 teams. SMC Pajir as well as United. This time across the line, they just wanted to get that one down to square leg region. Didn't got enough bat onto that. Inside edge of the bat, and they got a single for that. With that single, scoreboard moves on to 31 on the board. In the over number last is in progress. Abi, the bowler, brought into attack from Masjid end and round the wicket. Now he's changing his angle. He wanted to come over the wicket to the right-hander batter Gaurish. He's for a long time in the middle. Came as opener for the side, facing his next delivery. This time catch it is a call, but I think it's no one will going to get that. Landed safely. Not only landed safely, there is opportunity of couple of runs here for Gaurish. A very lucky couple of runs. Didn't quite middle that one properly. Ball is in there for a while. The bowler thought it might be the catch for the middle, but there is no fielder at on mid-on region. There is a long on. So he has to run towards the catch. It late reaction coming from the bowler. And that's why Gaurish survives. 33 for the loss of 2 wicket in the over number 4. And last is in progress. Right arm. Abi balls.
This time Gaurish is muscles that one. And this is a majestic. What a shot. That was one of the longest sixer of the 2 day of this cricket tournament. What a magnificent stroke. Is to put everything behind that stroke with the direction of the wind. The ball is landed straight to the roads, which is passing beside this cricket ground. What a fantastic stroke came from the bat of Gaurish. Much required. Scuba jumps into 39. Again one more full toss. Easy pick for Gaurish. You can't do the mistake of bowling a full toss to the caliber of Gaurish. His came as an opener for the side. Very cool and calm till the last over. When his time is required for his team to get some big shot. Here he go. 2 back-to-back sixes. That takes them into the big total now. 45. Definitely it's a very big score as considering the morning condition here. And it's going to be a chance of couple of runs. They will definitely going to try for the second because the last over is in progress. Gaurish desperately wanted to come back to the strike. What a fantastic batting performance here from Gaurish. 47, which is the total score. And the last delivery of their innings is coming up. Gaurish to take the strike. Abhi, very expensive. This time again wanted to go for the big one, but doesn't get hold up then properly. Just a single there. So that's it. The United Mudipu definitely there must be very happy with that total after seeing that 48, which is the total score for Mudipu. Then they set a target of 49 for SMC Pajir to win this match. But all we can see that some extraordinary batting performance, especially the Gaurish in the last over, scoring some important runs from his bat and remains unbeaten. And the last over is very expensive. 2-6. And altogether 18 runs came from that last over. It's good enough for the team United Mudipu to get very close to the 50. And 49, which is a target for Pajir and SMC Pajir. Definitely they are also got some very good batting lineup in their side. They will going to try for that 49. Even the condition is not that much of easy to chase down in the morning. But cricket is unpredictable game. It can be possible if they manage to bat very well to get to that 49 in the stipulated 4 overs. So altogether 24 deliveries and 49, which is a target. And we'll take a short break here in commentary box. And my friend Gopi will going to join in our commentary box the first time today in the second day and final day of this prestigious MPL Season 7. And good morning, Gopi. Welcome to the morning and welcome to the second and final day of this cricket tournament. And 49, I think it's going to be a good score in the morning session, which is scored by United Mudipu with the help of the innings of Gaurish and some contribution coming from the bat of Prajwit as well as Neetu. They are contributing from the bat, and looks like it's going to be the big total to chase down for the team SMC Pajir. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एमपीएल मुडिपू प्रीमियर लीग सीजन 7 2025 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया श्री मुडिपिन्नार क्रिकेटर्स एसएमसी मुडिपू ने, और 10 प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है। आज इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन का पहला मैच इस वक्त प्रगति पर, और यहाँ पर मुकाबला जारी है यूनाइटेड मुडिपिन्नार और एसएमसी पजीर के बीच में। और एसएमसी पजीर के सामने यूनाइटेड मुडिपिन्नार ने एक लंबा सा लक्ष्य रखा है 49 रनों का, 49 द टारगेट इन 4 ओवर्स। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा था, गेंद बल्ले पर नहीं आई और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है।
एसएमसी पजीर के लिए। तो एक लंबा सा लक्ष्य इस वक्त 49, द ह्यूज टारगेट इन फ्रंट ऑफ एसएमसी पजीर सेट बाय यूनाइटेड Mudipinnar in the first match of the day 2 of this prestigious cricket tournament MPL season 7 2025 और अगली गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त उछाला, एनफील्ड क्लियर करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद का पीछा करते हुए फील्डर बेहतरीन फील्डिंग नहीं, गेंद को नहीं रोक पाया और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। एनफील्ड क्लियर करते हुए पावर प्ले का फायदा उठाते हुए गेंद को इस वक्त उछाल दिया था, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से और काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद यहाँ पर गेंद को रोकने में असफल फील्डर और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त रेहान रचन के बल्ले से लगता हुआ और विनीत जो कि दूसरे छोर पर मौजूद नीतू गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ कर चुके हैं। पहला पावर प्ले ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर, पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर कहना पड़ेगा और नीतू इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस, लेकिन गेंद का फायदा उठाने में सफल, रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल 22 के रूप में और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर, 6 ऑन द बोर्ड, ये टू लूज एन विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। अब सामना करेंगे विनीत, जबकि नीतू इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त लंगोन की दिशा में, लेकिन फील्डर मौजूद जी नहीं, गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। विनीत के बल्ले से यह छक्का लग चुका है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक, ही जस्ट कॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन ओवर लंगोन फील्डर सेट फॉर अ मैक्सिमम और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। अगली गेंद इस बार अगेन द सेम ट्रीटमेंट, दिस टाइम 2 स्क्वायर, consecutive success for Vinit, 18 on the board। तो बूस्टर अंक यहां पर प्राप्त कर चुका है एसएमसी पजीर और 18 रन पहले ओवर में जोड़ चुका है, 18 ऑन द बोर्ड, स्टिल अ बॉल लेफ्ट और नीतू इस वक्त तैयार विनीत के लिए। यह गेंद इस बार विनीत ने गेंद को उछालना चाहा, लगभग जमीन के सहारे गेंद आती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। तो एक बेहतरीन ओवर अगर एसएमसी पजीर बैटिंग साइड के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 18 रन बने और इस 18 रनों की बदौलत एसएमसी पजीर बूस्टर अंक, बूस्टर पॉइंट जो है वो हासिल कर चुका है। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, एमएफसी स्ट्राइकर्स विल टेक्स ओवर नमो फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट मैच एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स ऑफ दीस टू टीम्स to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. तो जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए लिखित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना करते हुए इस वक्त रचन जो कि इस वक्त सामना करते हुए और पहली गेंद लेकर इस वक्त लिखित तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, फील्डिंग में जमावट करते हुए पहले ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और लिखित ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाया गेंद को इस वक्त आफ्टर फर्स्ट बाउंस, जब तक फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ रचन ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और विनीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। स्कोर है इस वक्त 19 रन, 49 द टारगेट, 19 ऑन द बोर्ड, दैट मींस exactly 30 runs required now in remaining 17 deliveries और गेंदबाज लिखित इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्ररक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और 5 फील्डर इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद। अगली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त डिफ्लेक्ट कर दिया है, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ इस वक्त विनीत ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर, 20 ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर
second in progress, and slowly and steadily this opening partnership is now building up. और ये गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए, और जब तक शॉर्ट फाइल फील्डर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर, 21 ऑन द बोर्ड, for losing no wicket in the over number second in progress. लिखित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार विनीत के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेटर लाइन, द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट and went into the hands of wicket keeper, and there is no possibility of any run. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर। लिखित फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, इस वक्त डीप स्क्वायर लेग फील्डर काफी पीछे, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, और एक ही रन के साथ बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर, 22 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर second in progress. Still they have a long way to go, 27 more runs now they have to score for victory in remaining 2+ overs. Likhit bowls. Again bowled out, just gone for a big one, and lost his off stump. The batsman Rachan dismissed, और ऐसा कहना पड़ेगा रचन गेंद को साइड पर उछालना चाहते थे, चूंकि गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहते हुए और उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराए, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। रचन आउट फॉर 5 एंड फर्स्ट विकेट गॉन, लॉस्ट फॉर एसएमसी पजीर। इट्स 22 for 1. This is the match number 1 of the day 2 of this prestigious cricket tournament. Mudipu Premier League Season 7 2025 is now progressing here. 10 prestigious franchise teams are participating in this tournament, and this tournament is proudly organized by Sri Mudipinnar Cricketers SMC Mudipu. और निश्चित रूप से एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जिसका आयोजन किया श्री मुडिपिन्नार क्रिकेटर्स ने SMC मुडिपू, इनके द्वारा इस सुंदर से विशाल से पंचायत मैदान मुडिपू के इस विशाल से मैदान पर इस बेहतरीन श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए, ये बेहतरीन श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त ओवर का, तो ओवर नंबर 2 समाप्त हो चुका है, 2 overs completed, and now it's 22 on the board. That means 27 runs to get from remaining 12 balls. और गेंदबाज गौरीश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, जहां तक गौरीश का सवाल है, उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी यहां पर की थी, 21 रन नाबाद उन्होंने बनाए थे। गौरी स्कोर्ड अनबीटन 21 रन्स फ्रॉम द बैट, और देखते हैं अब अपनी गेंदबाजी के जरिए वो यहाँ पर किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, काफी दूर दूर तक पहला ओवर क्षेत्र रक्षण यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और गौरीश इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। पहली गेंद को इस वक्त खेल दिया डीप मिड विकेट पर, फील्डर मौजूद, ओह फंबल, दिस इज एन एब्सोल्युटली फंबल, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लोपी फील्डिंग, और गेंद उनके हाथों को चीरती हुई सीधे निकल गई उनके दोनों पैरों के बीच से डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जहां पर सिर्फ 1 रन मिलना चाहिए था, वहां पर 4 रन मिले फील्डर की गलती की वजह से, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26 for the loss of 1 wicket, 23 to get now from remaining 11 balls. और गौरीश ये गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके, और गेंद विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो इस बीच डॉट गेंद, और अब गेंद कुल बाकी है 10 रन चाहिए और 23, 23 to get from 10 balls now. They badly required couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match. और गौरीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, विनीत सामना करते हुए इस वक्त, और विनीत जो कि अपनी टीम के लिए एक बेहतर पर इस वक्त खेलते हुए गेंद को उछाल दिया लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर मौजूद, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। विनीत का बेशकीमती विकेट गिर चुका है। गेंद को खेला था जरूर, लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे सीधे गेंद उनके हाथों में पहुंची, और विनीत की एक बेहतर पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। और जहां तक विनीत का सवाल है, उन्होंने बनाया 18 रन, 18 रन स्कोर्ड बाय विनीत, एंड he is dismissed now, and a second wicket loss for SMC Pajir. It's 26 for 2.
So 9 balls left now, 23 runs to get. और गेंदबाज इस वक्त गौरीश गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए और सामना करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज सचिन। और अगली गेंद लेकर गौरीश, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर, 27 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग बोथ ओपनर्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस, 22 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 8 balls. Still the equation seems to be stiffer now for the batting side. SMC Pajir और गेंदबाज गौरीश अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार उछाला, क्लीन हिट, एंड दिस इज गॉन ओवर द फेंस फॉर अ मैक्सिमम. Fantastically struck, came from the bat of Bharat. और ऐसा कहना पड़ेगा, just picked that one from the right spot and lofted that one down to deep mid wicket fence for 6. MFC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯಚೆವಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर, 16 रन चाहिए, 7 गेंदें बाकी, 16 रन टू गेट फ्रॉम 7 balls. अगेन जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, मिसेस. विकेट कीपर ने विकेट जरूर उखाड़े लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित. ओवर की समाप्ति 3 gone, 33 for the loss of 2 wickets, 16 runs to get from last over. That means in remaining 6 deliveries. तो सुबह का वक्त लगभग 9:15 यहाँ पर बचते हुए और धूप का प्रकोप उतना कुछ खास तीव्र नहीं, लेकिन यहाँ पर गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई और खिलाड़ी और दर्शक दोनों इस मैदान पर गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए और अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ 16 रनों की दरकार एसएमसी पजीर के बल्लेबाजों को. और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तो इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. 16 runs to get from last 6 deliveries. This is going to be a really testing time for the batsmen of SMC Pajir at this situation. और गेंदबाज जो कि इस वक्त शुरू करते हुए नया ओवर और देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में 16 रन एसएमसी पजीर के बल्लेबाज बना पाते हैं या नहीं. तो गेंद की परीक्षा इस वक्त करते हुए बल्लेबाज और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंद को इस वक्त लौटा दिया गया है गेंदबाज के हाथों में. So the first ball comes. पुनीत गेंदबाजी शुरू करते हुए 16 रन चाहिए अंतिम ओवर में यानी 6 गेंदों में. पहली गेंद लेकर पुनीत तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर and starts off with a wide. 34 on the board for losing 2 wickets, 15 runs to get from 6 balls now. और पुनीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. फुल टॉस, पुल दैट वन एंड दिस टाइम आई थिंक इट टेकन इनसाइड डिफेंस. हालांकि वहां पर कोल्यूशन जरूर हो चुका था, दोनों फील्डर टकरा चुके थे, लेकिन उनमें से एक फील्डर इस कैच को बेहतर जजमेंट के साथ लपकने में सफल और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका. 3rd विकेट गॉन. Sachin the man departs. Now it's 34 for the loss of 3 wickets. So no more friends are won the toss in the next match against MFC Strikers, and what the decision they will take, just we have to wait and see. Five balls left in their innings, 15 runs required. And new batsman, number 5 batsman is now comes out to the middle in these critical circumstances. हर्षा इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, मोटे कद के खिलाड़ी. इस वक्त 5 गेंदों में 15 रन चाहिए और देखना है कि इस मोटे कद के खिलाड़ी हर्षा जो हैं काफ़ी प्रतिभाशाली यहाँ पर
5 गेंदों में 15 रन बना पाते हैं या नहीं। तो पहली गेंद लेकर दूसरी गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज पुनीत तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट रन्स इस बीच नहीं मिलेगा। डॉट गेंद, 15 रन चाहिए, 4 गेंदे बाकी, 15 टू गेट फ्रॉम 4 बॉल। द थिंग्स गेटिंग मच स्टिफर नाउ एट दिस सिचुएशन। और जहां तक सवाल है इस वक्त दोनों बल्लेबाज कुछ बातचीत करते हुए, और पुनीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हर्षा के लिए लव्ड इट दिस टाइम, आई थिंक इट टेकन इनसाइड डिफेंस। लॉन्गॉन फील्डर ने आगे की ओर दौड़कर आकर बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका, और हर्षा की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट नाउ। And now the things getting much tighter now for the batting side. SMC Pajir, 15 to get from 3 balls. So new batsman is now comes out to the middle. 3 गेंदों में 15 रनों की दरकार, और अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के यहाँ पर एसएमसी पजीर को इन बचे हुए 3 गेंदों में विजय दिला सकते हैं। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, चूंकि तेज तरीके की विकेट कीपिंग, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, रन्स नहीं मिलेगा। अब ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर यूनाइटेड मुडिपिन्नार की विजय निश्चित अगर इन 2 गेंदों में गेंदबाज को नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो। Loved it this time, I think it taken inside the fence. So one more wicket fallen and now just a last ball left, 15 runs required. तो बेहतरीन गेंदबाजी इस अंतिम ओवर में पुनीत ने की है। सिर्फ 1 रन अब तक उन्होंने प्रदान किया है वाइड के रूप में पहले 5 गेंदों में, और 3 विकेटें प्राप्त करने में सफल। और अब अंतिम गेंद बाकी, 15 रन चाहिए विजय के लिए, और ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में अब बाकी रह गई। जस्ट फॉर्मेलिटीज नाउ रिमेनिंग इन दिस मैच इफ एनी मिरेकल थिंग्स विल नॉट हैपन इन दिस रिमेनिंग लास्ट डिलीवरी। So the last ball of the match is now coming up. 15 to get from last delivery. Puneet bowling to a new man. Misses. That's it. So 14 runs of victory for United Mudipinnar against SMC Pajir. And with that 14 runs victory, they back the complete points. So undoubtedly, the man of the match award goes to Gaurish, who scored unbeaten 21 runs from the bat. And he also picked up 1 wicket in his bowling. And because of this all-rounding performance, Gaurish of United Mudipinnar adjudged the man of the match. I request Gaurish, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. So the match number 1 has now completed just short while ago. The next match is now coming up between MFC Strikers versus Namo Friends, और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद। नमो फ्रेंड्स ने टॉस जीता है, और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर अगला मैच शुरू होगा। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So signal coming from umpire. So we're going to be the start of the match number 2 of the day number 2. And the two team, Namo friends, as well as the team we are going to take MFC Strikers. Winning the toss, the team Namo friends selected to field first. Here is the opening batters in the middle. Shiva will going to take the strike, first ball. And first run, of course, there is an opportunity of run there, but so striker Shiva is not interested, and no runs scored. And the Sushant is a non-striker. The bowler Adarsh. Adarsh bowling round the wicket, right arm. And he played it nicely, just defeating the infield, but protection there in the deep in the square leg, so that before the throw coming from the deep in the deep square leg region, ample time for the batter to complete their 2 valuable runs. With their 2 valuable runs, scoreboard now moves on to, of course, their first run here for the team. For the team MFC Strikers, 2 without loss of any wicket, show off the mark with that couple of runs. Adarsh round the wicket, right arm. Again, this time got outside edge of the bat, and one more single. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 3 on the board. That brings the batter Shishant into strike now. First time he facing his first delivery. 4th time in this over. Adarsh bowling from the water tank end. Right arm over the glove. Oh, beautifully bowled. Absolutely perfect leg cutter. The flighted one. It's not so easy for the leg spinner when you are bowling in the power play. You need to be a brave and gutsy enough to give some flight in the delivery. A very interesting bowling action here from bowler Adarsh. She's got a run up. The most of the leg spinner they're not having a run up, but this man has got a little bit run up, and so that he's getting some extra pace in his bowling by using that the run up very well. The couple of steps away from the umpire, and the accuracy in line and length is very important when you're bowling a leg spin deliveries with the run off. And he will go into ball the 5th time in this over. Again, a flighted, beautiful delivery. The excellent one there from Adarsh. No more friends. So far, all the matches they played yesterday, 3 matches, they batted first. But this is the first match they are bowling first. And out of 3, they won 2 matches. They got... this time they are appealing for something. No, I think the umpire now asking for the 3rd umpire. It might be they're asking for the stump out, I think. It is automatically done, maybe. The wicketkeeper claiming that it's automatically done. And the 3rd umpire will go in to see whether it was automatically done or not. And of course, the batter is out of the strike, out of the crease. But umpire have to see, 3rd umpire, that when the ball is fell into the stump after hitting a hand of wicket keeper, and well, it is going to be a chance of stump out or not. It's going to be very interesting. And King Sports having a light telecast of this cricket tournament, and they will definitely going to provide some angles here to get that best result of this appeal. The batter is safe because when it is automatically done, that time the batter is in the crease, and after that he left the crease. That was the confusion, and the right decision there from a 3rd umpire. Thanks to the technicians and the cameraman of King Sports for giving that perfect evidence of that automatic stump. But batter is safe, no damage done. First over completed. The booster over, what we are talking about, it is certainly in favor of the fielding team. Namo friends cricketers, only a 3 runs outstanding over from Adarsh. Nikhil Rabada, one of the most popular name as far as this MPL is concerned. Nikhil
with the jersey number 44, the same jersey number what Rabada is wearing in international cricket when he was performing. And double 4. And Nikhil so far has got a very good tournament from the ball. Now some kind of confusion here in the ground. I don't know what kind of confusion here. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರೀಶ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ತಂಡದ ಗೌರೀಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುಕೇಶ್ ಮುಡಿಪು ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಗೌರೀಶ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಗೌರೀಶ್ who played a match winning innings for his team, so that so there will be an impact player in the tournament, and Dhananjay coming as an impact player in the place of Sanath. So everything is clear now, and looks like it's going to be a start here. The Nikhil will going to start his second over after that first over. The very fantastic over on behalf of team Namo Friends cricketers. Adarsh got a very economical over of just 3 runs, and Nikhil will go into
starts his first ball. Starts with a wide warm-up delivery of the morning, warm-up for umpire as well in the morning. And extra will be conceded, and wide. That means 1 run added to total, 4 without loss of any wicket. Nikhil Baus. This time, lovely delivery. Shiva wanted to go for that slog sweep shot, but without coming to the line of the delivery, and misses the line completely. No run scored. Shiva. Nikhil, right arm over the wicket, ball to Shiva again. This time wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. Wide call by umpire, 1+1. And wide +1, 2 more to the total. With that couple of runs, Skubbad Namuzan to 6 on the board. 6 without loss of any wicket. So already Nikhil bowled 2 wides in this over. Now he's changing his angle, wanted to come round over the wicket to Shishant. Full toss, pulls it away. What a fantastic pull shot here. Everything is perfect in that pull shot. So much control. Full toss delivery, but not an easy full toss to deliver. The short man Shishant just rocks back and pulls it away. Beautifully down to deep square leg boundary. Into the fence for a 6. With that 6 there breaks the shackles. And they didn't got enough runs in the first over, and they have to bounce back in the second over with that beautiful full shot. Again, bowler is really struggling. 3rd wide of this over, and with that extra scoreboard Namuzan to 13 on the board. The good runs coming in this second over. This time I think is a better delivery. Shishant misjudging the line of the ball. He thought it might be a wide, but well within the reach of the batter. Shishant missed it completely. Nikhil again. Again far outside the line of off time. 4th wide of this over. Nikhil Rabada is struggling. The morning. Again it's going to be 1 more wide. It's absolutely, this has been a disaster. The 5th wide of this over. That means almost the over number, of course, the 4 overs match, it becomes a 5 overs match now because of 5 wides already in this over. This is altogether 6th wide, and that means he need to bowl the 12 deliveries. If he you manage to bowl the another remaining deliveries, fair deliveries, and of 6 extras in this over. 6th and 7th. This is looks like absolutely disappointment. 17, and really disappointing for everyone. As this time 6 number 2, outstanding struck there from Shishant. You know exactly the bowler is struggling to get his line and length, and you know he is not really having that much of confidence, the bowler. And Shishant hit that one right from the middle of the bat down to deep square leg boundary for a 6. This is turning out to be a very expensive over. 23. This means already 20 runs. Now Rabada is back into that good line and length. The 20 runs. Out of 20 runs, 7 wides. 2-6. And you can imagine that runs which is considered. Balls over, one of the longest over, the prolonged over from Nikhil Rabada. Of course, everyone disappointed. If Rabada will go in to watch this, he is more disappointed. 30. So Nikhil, absolutely. The morning, I think the condition where it is going to be a very good condition for the bowlers, but he is absolutely is under pressure, and I don't know what kind of pressure is felt in that morning as he bowled a huge over of 27 runs. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ದಿವ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಂತಾಡಿ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈನಿಂಗ್ ಟುಡೇ.
Of course, there is no sign of rain. There is no cloud. But here is raining of sixes in this particular match. All we can see that Shiva joining the party. After that, Sushant is dealing with the six in the previous over. The six, which is absolutely coming in such a big number here. 36 already on the board in the over number third is in progress. Sampath will going to deliver next ball. Right arm over the wicket. Balled him, cleaned him up, beautifully balled. And Shiva, the batter, absolutely misreading that beautiful leg cutter from Sampath in the occasion. That's really the fantastic partnership which is constant for the opening wicket by Shiva and Sushant. The both are contributed from the bat and even the contribution from the bowlers of their opposition. No more friends conceding so many extras. 36 for loss of one wicket and a partnership of 36 runs in for the opening wicket. The new batter in is a tall man for the side. Sujir is the batter. He got his first run, not convincing cricketing stroke, but he managed to get the single after they got the inside edge of the bat, under edge of the bat. Addition of that single score, but moves on to 37 on the board. Sampath to danger man Sushant. Already got 3 sixes in the previous over. It's going to be a misjudgment. My goodness, Sushant. He thought it might be wide. The shot after 2-3 bounce balls came into him. Right delivery. Again, lovely delivery there from Sampath in the occasion. Wicketkeeper absolutely did a great job. Appeal for stump out, but no damage done, just an excitement. Turning out to be a good over from Sampath. After that, 6 in the first ball. Back with some good deliveries. Swings and missed again. Wicketkeeper behind the stump, questioning over the umpire. And great comeback here by Sampath. 6 in the first, but after that, you can see that he bowled very tidy line and length. 3 gone after completion of over number 3. Total score 37. It's a good score on the board. 12.33 runs per over. The run rate, the progressing here for the team. The strikers we're talking about, the team MFC strikers. So these two teams so far in this tournament, team MFC strikers, they altogether they played 2 matches. They won 1 and lost 1, and but at the same time, number of friends out of 3 matches, they won 2, they lost 1, and this is the 4th match for number of friends. They are in trouble now as far as the run is concerned. Oh, this time wicketkeeper behind the stump, shying at the stumps. Missed it completely by call by umpire with that extra. Scored moves on to 38. And 38 for the loss of 1 wicket. The last over is in progress. And they needed some good deliveries in this last over for number of friends. After the conceding that 27 runs in the second by Nikhil. One of the big contribution. This time wanted to go for the big swing of the bat, but missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler Sushant. They wanted to go for the big shot because the wind direction is really forcing the batsman to go for the big shot on the onside region. This time he lofted. Will it going to be good enough? Yes, it is a good enough. The ball is sailing into the road. The Sushant is the man. He only loves to play the big shot. He doesn't want to take any single and couple, but he wanted to deal with the 6. This is a 4-6 coming from his bat. He's batting on 24 in 13 balls and all 24 in 6. That is the first single which is coming from Sushant's bat. And 25 for Sushant in 8 deliveries. 45 on the board. Last 2 balls remaining.
Sujir driven towards mid-wicket region. They wanted to come back for the second suicider. And that's it. The wicket is also falling. The Sujir is a man is back in the pavilion. Now last ball remaining in the innings of MFC. 46, which is the total score, and the over number last is in progress and last delivery remaining. So altogether high scoring game in the morning also. That's a 42 is a target, but batting first team is won the match. United Mudipu. Now is also a high scoring game, already 46. Last ball remaining. The batter came into middle, just number 24, and is gone, bowled out. Good over. And 1-6, which is came from this over. But altogether, completion of their 4 overs quota. MFC strikers really happy to see the total score, which is a 46. And only 1 over, which is bowled by Adarsh. That is only 3 runs conceded. But second over, the Nikhil Rabada, one of the expensive over of the tournament. He bowled 27 runs conceded with 7 wides and 2 sixes, 1 6 in fact. And then Sampath bowled over of 7 runs, and Dhanraj is also bowled very well the last over, 9 runs coming from that over. And altogether the contribution in the top order, Shiva scored some runs, scored 9 runs, and then Sushant, the highest run getter, scoring 25 runs unbeaten, and then Sujir, small contribution in the end. Altogether the 46, which is the total score, 47 going to be a target. And we'll take a short break here, and after a short break, Gopi will going to take over the microphone when the team captain, when the opening batters of team Namo Friends will going to chase this total. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त लक्ष्य है 47 रनों का, 47 the target for Namo Friends set by MFC strikers, and 47 they have to score in the stipulated 4 overs, and the innings now going to start। और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हैं। चेतन इस वक्त सामना करते हुए, निखिल यानी रबाड़ा इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और बॉलर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज, और इस बीच पहली गेंद लेकर तैयार। फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। चेतन द स्ट्राइकर एंड द बॉलर इज बॉलिंग टू द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स।
pretty huge target in front of them. 47 they have to score in the stipulated 4 overs. Sharath, the bowler, starts a fresh proceeding. First and only power play over of their innings is now going to start. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद सब कुछ इस वक्त तैयार पहली गेंद के लिए. फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. शरथ टू चेतन. Again, lofted. This time, in fact, it fell short of a fielder at the last moment. और बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को इस वक्त रोका उन्होंने और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. Just lofted that one down to a long off, just wide of the fielder and got a couple run for that stroke. और इन 2 रनों के साथ इस वक्त रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. It's 2 without loss in the first over. शरथ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए चेतन के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. तो 2 रन इस वक्त और बनाने बूस्टर अंक प्राप्त करने के लिए. और जहां तक सवाल है इस वक्त एमएफसी स्ट्राइकर से बनाए थे 3 रन पहले ओवर में, जबकि 2 रन अब तक पहले 2 गेंदों में यहां पर बना चुके हैं नमो फ्रेंड्स के बल्लेबाज. और इस बीच शरथ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को खेला इस वक्त मिड ऑन की दिशा में गेंद पहुंची. रन इस बीच नहीं मिलेगा और शरथ एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे चेतन के लिए. और चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. शरथ दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार swings and this time he's got the distance. Fantastically struck. He just picked that one right from the spot. And after that one in a style of a deep backward square leg fence for a massive one. They got the booster point with that 6 for Namo friends and a fantastic struck came to the bat of Chetan. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर. और अंतिम गेंद इस वक्त 5वीं गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार. शरथ दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन के लिए. यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त चेतन ने मिड ऑफ की दिशा में. मिसफील्ड वहां पर और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर. 9 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज निखिल यानी रबाड़ा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त विकेट कीपर करते हुए. और जहां तक निखिल का सवाल है, अपनी गेंदबाजी में 27 रन उन्होंने प्रदान किया था अपने 1 ओवर में. और यहां पर उसका पैच वर्क उन्हें करना है बल्लेबाजी के जरिए. और इस बीच ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, रन्स यहां पर नहीं मिलेंगे. और ओवर की समाप्ति. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड 9 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर नमो फ्रेंड्स चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 47 in 4 overs. They are 9 on the board. 38 runs more now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. With a required run rate of exactly 11.67 runs per over. Meantime, next match will be the match number 16. KFC Kurunadu will take over STC Ayodhya Nagar in the next match, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ KFC Kurunadu ಹಾಗೂ STC Ayodhya Nagar ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त सुशांत दूसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज सुशांत गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए. चेतन सामना करने के लिए तैयार. निश्चित रूप से चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त नमो फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को यहां पर कमबैक करने के लिए. और फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर सुशांत इस वक्त तैयार चेतन के लिए. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा. रन. ओ ओ ओ ओ ओ दिस कुड बी इन ट्रबल. दिस इज गॉन. दिस इज एन एब्सोल्युटली सुसाइडल मिसअंडरस्टैंडिंग. हारना और इसमें आखिरकार बल्लेबाज रबाड़ा यानी निखिल का विकेट गिर चुका है. तो पहले निखिल दौड़ कर आए
चेतन बाद में दौड़े, बाद में निखिल दौड़े और आखिरकार यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है स्ट्राइकर एंड पर रनआउट के रूप में। और 9 रनों पर पहला विकेट खो चुका है नमो फ्रेंड्स। निखिल यानी रबाडा डिपार्ट्स। नाउ इट्स 9 for 1 इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। संपत का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में। This is the match number 2 of this day 2 of this prestigious cricket tournament MPL. Mudipu Premier League Season 7 2025 is now progressing here, which is proudly organized by Sri Mudipu Cricketers SMC Mudipu. In the celebration of their 7th year, they are organizing the prestigious cricket tournament in the name of MPL 2025 Season 7. 10 prestigious franchise teams are participating in this tournament. 5 teams each divided in 2 groups. और यहाँ पर मुकाबला इस वक्त जारी है नमो फ्रेंड्स और एमएफसी स्ट्राइकर्स के बीच। और गेंदबाज सुशांत गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, गेंद पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, डॉट गेंद। और फिर से एक बार गेंदबाज सुशांत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नहीं खेल पाया। एक बार फिर से विकेट कीपर ने तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स को बिखेर कर ले जाता हुआ ये थ्रो। और गुड डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर सुशांत। और गुड डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर सुशांत इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार। इस बार पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन का इजाफा। It's a leg by declared by umpire. Single to end the over. 2 overs completed. 14 on the board. 1 wicket lost. Still, the batsmen of Namo friends are searching for the right track. And let's straight away coming back to the equation. 47 minus 14. That means 33 more runs required in remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. The required run rate is now gone up to exactly 16.5 runs per over. और निश्चित रूप से अब ऐसा कहना पड़ेगा नमो फ्रेंड्स को चौके या छक्के इस मैच में वापस ला सकते हैं। फिलहाल तख्ता यहाँ पर एमएफसी स्ट्राइकर्स का भारी लगता हुआ, लेकिन कमबैक करने का मौका जरूर है इस वक्त नमो फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को एक आक्रामक बल्लेबाजी के जरिए। थोड़ा बहुत शॉट, तीसरा ओवर शुरू होता हुआ। और गेंदबाज सुजीर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। फर्स्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। सुजीर इस वक्त तैयार, संपत्त सामना करते हुए पहली गेंद। फर्स्ट बॉल ऑफ सुजीर ओवर इज नाउ कमिंग अप। और पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। 12 balls, 33 runs required. Still some fielding adjustments is going on there. और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। सुजीर, फर्स्ट बॉल कम्स। Just gone for a big one, stuck to his leg. Can't got any run for that stroke. Dot ball bowled. Now 3 runs required in every ball. 33 to get from 11 balls. और धीरे धीरे लक्ष्य इस वक्त कठिन होता हुआ हर डॉट बॉल के साथ। सुजीर की गेंद एक्स्ट्रा क्विकर, बेहतर गेंद थी इस वक्त लेग स्पिन के तौर पर। लेग स्पिन से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। ऑफ द टोस गेंद कॉन्साइड पर मोड़ना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 10 balls left now, 33 runs required. सुजीर इस बार लेग स्टंप पर आती हुई वाइट का इशारा, और वाइट के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರಂತಾಡಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
So fourth time in this over, Sujir bowls. Lost it. This time clean it. Just over the commentator box stand. And this is a massive stroke came from the bat of Chetan. और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए गेंद को उछाल दिया इस वक्त छक्के के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 22 रन. स्टिल 25 टू गेट फ्रॉम 8 बॉल्स. और सुजीर इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर था विकेट तैयार. यह गेंद एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास है लेकिन इस बार गेंद कुछ ज़्यादा उछाल लेते हुए टिप्पा खाने के बाद और सीधे पहुंची विकेट. कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. सुजीर इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट. 25 टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स नाउ. और गेंदबाज लूजर वन बट couldn't got the advantage of that. Wide declared by umpire. Single run added. 23 on the board for losing 1 wicket. और एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में. एक लंबा ओवर इस वक्त सुजीर का प्रगति पर. 23 on the board. This time not quite mid-wicket. In fact, he's got a single. He keeps a strike. 24 for the loss of 1 wicket and 3 overs completed. 23 needed from last over. 6 balls, 23 runs required. चरित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 6 गेंदों में 23 रनों की दरकार. 23 नीडेड इन रिमेनिंग लास्ट 60 overs. दैट मींस फ्रॉम द लास्ट ओवर. और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार चेतन इस वक्त सामना करते हुए चरित की गेंदों का. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण यहां पर दिखाई देता हुआ. और चरित ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रहा चेतन के लिए. फर्स्ट बॉल कम्स. And starts off with a wide. 25 on the board. 22 needed from 60 deliveries. और गेंदबाज चरित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. This time misses by wicket keeper. And again a wide. So he's got a problem on his right length and line of the situation for the bowler Charit. 2 लगातार वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं. अब 21 रन की दरकार 6 गेंदों में. 6 balls 21 runs required. तो गेंदबाज इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार. चरित अपनी पहली सही गेंद की तलाश में. इस बार चूंकि फ्रिंडली. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ स्टंपिंग मेड बाय विकेट कीपर. Absolutely in a fraction of second he just flicking the wicket after getting the ball in his hand. This is an outstanding piece of wicket keeping. और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. और लगभग बिजली की रफ्तार में इस वक्त विकेटें उखाड़ दिए विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट करते ही. और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत ये विकेट चेतन का गिर चुका है. 5 balls now remaining and 21 runs required. Chetan is backing to pavilion after being scoring 15 valuable runs into his credit, including 2 sixes. And the second wicket loss for Amma friends. It's 26 for 2. New batsman is now comes out to the middle. Dhananjay as a number 4 batsman for Namo friends. और वो इस वक्त सामना करेंगे चरित की गेंदों का. और चरित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए
ये गेंद उछाला इस वक्त धनंजय ने, लेकिन मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे अपने टोपी को उन्होंने जमीन पर फेंका, लेकिन कैच इस वक्त उन्होंने नहीं छोड़ा और इस कैच को बेहतर तरीके से अपने पीछे की ओर जाकर लपकने में सफल फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर। और ये विकेट यहां पर गिर चुका है धनंजय का पहले ही गेंद पर गोल्डन डक के रूप में। And now the bowler is on a hat trick, or four balls left and 21 runs required. The things getting much tighter now at the situation for the batting side. सिर्फ चौके और छक्के इस वक्त उन्हें इस मैच में वापस ला सकते हैं। न्यू बैट्समैन संजय इस वक्त, और हैट्रिक गेंद लेकर गेंदबाज चरित इस वक्त तैयार। हैट्रिक बॉल्स कम्स फ्रॉम चरित। This time turns it around the corner. Just a single is got. 27 on the board. 3 balls left, 20 runs required. अगर 3 छक्के भी लगाते हैं 3 गेंदों पर तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड फेंकते तो शायद कमबैक करने का मौका है बल्लेबाजों को इन बचे हुए 3 गेंदों में। Lofted down to deep mid wicket and taken comfortably inside the fence. One more wicket fallen, and now just 2 balls left, 20 runs required. It looks like just formalities now remaining in this match if any miracle things will not happen in this remaining 2 deliveries. 2 गेंदे बाकी, 20 रन चाहिए अब। ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई अगर कोई चमत्कारी घटना ना घटे तो। किरण का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में। चरित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार नए बल्लेबाज किरण के लिए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ड्राइव कर दिया मिड विकेट की दिशा में। रन इस बीच मिल चुका है, नहीं मिला है, देखना पड़ेगा मिला है या नहीं। तृतीय अंपायर के लिए मांग इस वक्त की गई है। Not out is the call and the batsman survived. Just 1 ball left and 19 runs to get. तो जहां तक सवाल है, रनआउट पहले वहां पर पैर टकराया था जब विकेट उखाड़ने की कोशिश की थी। तो जहां तक सवाल है, इस वक्त इस गेंद पर बल्लेबाज बच चुके हैं। 19 रन चाहिए अंतिम गेंद पर। Beaten, that's it. 18 runs comprehensive victory for MFC Strikers against Namo Friends, and with that 18 runs victory they back the complete points. So the man of the match undoubtedly Sushant, who scored 25 runs including 4 massive sixes, and because of that he adjudged the man of the match. I request Sushant of MFC Strikers, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizer. Sushant of MFC Striker adjudged the man of the match. So the next match, match number 15 is now coming up live exclusively right in front of you between match number 16 in fact is now coming up live exclusively in front of you between KFC Kurunadu versus STC Ayodhya Nagar. KFC are won the toss and that match starts within just short while and we'll be back. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगला मैच शुरू होगा। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So thank you very much. Welcome to the match number 3 of the day number 2, and Badakatte correction KFC Kurnadu takes on STC Ayodhya Nagar, and KFC Ayodhya Nagar captain won the toss, elected to KFC won the toss, elected to field first. The first ball, top edge, but ball is landed safely. It's in front of that short extra off field at the first run for Ramesh and STC Ayodhya Nagar. They got their first run in the from the bat of Ramesh. Ashish, the bowler, has been introduced from the road end. One without loss of any wicket. The power play, the booster over, is in progress. Long off and long on, the fielders are in the deep, and left-hand batter is on strike. Suraj. Suraj is the icon player for the side. Will going to take the strike. This time lofted at one, right in the gap towards the wideish long on region, but fielder is there in the deep long on. Will going to cut it off, just moving to his left quickly and denying the boundary, and just inside the boundary line he managed to stop that one. Ample time for Suraj to complete the single. He's got his first run, so 2 without loss of any wicket. Both opening batters off the mark with the single. Ashish bowls. Nicely bowled. Good delivery indeed. Right on the midland off stump, and the batter Ramesh, the experienced campaigner, played it down to short mid-wicket region for a single. And with that single, score moves on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Ashish, 4 time in this over. Suraj swings and missed. He's cleaned him up by the beautiful delivery. Almost that ball is coming into the batter because left-handed batter is on strike. So it might be the incoming delivery for Suraj. Missed the line completely. And just he wanted to take advantage of the fielding restriction in this power play. The booster over, always the batsman wanted to get some runs in the form of big shot and just pays the penalty without coming to the line of the delivery. It, just wanted to go for the big shot, pays the penalty. Ashish strikes with excellent delivery to dismiss the danger man Suraj. So 3 for 1. Vicky is a new batter in. One more left-hand batter, replacing the left-hand batter Suraj's place. Ashish bowls outside the line of off stump. Going to be a wide first extra of this over, and with that extra score, but moves on to 5 without 5 for the loss of 1 wicket. 4 late progression, 4 on the board. Again, played it back to bowler, not for run. Great line and length there from Ashish. It's not easy to come and bowl in the power play overs when the batters are looking for some powerful cricketing stroke. Lofted safely down to deep long on. There's opportunity for a comeback for the second here for the batter Vicky, and a couple of runs, and with that couple of runs scoreboard now moves on to 6 on the board. Over number first pitches comes to an end. The great over, and as far as the team KFC Kurnad is concerned, this is going to be a good over. And because the power play over is always difficult for the batter, difficult for the bowler to restrict the runs. Not only he got economical over, but he got the wicket of Suraj back in the pavilion. So slow start for the team STC Ayodhya Nagar. So KFC Kurnadu, and yesterday they played 2 matches, but they lost 2 matches in their opening day. But batting team STC Ayodhya Nagar, out of 3, they all 3 matches, so they are in the top in the points table, and they just wanted to continue their winning track. And he's also got a 3 booster points in all 3 matches, so they deserve that top in the points table. The second over, right arm over the wicket. And they wanted to go for the expansive drive,
on the offside region. Doesn't get hold up that one properly. Mistimed it, and opportunity for Ramesh to pick the single, and with the single scored Namuzan to 7 on the board for the loss of 1 wicket. KFC could not have to break that shackles. The winning track, they wanted to come back after that after that 2 loss in yesterday's match, opening day of prestigious Mudipu Premier League 2025 season 7. Driven nicely in the gap, and Ranjit managed very well to stop the boundary using his right hand at the right time, and when the ball is almost racing towards the fence, but well stopped by the fielder. Just a couple of runs. With that couple of runs, scored Namuzan to 9 on the board. Ranjit, the fielder, stops the boundary. Vignesh. This time, this is going to be a strong point of the left-hand batter. The Vicky always loves to play the shot. Magnificently struck right from the middle of the bat. The overcast condition, not a huge wind in the ground, but still he managed to get the distance by hitting the ball perfectly from the middle of the bat. And first sixer of their innings as well. This time one more loose delivery, but this time he played it down to square leg. Lovely piece of fielding by Samit, the young man down at the deep square leg. Behind the square, just a single. With the addition of that single, Skobana moves on to 16 now for the loss of 1 wicket in the over number 2 is in progress. Vignesh, this time to Ramesh. No ball call by umpire. Batsman slashes it, but straight to the hands of fielder, but no ball call. So that he survived overstepping. So one more single which is added, 18 on the board. One more addition to the total in the form of leg by. 19 on the board. The runs are coming in the second over. Even though first over is a quiet over, the 6 runs came from that over. But this is turning out to be a better over from the point of view of STC Ayodhya Nagar. Inside out cricketing show. Lovely shot. That was a magnificent struck. And we will going to get a couple of runs for that, but it's an absolutely perfect struck. Just making a room to play the shot. Inside out cricketing stroke there from Ramesh. That makes the placement nicely. Couple of runs turning out to be great over from the point of view of STC Ayodhya Nagar. After a completion of over number 2, total score is 21 on the board. 21 in the sense of 14 runs coming from 14 or 15 runs coming from this over. 15 runs coming from that over of Vignesh. Ashish starts well with the 6 runs in the power play, the booster over. The second over expensive for Vignesh because Vicky got 1-6 in that over. Altogether 21, 10.5 runs per over, run rate progressing. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ SVC ಹೂ ಹಾಕುವ ಕಲ್ಲು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Samit, the young man, brought into attack and played it nice, looking extra cover drive. No one there in the deep ball. Lovely placement. Vicky has been outstanding. There is a long off, there is extra cover, but he's sent that one between that almost towards a wideish long off boundary for 4 runs. Excellent cricketing stroke. We are seeing some big shots so far in the tournament, but this is all the technical cricketing stroke. Classical extra cover drive from Vicky. Scored moves on to 25 quarter century for STC Ayodhya Nagar. Samit bowls. This time batter just wanted to get that one in the onside region, missed by the bat. So that leg by call by umpire. With that extra score, but moves on to 26 in the over number 3 in progress.
So different weather condition today. It might be the good condition I want to tell you, because time is 10 past 25 in the morning, but we are not having that much of bright sunny morning. What we have witnessed yesterday is absolutely very hot condition, but this has been outstanding weather condition for the second day for all cricket lovers as well as for the umpires. And wait and see how long this condition will going to continue. Hoping for the same condition till the evening. The cloudy weather condition. Summit to continue. Right arm over the wicket balls. This time hit that one straight to the hands of Rakesh. He's a tall man. So for the tall player fielders is always so easy. Little bit jump have to make to get that one. And of course the batter is a little master. Ramesh couldn't manage to get the distance as he played nicely. That a lovely slog sweep shot, no doubt at all. But placement is not right. Even he's played a little bit in the flatter version. So even the direction of the wind he played, couldn't manage to get the distance. So Rakesh got a very good judgment in the deep in the square leg region. So wicket number 2 is back in the pavilion of STC Ayodhya Nagar. And replacing him is Guru Dikshit. He's a one more great all-rounder for the side coming to the middle as a number 4 batters for the side. 26 on the board for the loss of 2 wickets. Samit got a vital breakthrough. ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ವಿ ಸಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ದ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ here for Guru Dikshit as the ball is landed safely over the head of the bowler. Didn't time that one properly. And one more single. With that single score moves on to 27 for the loss of 2 wickets in the over number 3 is in progress. The left-hand batter Vicky is on strike and so far he's looking so good. This has been one more magnificent. It is a glorious. This is what I am just talking about. The most of the players are dealing with some big shot, but this is a man who is playing some technical cricketing stroke. This is one more, the poetry in the motion. The way that is delivered that stroke has been outstanding. Delightful extra cover drive. The 2 magnificent strokes played on the offside region by Vicky. Technical cricketing stroke again outside the line of leg stump. Well within the reach of the batter. It's gone. Ball hits a stump. Good comeback here by young man Samit. He's a very strong player in the offside region where compared to that the delivery which is pitching outside the line of leg stump is not that much of comfortable. But good innings which is comes in India of Vicky. He really played some enterprising cricketing stroke. And the entertainment innings which is comes to an end of Vicky is contributed 20 valuable runs from his bat with the help of 1 6 and 2 boundaries. So completion of over number 3, it's the 31 on the board. The 10.33 runs per over, the run rate progressing for team STC Ayodhya Nagar. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 31, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. Srikanth, the new batter in, but in the striker's end, it's Guru Dikshit will going to take the strike. The bowler Rakesh brought into attack, starts with a beautiful delivery outside the line of off stump. Good enough for the fresh leg, the new batter, to defeat his bat. The wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Left arm. Top edge, catch it is a call, but ball will go to land it between the mid off and the long off, and opportunity of the run out because Guru Dikshit wanted to get come back for the second. This is asking for trouble. Only a single. With that single score, but moves on to 32 on the board. Rakesh, left arm, round the wicket. Again, lovely delivery indeed. Always the left arm bowler is always useful. Not so easy for the right-hander batsman when he is coming. Ball is coming into the batter with the extra deviation in the delivery. Rakesh, bounce left arm. Again, missed it completely. Lovely piece of bowling so far
from Rakesh is keeping that very tidy line and length. The batter Srikanth is not looks that much of comfortable. So far, only a single run conceded in 4 balls, turning out to be a great over from the point of view of KFC. Kurnadu, last 2 deliveries left in their innings. This time he got a connection, but I don't think we'll go to get the distance. Yes, he got the distance. My goodness. Srikanth breaking the shackles. Immediately when he's got the distance, everyone is shouting in the right of our commentary box, Appu, we want one more. 38. It may be the nickname of Srikanth, Appu. Last delivery. Again, lofted straight down the ground. But, oh my goodness, Guru Dikshit is absolutely lost his balance there in the Tigers and tried to get the second run. Just a single, but he given a finishing touch, Srikanth, in that last over. But it's a good over. 8 runs came from that over. After completion of over number 4, total score is 39 of the team SDC Ayodhya Nagar. And one more good batting performance by the batters, especially the Vicky is leading from the front. He scored 20 runs from the bat, and in the end Srikanth is contributing with the 7. And in the beginning Ramesh has also scored some runs from his bat. Altogether it's a 39, which seems to be a good total. Set a target of 40 to win the match. Asking run rate for the team KFC Kurnadu is exactly 10 runs per over. They have to get 40 in 24, and wait and see how well the team KFC Kurnadu will go in to get their first victory of this tournament, and wait and see how well STC Ayodhya Nagar will go in to continue their winning track in this day number 2 as well. It's going to be a very good competition, and before the innings will go into start, it's a time to change in commentary box as well as change in voice and language. It's over to Gopi in Hindi language. Thank you. धन्यवाद सतीश. So 40 the target, pretty competitive target in front of KFC Kurnad set by SDC Ayodhya Nagar. And the inning started. First ball bowled outside the off stump and a dot delivery. And the bowler starts off with the dot delivery और अगली गेंद को इस वक्त खेल दिया. स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर. 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. 1 रन पे लाके से नुकसान के बिल्कुल बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है. क्लाउडी एटमॉस्फेयर, नीलाकाश तले घने बादल जो कि नीलाकाश को इस वक्त ढक चुके हैं और कुछ हद तक गर्मी से राहत इस वक्त मिलते हुए खिलाड़ी और दर्शकों को. ये गेंद रिवर्स शॉट, दिस टाइम चांस एंड टेकन एट गली, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, एंड गली फील्डर फाइनली मेड नो मिस्टेक. First wicket gone. Rakesh the man dismissed in his very first delivery for Golden Duck, and
KFC Kurnool are 1 for 1 in the first over. So the new batsman is now comes out to the middle. संकेत और विकी इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ तक के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए और अगली गेंद lofted, not quite mid wicket. In fact, this could be one more wicket and taken comfortably by the fielder at mid wicket, short mid wicket. In fact, second consecutive wickets fallen for KFC Kurnool. They are looking in trouble now. In fact, it's one for the loss of 2 wicket in the over number first. So KFC Kurnool पहले 2 मैचेस में कल उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर अगर इस मैच में भी वो हारते हैं तो इस श्रृंखला से लगभग बाहर हो जाएंगे और जहाँ तक सवाल है देखना यह है कि इस मैच में क्या वो विजय दर्ज कर पाते हैं नहीं। इनटू द फेंस, डाउन टू एक्स्ट्रा कवर एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था बल्लेबाज आशीष ने और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर KFC कुरनाड के लिए। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, एक गेंद पहले इस वक्त इस मैच को जीतना बेहद जरूरी बन चुका है अगर इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में उनका अस्तित्व बरकरार रखना है तो। और विकी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तो इस बीच अगेन टॉप एज एंड ही गॉट द डिस्टेंस एट डीप बैक ऑन स्क्वायर लेग, 6 रन्स। तो बूस्टर पॉइंट इस वक्त हासिल करते हुए KFC कुरनाड और बेहतरीन स्ट्रोक आशीष का और डीप बैक ऑन स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर गेंद 6 रनों के लिए। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, दे गॉट द बूस्टर पॉइंट, इन फैक्ट 11 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। और जहां तक SDC अयोध्या नगर का सवाल है, पहले 3 मैचेस में तीनों मैचेस वो जीत चुके हैं और इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त करने की उनकी साध्यताएं काफ़ी उज्जवल हो चुकी है और इस मैच में भी अगर वो विजय दर्ज करते तो आसानी के साथ इस श्रृंखला के अगले दौर में वो प्रवेश प्राप्त कर जाएंगे। ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ SVC ಹೂ ಹಾಕುವ ಕಲ್ಲು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. सो सेकंड ओवर स्टार्ट्स और गेंदबाज सूरज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सूरज स्टार्ट्स फ्रेश प्रोसीडिंग्स और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का रूपक सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर सूरज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट अगेन ड्राइव कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 12 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों ओवर द विकेट स्वीप करना चाहा, गेंद इस वक्त तो इस वक्त गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है। इस बीच पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर और रन्स यहां पर मिलेंगे 13 रन, 13 ऑन द बोर्ड। दिस इज ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस और सूरज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला, फील्ड क्लियर करते हुए 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और थ्रो यहां पर स्ट्राइकर एंड पर पहुंचता हुआ और रन्स जहां तक सवाल है मिलेंगे 14 ऑन द बोर्ड। प्रीटी गुड ओवर प्रोग्रेसिंग सो फार फ्रॉम सूरज और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर सूरज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, इस बार गेंद को उछाला, काफी ऊंचा मौका, एक्स्ट्रा कवर फील्डर के लिए और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है।
Not quite get that one from the middle of the bat. And finally, deep extra cover made no mistake. One more wicket fallen. KFC Kurnool are now looking in trouble. It's 14 for 3. Samit, the new batsman, is now comes out to the middle as the number 5 batsman for KFC Kurnool. A partnership is badly required for KFC Kurnool to get back into this match. Ugly again. This bar lofted into the hands of the same fielder. Consecutive catches for him. And one more wicket fallen. First ball, golden duck dismissal for Samit. And a 4th wicket loss. They are looking deep in trouble. In fact, it's 14 for 4. So 2 overs completed, 14 on the board. Really a testing time continuing here for the batsmen of KFC Kurnool. सिर्फ 14 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद जोड़ चुका है. अब रन से चाहिए 26 और गेंदे बाकी हैं 12, यानी 2 ओवर का खेल अब बाकी उनकी पारी में. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज प्रवीण ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. फर्स्ट बॉल ऑफ प्रवीण ओवर इज नाउ कमिंग अप. First ball comes. Praveen. Twelve balls and 26 runs required. Pretty stiff target in front of KFC Kurnool. लेकिन नामुमकिन नहीं. और देखना यह है कि KFC Kurnool के बल्लेबाज इस 26 रनों को बचे हुए 12 गेंद यानी 2 ओवर में बना पाते हैं या नहीं. प्रवीण पहली गेंद लेकर तैयार था. इन्हें तो ओवर द विकेट ये गेंद ड्राइव कर दिया. इस वक्त गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर. फील्डर मौजूद. थोड़ी सी मिस फील्ड है. बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा. और सिर्फ 1 रन के साथ संतुष्ट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर. 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. और तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है इस बीच. और प्रवीण अपनी ओर की अगली गेंद. अच्छी गेंद, बेहतर गेंद इस वक्त ऑन टू द स्टंप्स एंड दैट इज द विकेट नंबर 4 for KFC Kurnool. Just dragged down to the stumps at the last moment by the right-handed batsman. And one more wicket fallen. They are looking deep in trouble. KFC Kurnool are 15 for 5. न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. और ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को ड्राइव करना चाह चुके और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी है. हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ. गेंद को झाला स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर. स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. विकेट नंबर 6 डाउन. Wickets falling like a pack of cards at the situation for the batsmen of KFC Kurnool. They lost their 6th wicket. And now they are really struggling now. It's 15 for 6. So jersey number 3 is now comes out to the middle. और बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए टॉप एज. मौका एक बार फिर से मिड ऑफ फील्डर के लिए. Second consecutive catch for him. And one more wicket fallen. 7th wicket down. Now 15 for 7. 7 balls remaining and 25 runs required. 1 ball left in this over. तो हैट्रिक का मौका इस वक्त प्रवीण के सामने और देखना यह है कि वो अपना हैट्रिक का परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं. न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. विघ्नेश नए बल्लेबाज और हैट्रिक गेंद लेकर गेंदबाज प्रवीण इस वक्त तैयार.
Hat-trick ball comes from Praveen. दाहिने हाथ over the wicket. Oh, misses. This time the ball went just wide of the stumps at the last moment. And a lucky escape for the batsman. A fantastic over came from Praveen. 3 gone, and after 3 overs, it's 15 runs. Just a single run conceded by Praveen in this over. 25 to get from last over. That means in remaining 60 deliveries. 1 over, no maiden, 1 run and 3 wicket. This is the bowling analysis of Praveen. A fantastic over came from him. और अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ. Six balls remaining, 25 runs required. The bowler starts a fresh proceedings from that side end. First ball, lofted, and one more wicket. Wicket number 8. So Gurdeep got the breakthrough in his very first delivery. और लंग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे आखिरकार एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकते हुए. और 5 गेंदें सिर्फ बाकी. अब 25 रन चाहिए. सिर्फ 2 विकेटें सुरक्षित. और ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई है. अगर कोई चमत्कारी घटना ना घटे तो इन बचे हुए 5 गेंदों में. रंजीत नंबर 10 बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए यहाँ पर और स्ट्राइकर एंड की ओर इस वक्त हो जाते हुए. और इस बीच गुरदीप गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार. Lofted. This time this could be one more wicket. And taken comfortably at deep mid wicket this time. 9th wicket fallen. At one stage they were 15 for 4 and now they are 15 for 9 in fact. 14 for 3 one stage. They were 14 for 3 and now they are 15 for 9. Fourteen for 2 at one stage. Now 15 for 9. That means they lost their 7 wicket in the space of just 1 run in between 14 to 15. 14 for 2 at one stage and now 15 for 9. Played that one defensively into the hands of the bowler. Fumble on his follow through. लेकिन बैकअप करते हुए इस वक्त रन सब बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. अंतिम बल्लेबाज the last batsman is now going to face once again the bowler Gurdeep. हैट्रिक इस वक्त टल चुका है. Bowled him. That's it. KFC Kurunadu are bundled out for 15 in 5.4 overs. In fact, in 3.4 overs. And comprehensive victory by 24 runs for SCC Ayodhya Nagar. And with that 24 runs, big margin victory, they back the complete point. So the next match will be the match number 4 is now coming up. 4 of the day 2 of this prestigious cricket tournament. MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now coming up between Badalkatte Bantwal versus SVC Huhakuakallu. And we'll be back right after this short break. Vicky adjudged the man of the match for his fantastic knock of 20 runs he scored. Vicky adjudged the man of the match. I request Vicky please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizer. So the next match, अगला मैच बड्डाकट्टे बंटवाल और एसवीसी हुहाकुआकल्लू के बीच में शुरू होगा और एक छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब मैच की शुरुआत होगी. धन्यवाद. थैंक यू.
So thank you very much, Gopi. Welcome back once again for the match number 17 of prestigious MPL Season 7, which is proudly presented by team Shri Mudipinnar cricketers in this most beautiful Panchayat cricket ground. All set now for the match between Badagatte Bantwal versus SVC Uvinakalu. Very important match for Badagatte because out of 3 matches they lost to 2. They won 1 match, but at the same time SVC Wakalu they won 2 matches out of 3. They lost 1. So it's going to be very interesting, and a signal coming from umpire, and bowler will going to start the proceedings from the commentary box. And Nitesh is promoted up in the order. Came as a number 1 batters and opening batters facing his first ball. This time top edge. Opportunity for the bowler himself to go back and complete the catch. He won the promotion in the order, which is not really effective for Nitesh. His performance, which is not really up to the mark in this particular tournament, being the icon player of the side. Badagatte Bantwal lost their big wicket in the first delivery itself as Nitesh went for the big shot, doesn't get hold of that one properly and pays the penalty for that. So Nitesh again, the captain has got a faith in his batting. He's been promoted up in the order to get some runs, but again he fails to contribute from the bat. The new batter in is coming to the middle. Jersey number 33 is one of the most experienced campaigner. And the first ball, next ball wide outside the line of leg stump, so that wide called by umpire. And Vinay, the experienced campaigner, is the batter. The first run comes up here for the team Badagatte friends Bantwal. A slight bit of extra bounce again for Pawan, the young man, as he bowls outside the line of off stump with some extra bounce. Defeats the bat of Vinay. No run scored. Again, right arm over the wicket he bowls. Coming down the track almost. Played it down to mid on. Chance of run out in the non-strikers, and it's not good enough from that fielder. Sandesh down at mid on is a good fielder in the side, but direct it might be the curtain in the innings of Vinay, but that throw which is miscollected by the bowler on his follow through, and wicket, and first run for Vinay as well. Scoreboard 2 on the board for the loss of 1 wicket. Pawan balls outside the line of leg stump, second wide of this over. Today we are witnessing so many extras compared to yesterday's performance by the bowlers. Today most of the bowlers bowled so many wide deliveries. Discipline is so important in cricket. Then the extras will going to play a big role in the result of the match, every match. This time very interesting. Umpire called it's a dead ball. The ball which is stuck in the hands of Pawan, but batter very much interested to chase the ball. And bowler knows that batsman coming to chase the ball. He just hold the ball quickly. Not given for a batter to come and hit the ball. And it's called a dead ball. And little bit confusion for umpires whether it's going to be a dead ball or not. So after that, getting some clarification from squad umpire. It's very interesting to see. It's going to be a dead ball, and rightly so, because the ball is not really passed off away with the mark before off away the track. The ball which is almost stuck in his finger. This time again going to be a wide and extra. Then what we are talking about, the discipline is so important, and again the bowler is not getting his line proper. Pawan
concedes the third wide of this over. Out of 4, 3 in the form of extra. Again played it down to mid-on region. Again Sandesh is in the picture. Again he misses the stump. The opportunity for the run out, but again he's standing in the edge of the circle so that it will give a little bit time for the batter to complete the run. And scoreboard is 5 on the board for the loss of 1 wicket. Again straight to the hands of Sandesh. He's a busy customer in this first over. Almost the third time we are seeing the ball is came towards Sandesh at mid-on. This time the batter Vinay wanted to get over the top of the infield, but he fails to get the timing proper. Played it straight to the hands of mid-on. So wicket number first, which is back in the pavilion at a score of 5. The last delivery left in this over. So man of the match of the previous match, which is goes to Vicky, and I request Prajwal Shetty, Kamla Padav, please present this man of the match award. So over number first which is completed, the booster over, which is consist of only 5 runs, even 3 wides in this over, and Prajwal Shetty, Kamla Padav presenting the man of the match award for Vicky for his match winning knock. The left-hand batter played some extraordinary cricketing strokes in his innings to take his team into victory and deserve the man of the match award. So first over looks like it's going in favor of team SVC Huakuakallu. And Badakate Bunt was again there fails to get the good start. Lost 1 wicket by scoring 5 runs. Second over will go into start. Arish brought into attack to bowl the second over after that power play. And the fielding restriction is over, so that spread out field set. More protection in front of the wicket. One fielder deep square leg one at mid wicket at wideish long on and long on. The fielder down at long off. So only one fielder outside the circle in the offside region, that is long off. But all we can see that altogether 5 fielders in the onside region. 4 in the offside region. The first ball of the over number second, driven into that wideish long off. Sandesh fumbles and grabbing the opportunity to convert that single into 2 now. With that couple of runs, Coburn moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. Arish, second time in this over. Swings and missed. It's going to be wide. This has been a disaster. This is the 4th wide altogether. 3 wides in the first over and 1 more wide in the second over. 8 for the loss of 1 wicket. This time ball is missing the hands of wicket. Give a chance of run out, and he's very lazy. He's a very lazy umpire. Asked for the third umpire, but I think Suraj, it's not quick enough. But wait for the umpire decision there. Umpire asking for third umpire. That was a easy chance of single, but Suraj is not quick enough. Wait and see whether the batter is safe or not. The third umpire will going to give the decision about that run out. The decision which is pending. Wait and see whether Suraj is out is a call, and in the naked eye we can understand that is short of his crease. He drags the bat but not good enough because he starts very slowly. Respond is very important because when the ball is going behind the wicket keeper, always a non-striker's call. You need to be very ready. Not like after starting the run by the striker, you need to start run, but you have to start quickly from the non-striker's end because he is the one who is running towards the dangerous end, so that you have to run quickly. It's not a good running with the wicket. Face the penalty. 8 for 2.
Deepu, the new batter in. This time wanted to play the inside of cricketing, so chance of run out in the non-strikers, and this time the bowler Arish fails to gather the throw from that fielder at extra cover. One more opportunity of run out. Deepu, the batter, is very lucky indeed. Otherwise, he is also back if bowler succeeded. If bowler managed to get the throw from the fielder. Loose delivery, punishment which is required for that loose delivery, which is coming from the blade of Gitesh. Shot outside the line of leg stump. All the time in the world for Gitesh to hit the ball right from the middle of the bat down to deep mid wicket region for 6. With that 6, scoreboard moves on to 15 on the board for the loss of 2 wickets. 3 wickets in fact. This time again he tried to repeat the stroke, but this time bowler too clever. So this is going to be a good over from the point of view of team Baddakatte Bantwal. Last ball remaining. One ball remaining in this over. Last ball. 15 on the board. The last time in this over, Gitesh the striker. This time straight to the answer fielder. Misfield there by the fielder. Sandesh the man. Lovely pick up and throw. This time a mix up. Chance of run out in the strikers, and no. Altogether good cricket in the middle. And misfield there by the extra cover fielder. Good backup by Sandesh in the deep. Almost the opportunity is created for the run out. But both the batters completed 2 valuable runs. 2 overs completed. Better over for Baddakatte Bantwal. The second over they got a 12 valuable runs because of 1 6 which came from the bat of Gitesh. After completion of over number 2, it's 17 on the board for the loss of 3 wickets. So over number 3 will going to start from water tag end, and Sandesh the bowler, one of the experienced bowler, has got a very good tournament from the ball, will going to bowl the second over. The Sandesh, they once he represented for Sri Hanuman Cricketers Mangalore in 30 over format of a game. Sandesh keeping that 3 fielders, 2 fielders in the offside region in the deep, 3 in the on, long on, mid wicket and deep square leg, long off and deep extra cover. Drives nicely the gap, and they wanted to come back for the second. Easily they will going to complete the couple of runs because the placement is so good from Mudipu. He played it just wide of that extra cover fielder. Long way to go for that fielder at extra cover to come across his left and field the ball. Ample time for the batter to complete the 2 valuable runs. And scoreboard numbers on to 19 on the board for the loss of 3 wicket. Sandesh. Full toss delivery. Miss time that one. Lucky escape here for Sandesh. Can be punishable from Deepu there. One more single. With the addition of that single, scoreboard numbers on to 20 on the board. 20 on the board, and after this match, the match number 18 will going to start between Bubbly Warriors versus United Mudipinnar. I request all the players of both the teams required to complete the signature inside out cricketing stroke. Played it nicely in the gap. Again, they wanted to come back for the second. In comes the throw, but not good enough. Pawan the fielder in the deep tried to stop the couple of runs. So, elder brother bowling to his younger brother. Oh, elder brother taken that catch of his younger brother. Maybe that was a suggestion coming from his brother. Yes, so always it was a late information coming here to a commentary box that the brothers playing each other. And of course, if you see that the batter Gitesh is trying to hit his elder brother, but brother is not given the opportunity. Caught and bowled. The rare occasion we can see that
The Gitesh, the elder brother, younger brother, caught by elder brother, caught and bowled, and is dismissed. The big wicket here for Sandesh. It's a 22 for the loss of 4 wicket. Sandesh again. Round the wicket. Ah, lovely shot, but placement is not good enough. Proper connection coming from the young man. Has played it beautifully down to deep square leg for a single. Brajesh is been sent down in the order because Nitesh has got a promotion, so that Brajesh coming down in the order in this particular match. Sandesh to Dipu, coming down the track using his feet, played it wide of the fielder. That will going to be a boundary or 6 feet for the umpire decision. It's one bounce into the fence, just falling short of that boundary line. Good finish for the over number 3 in the last ball by the batter Dipu. So after completion of over number 3, again run which is so good here for Badakate friends. 27 in 3 overs at a rate of exactly 9 runs per over. So one more wicket back in the pavilion. Last over remaining. The new batter coming to the middle in place of little correction. The batters are in the middle of the bowler. I'm just talking about the bowler introduced by the captain of team SVC Huwakwakalu. The last over, very important for SVC to restrict the runs because already 27 on the board, 9 runs per over. Now first time we are seeing that sun which is beating out with the black clouds and little bit giving some sunshine, and it takes lot of time to get his full strength, and thanks to the weather condition today, it's not a bright sunny morning. It's always almost we can see that the hide and seek between sun and clouds, and the better condition today compared to yesterday. It's very hot and humidity. Sonu brought into attack to bowl the last over of the innings of team Badakate Bantwal. Oh, slower one, beaten by the face as well as the bounce. Early into that sweep shot, Brajesh couldn't manage to read the slowness of the delivery. The lucky escape actually for the bowler. It's absolutely punishable delivery, but a slower one. Sonu bowled that delivery, and Brajesh missed reading that slowness, pays the penalty. The wicket number 5 is back in the pavilion of Badakate friends, and number 8 batters are walking towards the middle. Brajesh, correction, Sonu to bowl the next delivery of the last over, second time in this over. Outside the line of off stump, they're going for the quick single, and wicketkeeper fails to gather the throw from the fielder. One more addition, with the addition of that single score moves on to 28 on the board. Ranjit, white call by umpire, the white +1. Oh, this is a better delivery, excellent one, almost leaving the right-hander batsman by pitching in the middle and off, and dot delivery, the much required dot delivery here from bowler. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಣ್ಯರಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ವಕೀಲರು ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. So one more single has been added total, and Mohammad Asghar, one of the organizer of a very successful cricket tournament, Advocate Cup, which is played earlier in this season at Nehru Maidan Cricket Ground. One of the very good organizer, and one more single, and with the addition of that single, Skobana moves on to 31 on the board.
the very successful tournament. It was Advocate State Level Cricket Tournament. It's not so easy to organize, and he is one of the pillar of that tournament, Mohammad Asghar, Advocate. Again outside the line of off stump, beautifully balled, perfect one. Just wanted to play inside out cricketing stroke, beaten by that line of the delivery. The last time in this over, the bowler will go into ball. The last delivery of their innings, again coming down the track, doesn't get hold up that in properly. And they wanted to come back for the second. It's the last delivery of their innings, so that they wanted to take the advantage, and that's it. Tidy over from Sonu. In the last over, SVC Huakwa Kallu, the managed to restrict the flow of the runs of their opposition, and at last team Baddakatte Bantwal, they are 32. They managed to score at the rate of exactly 8 runs per over, and they set a target of 33 to win the match for team SVC Huakwa Kallu. And wait and see how well the team SVC will go into reply. Then 32 means the 8.25 runs per over, the required run rate for the team. And we'll take a short break in our commentary box. After the short break, my friend Mr. Gopi will go to take over the microphone and Hindi language. Thank you. Thanks a lot. The Mudipu Premier League na 2025 ನ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದ ಅಸ್ಗರ್ ಸರ್ ಮುಡಿಪು ವಕೀಲರು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ವರದ್ ಸರ್ ಇವರು ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವರದರಾಜ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅಸ್ಗರ್ ಸರ್ ಮುಜಿಪು ಅದು ವಕೀಲರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಹೊಸಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Dhanyawad Satish. So 33 the target for SVC, set by Baddakatte Bantwal, and their innings now going to start, and the first ball of their innings is now coming up. और जहाँ तक सवाल है दोनों आरंभिक बल्लेबाजों का, तो चेतन और यति आरंभिक बल्लेबाज ब्रिजेश गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ द रन अकाउंट बिगिन फॉर देम. इट्स 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर SVC हुआक्वा कल्लू. और इस बीच अगली गेंद ब्रजेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो द विकेट, गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, एक्स्ट्रा कवर पर कहना पड़ेगा, काफी लंबा दौड़ फीडर लगाते हुए, और जब तक बेहतरीन फील्डिंग के जरिए गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोके बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को इस वक्त उछाल दिया खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट, और डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 2 रनों का इजाफा हो चुका, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रन. इस बीच ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल. अगर बूस्टर पॉइंट अर्जित करने के लिए 6 रन बनाने हैं यहाँ पर
एसवीसी को 4 रन अब तक बन चुके हैं और ब्रजेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರ್ ಗೊತ್ತು ಇವರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುಜಿತ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. तो इस वक्त गेंद को खेलना चाहता, नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रनों पर. 5 ऑन द बोर्ड, फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस और ब्रजेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. और ब्रजेश का जहां तक सवाल है, 3 सही गेंदे इस ओवर में अब तक वो फेंक चुके हैं. ये गेंद रिवर्स शॉट इन द एयर, आउट, ड्रॉप्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड, चांस गॉन इन वेन. सीधे गेंद पॉइंट फील्डर के हाथों में पहुंची थी लेकिन इस गेंद को वो लपकने में असफल और आखिरकार बल्लेबाज 1 रन यहां पर प्राप्त करते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर. 6 ऑन द बोर्ड, या टू लूज एन विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और ब्रजेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद लॉफ्टेड स्क्वायर ऑफ द विकेट, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद इस वक्त तक से कवर सीमा रेखा को पार कर चुकी है. नहीं, सीमा रेखा के अंदर रोक ली गई है इस वक्त. काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद और इस बीच 3 रनों का इजाफा. लास्ट बॉल, सो 3 रन्स एडेड टू द टोटल और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रन. बूस्टर पॉइंट अर्जित कर चुका है एसवीसी हुहा कुआकल्लू इस पहले पावर प्ले ओवर में. और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंद को उछाला इस बार इनटू द गैप एज वेल एंड दिस टाइम अ लॉन्ग चेस बट ही वोंट गेट दैट वन. इट्स क्रॉस्ड ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री. Fantastically played by the right-handed batsman after rocked on the back foot, just pulled that one wide of the mid-on fielder and finds the gap as well at last. The scoreboard moving up to double figures now. That means on 13 without loss. और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक बेहतरीन शुरुआत एसवीसी हुहा कुआकल्लू कर चुका है. 13 रन जोड़ चुका है पहला बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद. और एसवीसी इस वक्त एक बेहतर शुरुआत कर चुका. जहां तक एसवीसी का सवाल है, इस मैच में अगर वो विजय दर्ज करते हैं तो इस श्रृंखला के अगले दौर नेक्स्ट राउंड में वो प्रवेश प्राप्त कर लेंगे. और इस वक्त अगले दौर में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त एसवीसी के बल्लेबाज पूरी कोशिश यहां पर करते हुए. तो भट्टा कट्टे का जहां तक सवाल है, उन्हें एक और मौका जरूर इस मैच के बाद एक और मैच उन्हें खेलना है. और देखते हैं यहां पर तो भट्टे कट्टे का जहां तक सवाल है, कोई मैच उन्हें बाकी नहीं है लेकिन दूसरे टीमों के फलितांश के ऊपर उनका अगले दौर पर पहुंचने की संभावनाएं तय हैं इस वक्त. और दूसरे टीमों के फलितांश, दूसरे टीमों के मैचेस के फलितांश के ऊपर उनके अगले दौर पहुंचने का भविष्य निर्भर है. और देखते हैं यहाँ पर इस मैच में क्या वो विजय दर्ज कर पाते हैं या नहीं. तो गेंदबाज दीपू स्टार्ट्स अ फ्रेश प्रोसीडिंग्स, फर्स्ट बॉल और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ड्राइव किया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पवेलियन. गेंद को ड्राइव करते ही रन के लिए दौड़ पड़े थे यति, कोई रिस्पॉन्स नहीं नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज चेतन द्वारा और आखिरकार आसान सा रन आउट स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ. 13 for 1, 33 the target in 4 overs. That means still they have to score 20 runs from remaining 17 deliveries. 17 गेंदे बाकी, 20 रन चाहिए. मैच नंबर 4 आज का खेला जाता हुआ इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत एमपीएल मुडिपू प्रीमियर लीग सीजन 7 2025 के अंतर्गत जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है श्री मुडिपिन्नार क्रिकेटर्स एसएमसी मुडिपू ने. 10 प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी टीमें इस श्रृंखला में इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं और 5 टीमों के 2 गुटों में 2 ग्रुप में 5-5 टीमों को बांट दिया गया है. और यहाँ पर संघर्ष जारी है बड्डा कट्टे बंटवाल और एसवीसी हुहा कुआकल्लू टीमों के बीच. न्यू बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद, बाएं हाथ के बल्लेबाज, गेंद को इस वक्त उछाला प्रमोद और जब तक मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता, थोड़ी सी मिसफील्ड, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा लेकिन बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. शेखर शेट्टी
ಕುರುನಾಡು ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರು ಅವರನ್ನು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. तो इस वक्त अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद थी. Absolutely good one this time. The ball came along the ground and it went into the hands of wicket keeper. And there is no possibility of any run. एक बेहतर और अब तक साबित हो चुका है दीपू का और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ around the wicket, down the track, driven down to long on, but not more than a single. सिर्फ एक रन बल्लेबाज को प्राप्त होगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर. 16 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Long spreaded outfield we are just watching here. 2 balls left in this over. दीपू इस वक्त गेंदबाजी करेंगे चेतन के लिए और चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दीपू की गेंदों का. दीपू दाहिना ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, गेंद निकल चुकी है. फाइन इस वक्त डीप थर्ड मैन पर एक रन न मिलेगा बल्लेबाज को और एक ही रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं. 17 on the board for losing 1 wicket. Still 16 more runs now they have to score for victory in remaining 13 deliveries. और दीपू इस ओवर में अंतिम बार तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रमोद के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. इस बार चूके स्टंप्ड ब्रिलियंटली बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स. कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले थे, गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे इस वक्त किया. सेकंड विकेट लॉस्ट and now it's 17 for the loss of 2 wicket. 2 overs had been bowled. 16 runs required in remaining 12 deliveries. That means in remaining 2 overs. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say the match is now still evenly poised. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಲಾಡಿ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟದ ಹೊರಭಾಗ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. तो तीसरा ओवर शुरू होता हुआ आकाश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और अमरनाथ जिनका आगमन इस वक्त हो चुका है इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में. और आकाश पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. फर्स्ट बॉल कम्स. Driven square of the wicket, not more than a single. Sweeper out there. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर. 18 runs the score. 2 wickets down, 15 to get from remaining 11 balls. और गेंदबाज आकाश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अमरनाथ सामना करने के लिए तैयार. इस बार खूबसूरती के साथ उछाला डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर मौजूद. बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, रनआउट का मौका इस वक्त, लेकिन यहां पर अंतिम क्षण में बल्लेबाज पहुंच चुके हैं. काफी नजदीकी मामला था, लेकिन इससे पहले कि विकेट चटकाए जाए गेंदबाज द्वारा थ्रो को रिसीव करने के बाद बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे. बल्ला क्रीज बैट क्रीज पर ड्रैग कर चुके थे और 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल. 20 ऑन द बोर्ड. 13 runs to get, 10 balls remaining. Still it could be anybody's game at this situation. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो आकाश इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अमरनाथ के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. Lofted inside out cricket, chance for the long off fielder. And he dropped that one. He dropped that one. Oh, no chance. This time he misses. That wasn't a simplest chance dropped by the long off fielder. और ऐसा कहना पड़ेगा आसान सा मौका यहाँ पर गंवाते हुए और बल्लेबाज जीवदान के साथ साथ एक रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए. दोनों मौकों में इस गेंद पर बल्लेबाज बचे. पहले कैच आउट में बचे, उसके बाद रनआउट का मौका था, उसमें भी वो भाग्य उनका साथ देता हुआ.
एक रन का इजाफा. 12 runs to get from 9 balls. और आकाश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में. फील्डर मौजूद. जस्ट अ सिंगल. क्लीन पिकअप. And with that single run, the scoreboard moving up to 22 now for the loss of 2 wickets. 8 balls left. 11 runs required. अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है और गेंदबाज आकाश अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ over the wicket, not quite connected that one properly. In fact, he's got a single for that stroke. 23 on the board. Just 10 runs to get for victory in remaining 7 balls. Last time in this over, Akash comes. It's bowled out, inside it, dragged onto the stumps. And Akash got the breakthrough. Over number 3 has been came to an end. 23 on the board, that means 10 required from the last over. That means in 60 deliveries. और एक बेहतर ओवर आकाश का समाप्त हो चुका है और उनके पारी की अंतिम गेंद पर उनकी ओवर की अंतिम गेंद पर वो विकेट प्राप्त कर चुके हैं और अंतिम ओवर में 10 रन चाहिए. पवन का आगमन यहाँ पर होता हुआ. पवन द नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर एसवीसी हु हाकुआ कल्लू. और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में 10 रन जो बनाने हैं उसे एसवीसी के बल्लेबाज बना पाते हैं या नहीं. हर्षित द बॉलर स्टार्ट्स द लास्ट ओवर ऑफ द मैच. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए मैच लगभग अभी भी बराबरी पर रुक चुका है. 6 गेंदें बाकी, 10 रन चाहिए. और अमरनाथ जो कि सामना करने के लिए इस वक्त तैयार. फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम हर्षित. राइट आर्म ओवर द विकेट. हियर ही बाउल्स. इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद पहुंची. शो मिसफील्ड इस वक्त, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और सिर्फ बाई का इशारा. जस्ट अ सिंगल ही गॉट इन द फेस ऑफ बाई. 24 द स्कोर. 9 रिक्वायर्ड फ्रॉम 5 बॉल्स नाउ. कम से कम एक चौके और चौके या छक्के की जरूरत है एसवीसी को यहाँ पर कम बैक करने के लिए, जबकि बन्ना कट्टे बंटवाल को चाहिए इस वक्त डॉट गेंदें इस अंतिम ओवर में हर्षित द्वारा. और हर्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद जाती हुई कवर पॉइंट की दिशा में. डीप कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए दूसरा रन नहीं मिलेगा. जस्ट अ सिंगल ही गॉट. 25 on the board for losing 3 wickets. That means 8 required in remaining 4 deliveries. 7 for tie, 8 for win. 4 balls left in the innings. हर्षित बाउल्स. इस बार ऑन साइड पर मोड़ा. फील्डर काफी पीछे तैनात. 1 रन मिलेगा. दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा. थ्रो पहुंच चुका है. बेहतर फील्डिंग का 3 बेहतर गेंदे इस ओवर में हर्षित फेंक चुके. हर्षित कंसीडर्ड जस्ट 3 singles in the first 3 deliveries of his over. And now 7 required from 3 deliveries. 6 for tie, 7 for win. रिवर्स शॉट खेलना चाहा. विकेट कीपर चूके. शॉट थर्ड पर फील्डर के हाथों में गेंद. 1 रन का इजाफा. 1 more good delivery ball by हर्षित. Leg by declared by umpire. 2 balls left now. 6 runs required. 6 to get from 2 balls. 5 for tie, 6 for win. And the second last ball of the match is now coming up. हर्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. 2 गेंदे 6 रन चाहिए. 5 for tie, 6 for win. 2 balls left. Here Harshit bowls. This time driven that one but can't find the gap as well. And now the last chance. 6 required of last delivery. छक्के की जरूरत अंतिम गेंद पर. अमरनाथ यानी अमर सामना करने के लिए तैयार. हर्षित गेंदबाजी करते हुए. एसवीसी का भविष्य गेंदबाज हर्षित के हाथों में, जबकि ऐसा कहना पड़ेगा एसवीसी का भविष्य बल्लेबाज अमर के हाथों में, जबकि बड्डा कट्टे का भविष्य गेंदबाज हर्षित के हाथों में. और इस बीच लास्ट बॉल. 6 टू गेट. हियर वी गो. दिस टाइम लॉस्ट इट स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑन फील्डर. दैट्स इट. सो 5 runs comprehensive victory. 5 runs thrilling victory in fact for Banda Katte Bantwal against SVC Hu Haku Akallu. And if that 5 runs thrilling victory, they back the complete points. So fantastic match ended just a short while ago, which won by Banda Katte Bantwal against SVC Hu Haku Akallu. So the next match, Bubbly Warriors will take over United
Mudipinnar. That match coming up within just short while. अगर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे सतीश के साथ जब अगला मैच यहाँ पर शुरू होगा. धन्यवाद. थैंक यू. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅಸ್ಗೀರ್ ಮುಡಿಪು ಸರ್ ವಕೀಲರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Thank you very much, and back to this match. Bubbly Warriors takes on Team United Mudipinnar, and the position of the two teams so far out of 3 matches. United Mudipinnar, they won 2 and they lost 1, but Bubbly Warriors, the must-win match for them. Out of 3 matches, they lost 2 and they won 1 match. So that it's very important for the team
Bubbly Warriors to get the victory here, to coming back the victory, and he won. It's a very important for United Mudipu to win this match, so that it's going to be a very interesting match between these two. The first run came from the bat of Anil, who is off the strike, and the batter Sudhir will going to take the strike, and his clock is gone. They wanted to play the unorthodox cricketing stroke. The first ball he's facing, it's not a good shot selection when you're playing your first delivery. You need to play that one with the straight bat, but if you try to go for the switch it might be that was asking for trouble. The bowler Neetu, and is bowled that beautiful delivery to dismiss the wicket of danger man. Sudhir back in the pavilion. Nikhil got a strikes here with that beautiful delivery, and the batter Sudhir is back in the pavilion, is out for golden duck. 1 for 1. After this match, one more the very good match which is commenced between Amma cricketers versus MFC strikers, because in that pool it's going to be a very interesting stage. Most of the teams has got same points in the points table, and that will be the do or die match for Amma cricketers as well as MFC strikers. Nikhil, the new batter in, and ball is deflected from the leg, so that leg by call by umpire. With the addition of that leg by scoreboard, now moves on to 2 for the loss of 1 wicket. The wicket of Sudhir is back in the pavilion. Anil, so far in this particular tournament, is couldn't produce that innings what is always loves to play in this cricket ground. One of his favorite cricket ground, and a very experienced campaigner as well. This time up and over, played it nicely in the gap into the cow point region, fielder behind the ball, but ball winning the race. Very good placement there from Anil. This is what the batters have to look for sometime. The most of the batters only looking towards a stroke on the onside region, but they're really forgetting some opportunity to score the runs in the offside as well, especially in the power play. Not so many bodies out there in the deep. The power play, only 2 fielders outside the circle, and Anil quite deliberately chipped the ball over the head of that cow point region for the boundary. And a very useful boundary coming here from the bat of Anil, and scoreboard numbers on to 6 on the board. Again using his feet, played it nicely down to deep mid wicket region, protection there in the deep, so that he need to shuttle for single for that. And with that single, scoreboard numbers on to 7 on the board. The booster over is in progress, and the batter Nikhil will going to take the strike of Neetu. Right arm over the wicket. Full toss delivery, missed it. My goodness. And with that delivery, the dot delivery, the over number first which is comes to an end. 7 runs coming from that over of Neetu. And after completion of first over, searching for the right track, team Bubbly Warriors are 7 for the loss of 1 wicket. A very good competition between these two teams, has got some good players in the side. The 7 in the first, the 3 overs remaining, and this is the match number 18 altogether. Yesterday, that 13 matches which is completed. This is the match number 5 of day number 2. Today we started early at 8:45 in the morning. The bowler Gaurish brought into attack to bowl that second over of the innings. The man of the match in the previous match for his performance contribution from the bat. Is a good all-rounder for the side. It's a good competition between these two, Anil and Gaurish, two experienced campaigner for respective teams. And Gaurish bowling around the wicket now to Anil. Mid-wicket, long on, long off. Deep square leg. This time Anil lofted that one and straight to the answer fielder. So Anil again disappointed as he got a connection but fails to get the distance. In the morning, 11 past 40 is the time, but still we are not having that much of big wind in this ground. That's why Anil fails to get the distance again. He fails to contribute from the bat. He wanted to get the distance but fails to do that. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement from Anil.
He's got a start but fails to continue that start to beginnings for his team. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರೋ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರು ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಬೇಕು. ಇದು ತುಳಸಿ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರೋ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. So wicket number second, which is back in the pavilion, and Gaurish just winning the race against Anil in the first ball itself. He just wanted to hit the big shots. Inside out cricketing stroke, lovely shot, very good improvisation and got a placement as well. That was a glorious lofted extra cover drive from the new batter. Nikki bowl batter is coming to middle. Ullas, and that was a perfect placement, isn't it? Little bit making room to play the shot. The perfect technique is implemented against the leg spinner when they are not having a protection in the deep in the cover point region. Good placement. This time again he wanted to go for the switch it, but after playing such a good orthodox cricketing stroke, and the batter Ullas is trying for the reverse stroke. ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Again one more reverse stroke which is attempted, and really I'm not understand why, because after he played that glorious cover drive, Ullas trying for the switch it second time in this over and missed it completely. Gaurish could come back. Right over the wicket keeper behind the stump in a fraction of second uprooted the stump, but just an excitement. Ullas back foot is absolutely right inside the line, but a very good collection from wicket keeper behind the stump. Just a fraction of a second he managed to uproot the stump, but just an excitement behind the wicket. No damage done. The Gaurish once again producing a fantastic over. After that boundary, 3 back-to-back dot deliveries. Again he wanted to go for the switch it. Short pitch delivery. And he fails to convert that into the big one. So one more good over which is comes to 9 in favour of United Mudipu. After completion of over number 2, it's 10 on the board for the loss of 2 wicket team. The Bubbly Warriors are searching for the right track, but got a slow start. 2 overs remaining in the innings. You are watching this prestigious Mudipu Premier League 2025 Season 7, which is proudly presented by Sri Mudipu cricketers in this most beautiful Mudipu Panchayat cricket ground. And the day number 2 and the final day of this cricket tournament, the decider day of this cricket tournament. Almost we are in that last position of the league stage matches. After this match, 2 league stage matches which is remaining. Then the 6 team is going to qualify, 3 from each pool for the Super 6, and that was in the afternoon. It's going to be more excitement for this MPL. We're going to grab the place in the mega final. Punit brought into attack to bowl from water tank end. The Ullas, the batter, will going to take the strike. The bowler brought into attack to Punit. Round the wicket is in operation. Ullas will going to take the strike. Round the wicket. Drives nicely down to deep long off. The protection there in the deep long off. They wanted to come back for the second. Asking for trouble. Good return coming from the fielder. In the deep. Just a single. And with that single, Scober moves on to 11 on the board. Little bit of overcast condition. And continues here in this cricket ground. Not a bright sunny morning. Loft it. Will it going to be handsome? No. The fielder taken that wonderful catch in the deep long on. Slight a bit of jump is good enough for the fielder to judge the catch. The one more wicket back in the pavilion in the name of Nikhil. Just wanted to get the distance, but fails to get the distance. He got a fielder in the deep long on. Unfortunately, the wicket number 3 which is back in the pavilion of Bubbly Warriors. The worries which is continues here for the Warriors. Very hard to combine the runs even the wickets are falling.
After this match, the match will be played between Amma Cricketers versus MFC Strikers. This is one of the big match. Will going to commence after this, the do or die match for both the teams. And wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. Loose delivery and punishment which is required for that delivery, and which is produced by the batter, the new incoming batter. Harish this time played it very nicely. The tossed up delivery outside the line of leg stump. All the time in the world for the batter, even it's a fresh leg. But who can miss this opportunity, isn't it? Shot outside the line of leg stump and swings it away. Down to deep leg for a 6. Much required 6 came for here for the team. Warriors. Again, this time played it very nicely. He's lost his balance while trying to get that stroke. Is absolutely couldn't manage to take the advantage of that fumble. Just a single there. With that single score, but moves on to 20 on the board in the over number 3 is in progress. Puneet to Ullas. Keeping one fielder at deep extra cover, one at long off. The fielder down at long on. Maybe they're asking for a runner. For batter Harish. Round the wicket right arm. Drives that one down to deep, wideish long off. 2 is the call, but it's very difficult to get a couple, and then the good return coming from the fielder. Just a single. With the addition of that single score, but moves on to 21 in the over number 3rd is in progress. Puneet last time in this over. To Harish, who is batting on 7 with the help of 1-6. Again, wanted to go for the switch. It missed it completely. Good finish for the over. Over number 3, which is comes to an end. Completion of over number 3. The team Bubbly Warriors still they are not out of the worries. As far as the run rate is concerned, they're going exactly 7 runs per over. Last over remaining in their innings. And so far, tidy bowling performance from the United Mudipu in this condition. The last opportunity as well for the batters of Team Bubbly Warriors. Out of 3 matches, they lost 2. They won 1 match. They won. Winning here definitely will go into a little bit chance for the team as well to remain in the competition. And even for United Mudipu, out of 3 matches, they won 2. They lost 1. If we win this match here, then it's going to be they will going to cement the place in the Super 6. Likith brought into attack to bowl last over. Ullas drives uppishly, but straight to the fielder drops the catch. And drops the catch, and Ullas wanted to come back for the second. But his partner is not interested. Just a single with that single score, but moves on to 22 on the board. Likith to Harish. Wait and see how Harish will going to get some runs here in the last over. Again, the full toss delivery. Batsman just looking for the premeditated switch it. But he got attempt so that only 1 run there. The full toss delivery from Likith. Very lucky indeed for him that the batsman already made his mind that he wanted to go for the switch it. Couldn't manage to take the advantage of that delivery. And with that single score, moves on to 23. Last 4 deliveries left in their innings. This time Ullas lofted it and lofted it handsomely. No, what a catch! This is absolutely the best catch of the day, number 2. The tall man there at mid wicket, Neetu, is absolutely has got a perfect jump. Almost looks like the ball is sailing over.
into the deep mid wicket for a 6, but the fielder is absolutely has got a fantastic judgment. Not only he got a very good jump, but he's just kept the eye on the ball. The perfection of jump is always the key for the success when you are try to take the catch in the boundary line. At the same time, you have to see the boundary line as well. It's not so easy. The great catch in the end. He's saving 6 runs for his team and sending danger man back in the pavilion. Ullas departs. So 23 on the board and the last 5 wickets so far. And the new batters, left-hand batter Chetu came into middle. I'd like it to continue 4 time in this over. Right arm round. Full toss again. This is a disappointment here for the batters of Warriors as they missed so many full toss deliveries. Fails to convert that one to scoring one. Again swings and miss. Wicket here for fumbles. Chance of run out. But they complete single in the form of bye. One more addition. So addition of that single scope and moves on to 24 on the board. The last delivery of the innings is coming up. That was a tidy bowling performance. Winning the toss, selected to field first. United Mudipu, all the bowlers did a great job to keep the things very tight. So only 1 6 so far in this innings and 2 boundaries. That shows that the accuracy in the line and length by the bowlers so far. So last delivery of their innings, right arm over. Coming down the track using his feet. Arish fails to get the big stroke here. Only single. Tidy over. One more great over which is comes to an end here from Likith. So 4 overs completed and the team Bubbly Warriors are only managed to score 25 quarter century. And they set a target of 26 to win this match. And in 24 deliveries, 26 runs required for United Mudipu to register one more victory. And lot of hard work required from the bowlers of team Warriors. Bubbly Warriors, if they wanted to win the match, it's not so easy in this condition. But wait and see how well they will going to defend this total. The must-win match for the team. Bubbly Warriors have to deliver best performance in the bowling department if they wanted to win this match. So wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. We'll take a short break here. After the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in Hindi language. Thank you. धन्यवाद सतीश. So 26 the target in 4 overs for United Mudipu, set by Bubbly Warriors, had batted first. They managed to score 25 runs in the stipulated 4 overs, and the target for United Mudipu is 26. Exactly 6.5 runs per over they have to score for victory.
और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज गौरीश और प्रज्वलित इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज बॉलर गेंदबाजी जो इस वक्त शुरू करते हुए और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 26 in 4 overs they have to score for victory in the stipulated 24 deliveries with the required run rate of exactly 6.5 runs per over. And their innings now going to start. First ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, चूंकि शॉट फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा हो चुका। रन अकाउंट बिगिन फॉर देम, इट्स 1 without loss in the first over. 26 they have to score in 4 overs. They stipulated 4 overs in fact. और गेंदबाज इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। निखिल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर, और ये फुल टॉस लॉफ्टेड, नॉट क्वाइट मिडली गेट, चांस फॉर द स्क्वायर लेग फील्डर एंड ही टुक द कैच सक्सेसफुली। एक वक्त कुछ हद तक डोले थे जरूर फील्डर, लेकिन आखिरकार गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल। और फुल टॉस गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता बल्लेबाज प्रज्वलित ने, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। बल्ले के बीचों बीच गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और स्क्वायर लेग फील्डर ने इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपका। फर्स्ट विकेट गॉन, इट्स 1 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. सो 7 रन जहां तक सवाल है बबली वॉरियर्स ने बनाए थे। अगर 8 रन यूनाइटेड मुडिपू के बल्लेबाज पहले ओवर में बनाते हैं तो बूस्टर पॉइंट जो वो अर्जित कर लेंगे, और देखना यह है कि यहाँ पर इस ओवर में वो 8 रन बना पाते हैं या नहीं। न्यू बैट्समैन नंबर 3 बैट्समैन हिज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, प्रहास, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद स्विंग्स एंड दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस, यस इट डज, straight in front of our commentator box stand. This is an absolutely slog sweep shot and he just got that one right from the middle of the bat and pulled that one just in front of our commentator box stand for a massive one for a 6. और छक्का बेहतर स्ट्रोक इस वक्त। अगली गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, fantastically played. This time he played that one with a reverse shot and finds the gap as well. 6 and a 4. And with that boundary the scoreboard moving up to 11 now. और प्रहास 2 बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगा चुके हैं और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद प्रहास के लिए, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त, अपने स्ट्रोक्स को अंतिम क्षण में रोक लिया था। 1 रन ना तेजी के साथ, हालांकि गौरीश थोड़ी देरी से दौड़े जरूर, लेकिन 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। 12 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो 26 रनों का छोटा सा लक्ष्य और 12 रन पहले ओवर में जोड़ चुके हैं, जबकि 1 गेंद अभी भी बाकी है। बूस्टर पॉइंट अर्जित कर चुका है यहाँ पर यूनाइटेड मुडिपिन्नार। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं दाहिने हाथ ओवर द विकेट। निखिल तैयार। अगली गेंद गौरीश के लिए, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त। शॉर्ट कवर पर 1 रन के साथ अपना छोड़ दोनों बल्लेबाज बदल चुके हैं। सिंगल टू एंड और फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 26 in 4 overs. This is a fantastic start for them. 13 for 1. ಶೈಲೇಶ್ ಸೇಗೊಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಣಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So 13 for 1 after first over and 13 more to get in fact in remaining 3 overs. ಇವರಿಗೆ ಧನುಷ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಶೈಲೇಶ್ ಸೇಗೊಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो इस वक्त दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ, सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन द रिंग्स, द बॉलर स्टार्ट्स अ फ्रेश प्रोसीडिंग्स। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गौरीश के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। अगेन लॉफ्टेड, दिस टाइम चांस एट लॉन्ग ऑन एंड टेकन कंफर्टेबली। गौरीश ने गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने आखिरकार इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ सीमा रेखा के अंदर लपक लिया और इसी के साथ गौरीश का विकेट गिर चुका। फर्स्ट विकेट गॉन फॉर यूनाइटेड मुडिपुन्नार एंड नाउ दे आर
13 for 2 now. Second wicket gone, in fact. United Mudipinar 13 for the loss of 2 wicket. In fact, it's 13 for the loss of 2 wicket at the start of the second over. और नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ. Nikit, the new batsman, is now comes out to the middle. तो इस बीच गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा. Again, strong sweep shot. This time he finds the gap as well. Fantastic struck came from the bat of Nikit. और चौका यहाँ पर प्राप्त करते हुए, और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर. 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. और निखित एक बार फिर से सामना करते हुए गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का. यह गेंद एक बार फिर से उछालना चाहा, विकेट कीपर चूके. एक रन का इजाफा. लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर. A single run added to the total in the face of extras. With that single run, the scoreboard moving up to 18 on the board. Just 8 to get for victory. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था. इन हाथों पर द विकेट. ये गेंद, ओह फैंटास्टिक डिलीवर, एक्स्ट्रा क्विकर, वन मच स्ट्रेट लाइन, जस्ट मिसिंग और साथ ऑफ स्टंप, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. रन सब बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा. डाउन द ट्रैक, मिसेस, चांस ऑफ अ स्टंपिंग मिस्ड बाय विकेट कीपर. इन फैक्ट जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर डिसीजन. इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली. 3 wides added to their total. 3 वाइड रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर. 21 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट. जस्ट 5 टू गेट फॉर विक्ट्री. और गेंदबाज ये गेंद उछालना चाहा, चूंकि इस वक्त गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. सो स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. और गेंदबाज इस ओवर में अगली बार, चूंकि बेहतर गेंद थी इस वक्त. Over completed. 2 overs completed, and still they are looking in a commanding situation. In fact, it's 21 now for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs. United Mudipu looking in a good situation. So third over starts in their innings, और गेंदबाजी शुरू करते हुए उल्लास, जबकि पिछला ओवर यक्षित समाप्त कर चुके हैं. और इस ओवर में उल्लास गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए. सिर्फ 5 रनों की दरकार विजय के लिए. जस्ट 5 runs to get for victory. और उल्लास अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर द विकेट. फुल टॉस ड्राइव किया इस वक्त गेंद को हल्के से कवर पॉइंट पर. 1 रन का इजाफा. जस्ट अ सिंगल रन एडेड. 22 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. और उल्लास अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद डाउन द ट्रैक, lofted, and he finds the gap as well. He just finished the match in a style with a 6. So comprehensive victory for United Mudipu by 8 wickets against Bubbly Warriors, and with that 8 wickets comprehensive victory, they back the complete points, including booster point. In fact, including the booster point, they got complete points for this match. Next match, Amma Cricketers will take over MFC Strikers. ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ MFC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So man of the match of this match award goes to Prahas, who scored valuable unbeaten 17 runs. He adjudged man of the match. I request Mr. Prahas to please come out to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. The next match is now going to start between Amma Cricketers versus MFC Strikers.
Amma cricketers won the toss and what the decision they will take just we have to wait and see. और मैच इससे पहले के शुरू आगे आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे सतीश के साथ. धन्यवाद. थैंक यू. ದಯವಿಟ್ಟು ಶೈಲೇಶ್ ಸರ್ ಇವರು ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹತ್ತು ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 2 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7ನ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹಾಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯ ಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಓನರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಐಕಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 30,000 ನಗದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ SMC ಟ್ರೋಫಿ ಅನ್ನ ತುಳಸಿ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. So thank you very much, Gopi, and we are into the very important match. This is going to be a decider match in the points table, as we are just talking about if the Amma cricketers will going to win this match here. Every team has got the same points in the points table. Then the booster point will going to comes into play. ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ತುಳಸಿ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. So second time in this over, right arm over the wicket. This time absolutely short one, and he just got that one right from the middle of the bat and swings it away down to deep square leg boundary for a 6. So this is not ideal delivery to ball in the power play overs. The shot outside the line of leg stump. The batter played it quite nicely, Shiva. Down. Again, lovely delivery. It's gone. Bowled him. Excellent stuff there from the bowler. After that 6, he desperately wanted to back in the game with the good one. And this is a much better delivery to dismiss Shiva back in the pavilion. It's a 6 for 1. All in sudden.
So must-win match here for Amma cricketers. Even MFC strikers also, they have got 4 points in the points table. The winning here, maybe it's going to be easy for them to get in the place in the next round. But this is really a decider match in the points table in the A group. Right, Amma with the kitty balls again. Lovely delivery, swinging in fact spinning from the middle stump outside the line of off stump ball, just going away from the right-hander batter. The wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. This time 6 number 2 of their innings. And the batter Sujir is a tall man. So easy for the tall players to get the distance. They played it a fantastic stroke down to mid-wicket boundary for a 6. With that 6, Kobanda moves on to 12 on the board. Booster over, some boosting coming from the batters. Again the 6 number 3. It is absolutely poor piece of bowling by the bowler. So Karthik has become very expensive in the first over. 3-6 in that over. And 18, which is the total score after completion of first over. And it's not a good start for Amma cricketers because this is a must-win match. But it's not a performance when you are giving in the first must-win match. The Karthik is giving that 18 valuable runs in first over. Definitely it's not so easy to win the match. 18 is the total score and 18 which is just the number of Sushant. He will going to take the strike, and the previous match he played well for his team. So Karthik, which is replaced by another Karthik. The Karthik senior is in action. He will go into bowl to the right-hander batter Sushant. They needed to restrict the runs here. For Amma cricketers, it's a must-win match. But the winning for MFC strikers will going to cement the place in the Super 6. The first ball of the over number 2. Karthik will go into deliver the first delivery. Right arm over the wicket balls. Again, played it very nicely. In the Mano, the fielder in the deep square leg. The good connection coming from the blade of Sushant. And one more single. With that single, is off the mark, and total score now moves on to 19 for the loss of 1 wicket in the over number 2 is in progress. Karthik to Sujir. Sujir played it nicely off the toes, down to long on. Just a single there. Both the batters are rotating the strike in this second over. After that, power played a lot of protection in the deep. Not easy to get the placement. Again, played it just wide of that mid-wicket fielder. The protection in the widish long on. They wanted to come back for the second. It's a little bit fumble from the fielder. But ಇದು single. ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಗೋಕುಲ ಭಂಡಾರಿ ಮಲರಾಯ ಬೈಲು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7 ರ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. 21 on the board. Again, one more lovely delivery, but it's going to be wide, far outside the line of off stump in that occasion. Batsman tried to get that one in the off the front foot. The wicketkeeper behind the stump has uprooted the stumps, but might be a little bit late to
make that stump out. No run scored. And good comeback here by Karthik. But white ball, in fact, with that extra score, but now moves on to 22. Karthik bows lofted. The protection there in the long off. One day a single. They wanted to go for the second chance of run out. Again, the white throw coming from the fielder. The Amma cricketers are really missing some opportunity here to take the wickets of their opposition. Simply they're conceding some runs here. 2 runs added to total. 24 in the over. Number second is in progress. Karthik. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಲರಾಯ ಬೈಲು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ಗೋಕುಲ್ ಸರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಲರಾಯ ಬೈಲು. So over number 2 which is comes to an end after completion of over number 2. It's a 24 on the board for the loss of 1 wicket. So run rate progressing very well. 12 runs per over. 18 in the first. The better over. Second over compared to the previous one. 6 runs came from that over of Karthik. Because of that huge first over. But still the team are looking in a good position. MFC Strikers. So after this match, last league stage of the match will be played between SMC Fajir versus KFC Kurnadu. That will go into be one more fantastic match and resulted match and of the Super 6 in the other group and the B group. And this is 2 matches. The last 2 matches of the league stage will going to decide the position of the 10 teams to that Super 6 of prestigious Mudipu Premier League 2025. Dead Swam, he connected one beautifully and he got a huge distance as well. This is absolutely monumental. Sushant, the man who really performing very well in day number 2, continuing his form, what he left in the previous match. Played at a magnificent stroke down to mid-wicket boundary. And with that 6 cover, jumps into 30 now for the loss of 1 wicket. Sharat the second time. The one more full toss, pulls the ball, doesn't get hold up that one properly, no proper connection as well as couldn't manage to get the position very quickly to go for the full shot. Not an easy full toss for the batter Sushant. He got a single and with that single score the moves on to 31 on the board. Sujir this time caught behind the wicket, held the nick. Sujir walks. Sharat bounce back. And that flighted delivery, the batsman just wanted to go for the big swing of the bat. Misses and got a little bit edge of the bat. The wicket number 2 is back in the pavilion of MFC Strikers. But still they're in a good position in this situation. Out of 21 deliveries, they've already scored 31 massive runs. There's a new batter. Coming to the middle in place of Sujir. Lofted catch, it is a call, but ball landed safely, defeats the fielder as well. Total misjudgment by the fielder in the deep and costing the boundary. With that boundary score, but moves on to 35 on the board. The runs which is coming in the form of boundary and 6 here for MFC Strikers. And played it down to square leg region for a single, one more addition to total. Addition of that single scope and moves on to 36.
Again, that power outside the line of off time going to be punishable from the umpire. Again, the couple of runs. With that couple of runs, Kobana moves on to 38 on the board. Abhi again got a bat onto that last moment inside edge of the bat. One more single, one more over, which is comes to an end. One more productive over for MFC Strikers. 3 completed after completion of over number 3. So they're going exactly 13 runs per over, 39 for the loss of 2 wicket. Good score on the board for the team MFC Strikers. 39 3 ಓವರ್ನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. So 39 for the loss of 2 wicket. Last over will going to start. The bowler will going to start the last over. So Nikit to start the last over. No ball call by umpire and switch it is comes into play. Played that one absolutely with the timing and perfection. Exquisite footwork. And no ball call by umpire. It's going to be a free hit delivery. With that free hit delivery, they've got opportunity here under 44. Is a total score here. The very big score on the board for MFC Strikers are looking in a commanding position. Nikit. If they're going to win the match, they will going to be a toppers in the points table. Again, short pitch delivery. Abhi little bit early into that stroke, missed it completely. He's not happy with himself. A lucky escape here for Nikit as the batter fails to take advantage of that short pitch delivery. Second time. Full toss and played it down to deep long on region. Just for a single. With that single, Skobana moves on to 45 for the loss of 2 wickets. Last 4 balls remaining in the innings. This time going to be a full toss delivery. The wide call by umpire. No stroke attempted by the batter. So that wide call by umpire. With the addition of that extra score, moves on to 46 on the board. Nikit, 4 time in this over. This time he's chasing the ball. My goodness. It's absolutely no ball, no doubt at all. Ball pitching outside the line of the pitch. But he's just going for the stroke. Got extra at 2 runs there. Little bit comedy of error in the ground. The ball which is slipped out of the hands. And batter doesn't want to miss the golden opportunity. Of course, he just wanted to send the ball out of the park. Couple of runs and with the couple of one extra. Altogether 3 runs added total. 49 on the board. So free hit delivery again for Sushant. Bowled out, but it's a free hit delivery and it's a free hit delivery. They're going for the extra run as well. And again he missed it. And 2 runs here. Excellent running bit to the wicket. 2 opportunity in 1 ball which missed out and they converted that into 2 runs. 50 comes up. 50 comes up here for MFC Strikers. They got 51 now. Last ball remaining. Last ball remaining. Please note the last 2 balls remaining. 3 balls remaining in this over. Last 3 balls remaining of their innings. So looks like Sushant is very much tired
because of even the not that much of big sunshine, but its humidity is very high, so that yes, it's going to be a bit horrible condition. But compared to yesterday's good condition, weather condition, overcast condition for morning, we are not seeing that much of brightness here, and hide and seek from the sun along with the clouds. They are absolutely sometime coming with some brightness, but so far it's a good condition. Here is the last 3 balls remaining. It's lofted, handsome looking drive, high and handsome, and after he got some water break, he got some energy back, and converting that energy into that big shot down to deep long on for a massive shot, and Scuba jumps into 57 for the loss of 2 wicket. Again he got a single there. With that single, Scuba moves on to 58. That means the last delivery remaining in their innings. And the Niket will going to take the strike of Abhi will going to take the strike of Niket, and last ball it's going to be a chance of run out in the non-strikers end. But I think the MFC strikers absolutely, they strikes the ball very well, so that got some runs on the board, huge runs on the board. In fact, they scored a 58 and they set a target of 59 for Amma cricketers. 19 runs coming from that last over. 2 overs is very expensive. The first one is 18 and the last one is 19. First over 18 and second over, last over, which is 19. And even the third over is also very expensive, 15. Altogether, this is why the Amma cricketers are looking in trouble, because they have to climb the mountain of runs. It's not so easy in this condition to get that big total, but do or die match, who knows? Sometime do or die match, the batters can bounce back, because no other option at all. If they wanted to remain in this competition, Amma cricketers have to chase these runs. Otherwise, the team MFC strikers will go into the toppers in the points table in the Group A. If they manage to win this match. And we'll take a short break here, and after the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone. And after this match, the last match of the league stage, SMC Pajir takes on KFC Kurnadu. So that I request all the players of both the teams, please be reported here immediately to sign the official chart. धन्यवाद सतीश. So the target is 59 the target, and their innings now going to start. The first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. और ड्राइव करते हैं मिड विकेट पर, रनआउट का खतरा, और पहली गेंद पर यह विकेट यहां पर गिर चुका है.
Fantastic piece of work made by the mid-wicket fielder, and also a fantastic piece of work made by wicket-keeper behind the stumps. And because of both of their effort, the first wicket fallen, the batsman is backing to pavilion in the face of run out. तो अम्मा क्रिकेटर्स की ओर से पहला विकेट गिर चुका है 0 पर। एमएफसी स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए, 59 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा और पहली गेंद पर अम्मा क्रिकेटर्स का विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स नॉट फॉर वन इन द फर्स्ट ओवर। इट्स नॉट फॉर वन इन द फर्स्ट ओवर। और जहां तक का सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो नंबर 3 बैट्समैन, नंबर 3 बैटर इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और गेंदबाज ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहता, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द फर्स्ट ओवर। शरत इस वक्त गेंदबाज जो कि गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं और अभिलाष जो कि स्ट्राइक का अभी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और ओवर की अगली गेंद लेकर शरत lofted in the air and taken just outside the, oh no, in fact it dropped by the fielder at mid-off, and the batsman come back for the second run before that. So couple of runs added to the total और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर। एक लंबा सफर तय करना बाकी, 59 रन उन्होंने बनाने, 59 runs they have to score for victory, and they simulated 24 deliveries with a required run rate of exact almost 2.5 runs per ball. Lofted and finds the gap as well. 1 bounce into the fence. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರಶೀದ್ ಮುಡಿಪು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇವರು. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಟಗಾರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಶೀದ್ ಮುಡಿಪು ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ MPL ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ರಶೀದ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Is bar drive cut into the gap as well. This could be one more boundary, and it does. Consecutive boundaries for the batsman. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 11 on the board, 1 wicket lost, and this is the first over in progress. So 2 consecutive boundaries for Abhilash. और शरत इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। For the last time in this over, Sharat bowls. Gone for a big one, misses. Dot ball to end the over. First over completed, and after first over, Amma cricketers chasing the huge target of 59 in 4 overs. They made a mixed start. In fact, 11 runs they scored for losing 1 wicket after their completion of first power play over. So 48 to get from remaining at 18 deliveries now, with a required run rate of exactly 16 runs per over. 18 balls and 48 runs required. Sushant गेंदबाजी प्रारंभ करते हैं. Sushant starting a fresh proceedings from that side, and 48 runs to get from remaining 18 balls. Quite stiffer but not impossible.
और देखते हैं यहाँ पर अम्मा क्रिकेटर्स के बल्लेबाज इन बचे हुए 18 गेंदों में 48 रन जो बनाने हैं उन 48 रनों को बना पाते हैं या नहीं. The first ball of Sushant's over is now coming up. Right arm over the wicket here he bowls. Still some fielding adjustments is going on there. Or Sushant starting a fresh over. First ball of Sushant's over is now coming up. Lefty batsman Manu is now going to face Sushant. First ball. Not quite mid wicket in fact. एक रन मिलेगा इस बीच शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर 12 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट. और गेंदबाज सुशांत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अभिलाष जो कि पिछले ओवर के में 2 चौके लगातार लगा चुके हैं और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई डीप बैक स्क्वायर लेग 2 स्क्वायर इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद दाहिने हाथ के बल्लेबाज अभिलाष के लिए. और सुशांत इस वक्त अभी के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट फील्डिंग में कुछ जमावट करने के बाद ये गेंद इस बार उछाला गेंद को लॉन्ग ऑफ पर लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद. बेहतर फील्डिंग. दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यहां पर यह विकेट गिर चुका है. Quick piece of work made by the bowler after receiving the throw, flicking the wickets very quickly, and the batsman got just shot out of his crease. And a good decision given by the umpire also. Without taking any help of the third umpire, he ruled him out. Good decision came from the field umpire. और इस बीच एकमात्र रन उनके खाते में जुड़ेगा. 13 on the board for losing 2 wickets. In fact, 1 shot. So 2 runs has been deducted. And now the score is 11 after being deducting 2 runs from the team's total. तो ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज पहले सीमा रेखा को पार करने के बाद दूसरे नए बल्लेबाज जिन्होंने एंटर हुआ था पहले बल्लेबाज जो सीमा रेखा को पार करने के बाद और क्रिकेट के नियमानुसार कोई भी बल्लेबाज सीमा रेखा को पार करने से पहले दूसरे बल्लेबाज एंटर होना ज़रूरी होता है मैदान पर. तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर 2 रन घटा दिए गए. 2 runs has been deducted. 11 on the board. Sushant lofted, driven that one down to long on. Fielder after it. It's gone over the fence for a boundary. Fumble made by the both fielders, and because of that, it's crossed over the fence after flicking their hands from the both fielders' hands. In fact, 15 on the board for losing 2 wickets in the over number second in progress. और अभिलाष के बल्ले से तीसरा चौका लग चुका है और इस बीच ये गेंद lofted. This time he's got that one for a maximum. It's a biggie. Absolutely perfectly struck. He just got that one from the middle of the bat and lofted that one for a biggie. So with that 6, scoreboard is now jumping up to 21 on the board. 21 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. It's 21 for the loss of 2 wickets. So this is an outstanding struck came from the bat of the right-handed batsman. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का तो इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अभी बैटिंग ऑन 20 including 3 4s and 1 6 and 1 couple. He scored 20 runs and he's now going to face the next delivery from the bowler सुशांत. और सुशांत गेंदबाजी पर आगे बढ़ाते हैं दाहिने हाथ ओवर द विकेट. And this time missing 2 for Saadi off stump. Wide का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 22. That means 37 more runs now they have to score for victory in remaining 2+ overs. And this time lofted in the air and comfortably held on his follow through. तो इस वक्त बदला जो कि गेंदबाज लग चुके हैं छक्का प्रदान करने के बाद. And a fantastic innings came to an end from Abhi. He scored 20 runs. And the third wicket lost. Now Amma cricketers are 22 for the loss of 3 wickets.
37 runs more. Now they have to score for victory. 13 balls left, 37 runs required. और रक्षित का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार सुशांत की गेंदों का, और सुशांत गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी। अपील इस वक्त जारी है, लेकिन किसके लिए अपील इस वक्त जारी है ये पता नहीं है। यहाँ पर जस्ट इस वक्त खिलाड़ी बनाते हुए, शायद आई थिंक अंपायर इस वक्त इशारा करते हुए बल्लेबाज को, और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज इस वक्त पेविलियन की ओर लौटते हुए, शायद कॉट बिहाइंड हो सकता है वहां पर। तो यहाँ पर एक और विकेट गिर चुका। 1 more wicket fallen and now 2 overs completed, and after completion of 2 overs it's 22 on the board for losing 4 wickets, 37 to get from 12 balls. So we're just waiting for the next batsman. Twelve balls, 37 required. So not out is the call. The ball collected by wicketkeeper after 1 bounce. Two overs completed, 22 for the loss of 3 wickets, 37 required from 12 balls. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद. So just a single he got. 23 on the board for losing 3 wickets, and now 36 to get from 11 balls. And now 36 to get from 11 deliveries. It would have been possible if the batsman hit a couple of sixes at this stage. And this time, here he comes, right arm over the wicket. So this is going to be, this could be in trouble. In fact, he made it.
1 run added to the total. It's 24 for the loss of 3 wicket. Now 35 to get from remaining 10 balls. 10 deliveries and 35 runs required. It's going to be very interesting indeed. And now it's going to be the next deliver. Ugly again. The Lekar Gendbaz. Tayyar lost it. This time he's got the distance. Yes, it does. Big one from the batsman. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 30 रनों पर. 30 for the loss of 1 wicket. 29 to get from 9 balls now. अगर 2-3 छक्के लगातार लगते तो शायद यहां पर बैटिंग साइड यानी अम्मा क्रिकेटर्स इस मैच में वापसी कर सकती है. Dimmer delivery and he misses. Beat the third man fielder. और एक रन मिलेगा. मिसअंडरस्टैंडिंग and he misses. विकेट कीपर इस वक्त चूक चुके हैं. रन आउट का मौका जरूर था. वाइड का इशारा. 1+1 2 runs now added to their total. 32 for the loss of 3 wickets. 27 to get now from remaining 9 balls. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए एक लंबा ओवर इस वक्त प्रगति पर गेंदबाज सुजीर का. और सुजीर इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार गेंद को उछालना चाह. नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली. इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर. 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 33 for the loss of 3 wicket. 26 to get now from remaining 8 balls. 26 रन चाहिए. 8 गेंदें बाकी. और सुजीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. और जहां तक का सवाल है इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त गेंदबाज करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. This time gone for a big one, misses wide. 34 the score. So next match will be the last match of the league stage. Will be played between NMC Pajir versus KFC Kurunadu. And because of that, I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for the toss procedure. In the air and this time fell in the vacant area. और 2 रन यहाँ पर मिलेंगे या नहीं देखना पड़ेगा. इस बीच ये विकेट गिर चुका है. Just a single they got and a wicket lost. 35 over number. Still 1 ball left. That means 7 balls left. 24 runs required. KFC Kurunadu are won the toss and what the decision they will take. Just we have to wait and see. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज सुजीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ. और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज. पैरों पर गेंद टकराई और शॉट फाइन लेग पर जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है. सिंगल टू एंड द ओवर. 36 ऑन द बोर्ड and 4 wickets lost. 3 overs completed. That means 23 to get from last over. That means in remaining 6 deliveries. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕಡೆಯ ಪಂದ್ಯ SMC ಪಜೀರ್ ಹಾಗೂ KFC ಕುರ್ನಾಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So the last over start 23 to get 23 रनों की जरूरत अंतिम 6 गेंदों पर. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए So the first ball of the last over of the innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. पहली गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया. नॉट क्वाइट मिडल गेट. इनफैक्ट द बॉल फेल इन द विकेट एरिया. 1 रन पूरा कर चुके हैं. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो इस वक्त बल्लेबाज के पीठ पर टकराता हुआ और बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण करते हुए
Couple of runs added to their total. 38 on the board. That means 21 to get from 5 balls. और गेंदबाज चरित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. चरित इस बार गेंद खेल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर. फिर से दूसरा रन लेना चाहते हैं. दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए. थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी वाइड और बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. Again a couple of runs added to the total. 40 on the board. That means 19 to get from remaining 4 balls. चरित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. और कार्तिक एक बार फिर से उनका सपना करते हुए. This time driven that one down to deep mid wicket. In fact, he's got a single. Once again they come back for the second and they get it comfortably at last. 42. The last chance in front of the batsmen of Amma cricketers. Almost 3 sixes required in the last 3 deliveries. 17 to get from last 3 balls. 3 गेंदों में लगभग 3 छक्कों की जरूरत. अंतिम अवकाश इस वक्त अम्मा क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों के सामने. चरित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. This time lofted into the gap as well for 4. And with that boundary scoreboard moving up to 46 now, but that is not enough for them. Now 2 sixes required in the last 2 deliveries, not for victory but for tie. अगर बचे हुए 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते हैं तो मैच यहाँ पर टाई हो सकता है. और देखते हैं यहाँ पर इस अंतिम अवकाश का किस तरह सदुपयोग यहाँ पर बल्लेबाज कर पाते हैं. So 13 to get from 2 deliveries. In fact 2 sixes required for tie. और 2 गेंदें इस वक्त बाकी और गेंदबाज इस वक्त तैयार. The striker is Karthik. And now Charit bowls to Karthik. 13 to get from 2 balls. 12 for tie, 13 for win. 2 balls left. Lofted, and this time I think it's got the distance. And now the chance remained for the batsman. 6 needed in the last ball, for not for victory but for tie. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಸೇಗುಳಿ ಸರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So 6 required for tie, 7 for win. और ऐसा कहना पड़ेगा अम्मा क्रिकेटर्स का भविष्य कार्तिक के हाथों में और चरित के हाथों में यहाँ पर एमएफसी स्ट्राइकर्स का भविष्य. तो अंतिम गेंद बाकी है यहाँ पर. छक्के की जरूरत टाई के लिए. 7 रन चाहिए विजय के लिए. और इस बीच चरित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त कार्तिक सामना करने के लिए तैयार. द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप. हियर वी गो. इस बार चूके. दैट्स इट. 6 runs thrilling victory for MFC strikers against Amma cricketers. And a fantastic delivery bowled by Charit. The last delivery of the match which ended in a dot. And 6 runs thrilling victory registered by MFC strikers against Amma cricketers. And with that victory they backed the complete points. So fantastic match ended. And the next match will be the last match of the league stage. Will be played between SMC Pajir versus KFC Kurunadu. And we'll be back right after a short break with my friend Satish in English when the next match will going to commence. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
So thank you very much. We are coming to the very interesting match, which is the last match of the league stage. It's going to be decider of the group B, which team will going to qualify. But coming back to these two teams, SMC Pajir, if you manage to get the booster points, it's good enough for them to qualify. But for the team KFC Kurnado, they not only wanted the booster points, but they have to win this match. So the must win as well as a must booster point here for the team KFC Kurnado if they wanted to qualify. So it's going to be a very interesting match for the Group B for these two teams, and other teams also just looking towards the result of this match, because they wanted to see that which team will going to qualify. And KFC Kurnado, if they manage to win this match here with the booster point, they will going to qualify. And SDC Ayodhya Nagar, the one team which is qualified in. And so in the Group A, MFC Strikers are managed to get the top in the points table, and other two teams, Namo Friends and SVC, Hua Kwakalu, they are qualified for the Super 6. But in the Group B, we have to decide. One team, SDC Ayodhya Nagar and United Mudipu, the two teams were already qualified to the Super 6. And out of these two, I think even Bubbly Warriors also looking towards the result of this match. And here is the first ball. Right arm over the wicket ball. Starts with the delivery, which is called as a wide. The bowler brought into attack to bowl the first over. Ashish bowled a wide. The first run comes off for Pajir, and again one more delivery, which is good enough to defeat the bat of Danger Man Vinith. The previous match he played a very good innings for his team, and in this particular match SMC Pajir have to get some runs. This time he played it wide of that fine leg fielder. The outfield is very quick, so that it's no chance for the fielder to stop that the boundary. Vignesh, the fielder, tried to chase that ball, but he's just given up, seeing the ball is running towards a deep fine leg boundary for 4 runs. So Abhi starts well with the boundary, and this is the booster over where team SMC is good enough. If they want to get the booster points, they can qualify for the Super 6. But a lot of hard work is required from KFC Kurnado. This time, what a shot that was! Absolutely, it's a huge one. That ball went many miles. Ball is almost landing into the commentator's room. This is a mighty blow coming from the mighty striker of the ball. Vinith, the batter, swinging that one very hard. With a good striker of the ball. It's after the 6, followed by the boundary. This is the vast booster points we are talking about. The team SMC Fajir already they scored 15 runs in 3 balls with the 2 boundary and 1 6 in the 4 deliveries. And this has been a great start there from Abhi for the team SMC Pajir. This time drives that one, fails to defeat the infield. Short mid-off fielder fields the ball, returns the ball. No chance for the batter to take any kind of runs, but it's a 15 runs already on the board. Good start here for SMC Pajir. The first time seeing that sun which is coming with a full strength here. And the time is exactly 1 o'clock in the afternoon. It's a bright and sunny afternoon. And the condition is almost looking very hot of this match as well, tournament as well. Played it nicely down to wide of that shot, extra cover. One more single, 16 runs coming from that over. The good start here for SMC Pajir. They got a 16 and a big hand from Abhi in that particular over, the power play over. We have witnessed some powerful strike came from the bat of Abhi. Hit one massive 6 down to deep square leg, and then he played 2 boundaries, one at deep fine leg, one at deep mid wicket. So 16 means it's a good start here for SMC Fajir. The outstanding tournament is in progress.
Mudipu Premier League 2025 Season 7, which is proudly presented by Sri Mudipinnar Cricketers in this Mudipu Panchayat cricket ground, one of the most beautiful and biggest cricket stadium situated. And of course, this cricket ground is witnessing some prestigious cricket tournament. Always it's going to be a proud feeling for each and every players to perform, especially the tournament like this Mudipu Premier League 2025. The season 7 is in progress. Lot of hard work is done to organize the 2 days of cricket tournament. More than 2 months of efforts required if you wanted to organize the 2 days of cricket tournament. The first ball of the over number second, the batter Rabi just wanted to guide the ball down to third man region, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler Samit. Second time in this over. Ball sings, and what a mighty striker of the ball. When Abi hits the ball, he hits it very neatly and cleanly, as clean as a whistle. Vinith, little correction, hitting that strokes quite brilliantly. He's on fire. Fantastic stroke coming from the bad blade of Vinith. So batting on 21 with the help for 2 6 and 2 boundaries. He's looking in a perfect touch. Ah, what we are talking about, the perfect touch. Here is another perfect connection. The delivery which is not ideal for to bowl to the caliber of this man, Vinith. He is absolutely enjoying that big stroke. Again, one more huge 6 coming from the blade of Vinith. So he's absolutely dealing with some big shot in this particular match. The runs are coming like a fast flowing waters of the rivers. Right arm over the wickety balls. Drives nicely. There is the fielder is there in the deep long on. Will going to cut it off. Ample time for Vinith to complete the single. What a batting performance here from Vinith, wearing that jersey number 27. Samit to ball. The young man has got a punishment so far. Again, played it wide off that bowler on his follow through. Try to get that one, but it's not so easy. So even Rachan is also giving some good stand from other end. They're rotating the strike. One more delivery. Sanit will go into ball. Right arm over the wicket. Balls lofted and fielded there in the long off. That's the end of Vinith's innings. He played an absolutely gem of the innings. One of the fantastic innings with 28 runs. The quick fire 28 runs. The last match, man of the match. So man of the match of the previous match, which is goes to Sushant for his all-round performance. So Sushant, I request Mr. Sushant, please come and collect your man of the match award for your all-round performance in the previous match. So Sushant out for 28 and total score is 30 on the board. Too expensive over which is comes to an end. 16 from the first, 14 in the second. It definitely is going to give a lovely start here for the team SMC Pajir with the must-win match. Even the must-win match here for the team KFC Kurnadu. But this is not a good start from the bowling. The Rakesh will go into ball. Third over of the innings. Starts with a beautiful delivery. The left arm spin bowler. Leg spinner brought into attack. And bowled with the beautiful flighted delivery outside the line of off temp. No run scored. This time again he wanted to go for the expansive drive. He got a single for that. With that single score, but moves on to 31 on the board for the loss of 1 wicket. The batter got his run. Rachan. Sachin will be the striker.
This time lofted, but I don't think it will go to get the distance. Not really getting that one from the middle of the bat. Mistimed cricketing stroke from Sachin, and he's back in the pavilion. He's out for duck. The wicket number 2 is back in the pavilion. After the wicket innings of Vinith, the wickets are the falling here of team SMC Pajir, but still they are in a good position. They are in a right position of getting some big total here, but lot of hard work required from the bowlers of Kurunadu. After conceding plenty of runs in the first 2 overs, they have to get another 2 good overs, but so far it's a good start from the bowler, the left-arm bowler. Very effective. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇದು ಶಾಂತ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರು ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಆಸೆಗೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. This time he played it down to long off region, and first ball dismissal here for Ashraj. He's out for golden duck. Shishant receiving the man of the match award from our chief guest for his wonderful performance from the bat and ball. They deserve the man of the match award. Congratulations, and thank you very much for our chief guest. So wickets are tumbling here, and Rakesh, the man, the bowler, who is in a hat-trick now. Bharat is a new batter, and the bowler is on hat-trick. Rakesh, so far there is no hat-trick. This time switch it, and chance of catch there. The fielder is not quick enough. The opportunity of hat-trick which is created, but the ball which is landed safely. Only single there. The great over is in progress. So far 2 runs and 2 wickets in this over. The scoreboard is remain on 32 on the board. This time driven nicely down to deep long on, and with that single, the one more over which is comes to an end. After completion of over number 3, total score is 33 on the board. They're going exactly 11 runs per over, but first better over from the point of view of team Kurunadu. It's bowled by Rakesh, 2 wickets for just 3 runs. The last over remaining in their innings. Now it looks like it's going to be very hot condition. That we have some good weather condition for morning to till 1 o'clock. But now we are seeing some bright sunny afternoon. Vignesh brought into attack to bowl the last over of the innings of team Pajir. SMC Pajir, and the batter will go into take the strike. Rachan came as opener for the side. He's batting on 2. Vignesh short on up. Again tries, but straight to the hands of mid-off. And quick running between the wicket so that Rachan managed to complete the single. With the addition of that single, score Namuza onto 34 on the board. 34 for the loss of 3 wickets. ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜಿರುಗುತ್ತು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Again they wanted to go for the couple, but not easy to get the couple, just a single. Vignesh bowling that tidy line, not giving any room for the batters so far for any kind of big shots. Both the batters are picked up a single each in 2 balls, and third time in this over. Rachan will be the striker. Vignesh bowls, tries that one down to mid wicket again. Only a single, not more than a 2. ಇವರಿಗೆ ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಲಾಡಿ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜಿರುಗುತ್ತು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. This time he's lofted, and a chance here for the fielder to take the catch. Excellent catch taken in the deep. Good judgment, because he's almost in the edge of the boundary line. He just need to take care of that line as well. After taking the catch, he's just maintaining his body balance, and that was a wonderful
Judgment cast taken in the deep long on, and that's the end of innings of Bharat. It's caught at deep long on. The new batter in his Warren. So last 2 overs, it's a good comeback by the bowlers of team Karnad. They managed to put some break on the run rate of their opposition. So last 2 balls remaining in their innings of Pajir. After that, got a flying start in the first 2 overs. 16 in the first, 14 in the second. Then 3 runs in the last over, and this over is turning out to be one more good over. But job which is not yet over from Vignesh. 2 balls remaining. Varun came into bat here and opportunity, but Vignesh fails to get that one. Only a single there. With that single, score moves on to 37. So last delivery of the innings of SMC Pajir. This is the last match of the league stage match. After that, the Super 6 will go into comes into play. The 3 teams from each group will go into qualify for the Super 6. This time deflected from the leg. No ball called by umpire. And this is going to be disaster. Last delivery and free hit delivery for the batter. A couple of runs. 39. And again played it down to deep long on region. They wanted to come back because the second there, and in comes a throw, and looks like they completed that 2, and they wanted to go for the third as well, but run out taken place. So a couple of runs and run out in the last delivery of their innings, and they finished with a 41, and they set a target of 42 to win the match for team must-win match here for the SMC Pajir. They're not only the must-win match, they have to get the booster point. 17 they have to get. They have to do 2 things. One is they have to get 17 runs in the first over, and then afterwards they have to win the match if they wanted to qualify. This is a big ask, but in cricket anything can be possible. KFC Kurnadu as under a tremendous pressure of getting 17 in the first over and getting winning runs of 42 to win this match. But SMC Pajir has looks like they got the booster point. It's good enough. Little correction. If they manage to win the booster points, they will go into qualify. Even if they lost the match, it will not going to affect their position in the Super 6 because they managed to retain that booster points here. They will go into qualified. So it's going to be a very interesting session. The innings of this match when I said KFC Kurnadu batters will go into chase this big total of 42 to qualify for the Super 6. We'll take a short break here, and after the short break, my friend Gopi will go to take over the microphone. Thank you. ಸೊ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7 10 ತಂಡಗಳ 2 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈವರೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅತಿಥಿ ಮಹಾಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂಥ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 2 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 10 ತಂಡಗಳ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಒಂದು ಮುಡಿಪು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. 10 ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
धन्यवाद सतीश। तो जहां तक सवाल है अंतिम लीग मैच का, पहली गेंद लेकर तैयार है, फुल टॉस लॉफ्टेड एंड दिस टाइम चांस फॉर द लॉन्ग ऑफ फील्डर, ही वोंट गेट दैट वन। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। केएफसी कुरनाड और एनएमसी पजीर के बीच मैच चल रहा है और जहां तक हालात ऐसे हैं कि केएफसी कुरनाड को अगर विजय दर्ज उन्हें करना ज़रूरी है, लेकिन बूस्टर पॉइंट के साथ विजय दर्ज करना ज़रूरी है। और जहां तक सवाल है एसएमसी पजीर के लिए, तो इस मैच को वो अगर हारते हैं तो भी अगर बूस्टर अंक वो प्राप्त करते हैं तो इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर जाएंगे। तो इस वक्त बूस्टर अंक दर्ज करने के लिए केएफसी कुरनाड के बल्लेबाजों द्वारा यहाँ पर संघर्ष जारी है। 17 रन इस वक्त बनाने हैं बूस्टर अंक, बूस्टर पॉइंट प्राप्त करने के लिए पावर प्ले ओवर में केएफसी कुरनाड के बल्लेबाजों को। और दोनों आरंभिक बल्लेबाज राकेश और रूपेश इस वक्त मौजूद है। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए कार्तिक, और ओवर की अगली गेंद लेकर कार्तिक इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतरीन गेंदबाजी, फैंटास्टिक डिलीवरी। नाउ 3 balls and 14 runs have to score for the batsmen of KFC Kurnad to get a booster point. So that is the main important thing for them at this situation. 3 गेंदों पर 14 रन और बनाने, बूस्टर अंक दर्ज करने के लिए केएफसी कुरनाड को लगभग अंतिम अवकाश कहना पड़ेगा उनके बल्लेबाजों के सामने। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए विकेट कीपर चूके डॉट के नहीं, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 4 रनों पर। 4 on the board, yet to lose any wicket in the over number first in progress. So 13 to get in remaining 3 balls to get a booster point. This time misses, fantastic delivery, gone through for a quick single, he misses and he's got a single. एक रन मिला इस बीच, 5 on the board, 2 sixes required in the last 2 deliveries to get a booster point for the batsmen of KFC Kurnad. 2 छक्कों की जरूरत बचे हुए 2 गेंदों में बूस्टर अंक दर्ज करने के लिए, बूस्टर अंक प्राप्त करने के लिए इस वक्त केएफसी कुरनाड के बल्लेबाजों के लिए। और गेंदबाज कार्तिक का सामना करते हुए बल्लेबाज राकेश, लेफ्टी बैट्समैन, और गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, चूके फॉलो थ्रू में कॉटन बाउल्ड, और यहाँ पर अपील जो कि जारी है, लेकिन अंपायर अब वहाँ पर खड़े हुए और बल्लेबाज भी खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कोई क्षति नहीं, शायद गेंद पैर पर लग कर आई थी और यहाँ पर कोई क्षति नहीं, नो डैमेज डन फॉर द बैट्समैन। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर। 5 on the board, लास्ट बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। कार्तिक, and this time he bowled with the extra pace, wide delivery above the shoulder height of the batsman, और गेंद वाइड के रूप में इस वक्त घोषित की गई है। 6 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। और गेंदबाज कार्तिक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद लॉफ्टेड, दिस टाइम आई थिंक he's got the distance, but that is not enough for them. They scored 12 runs and the booster point for SMC Pajir now, and with that booster point they are qualified for the next round of this competition. अब KFC कुरनाड अगर विजय भी दर्ज करता है इस मैच में तो भी अगले दौर में प्रवेश प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल है उनके लिए। तो अब 3 ओवर का खेल बाकी, and 40 to the target, that means 12 runs scored, exactly 13 runs required in this remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. Match number 20th, the last league stage, last league match of the league stage is now progressing here between SMC Pajir versus KFC Coronado of this prestigious cricket tournament MPL, Mudipu Premier League Season 7 2025, which proudly organized by Sri Mudipinnar cricketers SMC Mudipu. और इस बीच गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए एक बेहतरीन exquisite live coverage, fantastic live coverage we are just watching here right from King Sports under the great leadership of Mr. Irfan, and
न सिर्फ ऐसा कहना पड़ेगा देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का मुआयना करते हुए एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट के जरिए इस वक्त यूट्यूब पर दे रहा है किंग स्पोर्ट्स। और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए गेंद इस बार गेंद को खेल दिया। गेंद पहुंची इस वक्त वाइड स्लॉग ऑन पर, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट सिंगल ही गॉट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर। और एक आक्रामक बल्लेबाजी की इस वक्त सख्त जरूरत है KFC कुरनाड को अगर उन्हें इस मैच में विजय दर्ज करना है तो। और भरत इस बीच राकेश के लिए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेला जरूर लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर फॉर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। With that single run, the scoreboard moving up to 14 on the board for losing no wicket in the over number 2 in progress. Still they have a long way to go. In fact, 28 more runs now they have to score for victory. Bharat, ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, just a single he got. In fact, they're looking for the second but won't get it. Just a single, 15 on the board, yet to lose any wicket. और भरत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर था विकेट। गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन का इजाफा और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर। 16 रन्स आर कमिंग स्टिल इन सिंगल्स नाउ फॉर KFC कुरनाड एट दिस सिचुएशन। और भरत अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಹಾಗೂ SVC ಹಾಕುವ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ SVC ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, 17 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट। और गेंदबाज भरत अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, अपनी ओवर की 5वीं गेंद कहना पड़ेगा, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद this time caught behind the wicket, absolutely no doubt about that. It's got a big deflection on that, big outside nick, and the wicket keeper behind the stumps made no mistake. First wicket fallen, Rupit the man departs, and now it's 17 for 1. आशीष नए बल्लेबाज, स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन्स नहीं मिलेंगे। सफल ओवर की समाप्ति भरत के, जिसमें सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किया। 5 runs came from this over. And now it's 17 for 1. Still the batsmen of KFC could not searching for the right track. So 42 the target, that means 25 to get in remaining 12 balls. That means in remaining 2 overs with the required run rate of exactly 12.5 runs per over. किशोर starts the fresh proceedings. First ball, पहली गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंचे शॉर्ट थर्ड मैन पर, स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके और एक डॉट गेंद और उनके खाते में जुड़ता, और एक डॉट गेंद के साथ स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार किशोर, this time driven that one down to long on, fielder standing so deep, he just got a single for that stroke, और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। 18 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. 10 balls left, 24 runs required. Quite stiff target in front of the batsmen of KFC Kurnar, but not impossible. और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार किशोर, दाहिने हाथों पर द विकेट। Again lost it, this time taken comfortably inside the fence.
but it's a no ball and the batsman got a life. No one is backing up. In fact, they come back for the second run. Couple of runs added to the total. No ball का इशारा हो चुका था, इस वजह से बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं. 2 रन उनके खाते में जोड़ जाएंगे. 20 on the board for losing 1 wicket. 22 to get from remaining 10 balls now. 21 the score in fact, and the same number of runs they have to score for victory. 21 more now they have to score for victory. The present score is also 21. Lofted, and this time it taken inside the fence, but that is a free hit delivery, and once again the batsman got a life. So second consecutive life for the batsman, और एक रन यहाँ पर मिला. 22 on the board, और 9 गेंदें बाकी हैं. सिर्फ रन से चाहिए इस वक्त 20. 20 runs to get from remaining 9 balls. Wide again. 23 now on the board. 23 for the loss of 1 wicket. 19 to get from remaining 9 balls. और गेंदबाज अगली गेंद. यह गेंद उछाला इस वक्त deep mid wicket पर, into the gap as well, and he just got that one for a maximum. The hopes alive for KFC Kurnool of victory, and the scoreboard is now moving up to 29. 29 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका. अब 13 रन चाहिए और गेंदें बाकी हैं 8. 13 runs to get from 8 balls. और बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर लगता हुआ बल्लेबाज राकेश के बल्ले से. छक्का नंबर 2 उनके बल्ले से लग चुका है. Again, this time I think this could be a chance and taken comfortably. आसान सा कैच इस वक्त वाइडिश लंगोन के फील्डर लपकते हुए, और राकेश की बेहतर पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है. So he's out after being hitting 2 sixes. He scored 16 runs into his credit, and the wicket number 2 has been back to the pavilion, and the score is now 29 for the loss of 2 wickets. 13 to get from 7 deliveries. So this is going to be quite interesting in fact. 13 to get from 7 balls. 7 गेंदें 13 रन चाहिए विजय के लिए, और अंतिम गेंद लेकर इस ओवर में गेंदबाज इस वक्त तैयार. किशोर दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. संकेत जो कि सामना करने के लिए तैयार किशोर की गेंदों का. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लंगोन पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं. Oh, just beat the fielder at Langon. In fact, another fielder was backing up at deep Langon. In fact, the batsman got a couple of runs for that stroke, और 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर. 31 on the board. Third over has been came soon, and 11 to get from last over. That means in remaining 6 deliveries. 6 गेंदें 11 रन चाहिए विजय के लिए, और देखना यह है कि केएफसी कुरनौल के बल्लेबाज इन बचे हुए 6 गेंदों में 11 रन बना पाते हैं या नहीं. लीग दौर का अंतिम मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ MPL मुडिपू प्रीमियर लीग सीजन 7 2025 के अंतर्गत, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया श्री मुडिपिन्नार क्रिकेटर्स SMC मुडिपू ने. 10 प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी टीमें इस श्रृंखला में भाग ले रही है. 5 टीम के 2 गुट, 10 टीम 2 गुट में बांट दिए गए. 5 टीम हर ग्रुप में इस वक्त 4 मैचेस खेल रही है, और इस मैच के बाद 6 टीमें इस श्रृंखला के नॉकआउट स्टेज पर प्रवेश प्राप्त करेंगे. और इस वक्त अंतिम ओवर शुरू होता हुआ अभी गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. 11 to get from last over. That means in 6 deliveries. First ball, पहली गेंद. Oh, misses. Good one from the bowler. और गेंद को इस वक्त कलेक्ट कर लिया गया शॉर्ट थर्ड मैन पर, and a wide. In fact, it's a no wide withdrawn by umpire. Just a single run added to the total, and with that single run the scoreboard moving up to 32 on the board. 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 5 गेंदें बाकी 10 रन चाहिए. 10 to get from 5 deliveries, और गेंदबाज अभी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से कम एक चौके या छक्के की जरूरत केएफसी कुरनौल की इस मैच में वापसी कमबैक करने के लिए. और अभी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. इस बार चूके बाउल्ड आउट, and 1 more wicket fallen. Just gone for a mighty heave, not succeeded. और गेंद ऑफ स्टंप को छूकर निकलती हुई गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ एक विकेट गिर चुका है. थर्ड विकेट डाउन. नाउ इट्स 32 for 3. 10 to get from remaining 4 deliveries.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಹಾಗೂ SVC ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. SVC ಹೂ ಹಾಕುವ ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 4 balls remaining, 10 runs required. 4 गेंदें 10 रन चाहिए और गेंदबाज अभी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार बेहतर गेंद थी, उछालना चाहा चूके और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके. जस्ट अ सिंगल ही गॉट बाय का इशारा. 33 ऑन द बोर्ड, 9 रन टू गेट फ्रॉम 3 डिलीवरीज. 3 गेंदें 9 रन चाहिए और अब छक्का या चौका लगाना बेहद ज़रूरी बन चुका है यहाँ पर KFC कुरनाड के बल्लेबाजों के लिए. और अभी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर तब विकेट तैयार अपनी ओर की अगली गेंद. इस बार चूंकि पैरों पर गेंद टकराई और आखिरकार जहां तक रनों का सवाल है तो रन्स नहीं मिलेंगे. अब द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन. 6 and 4 रिक्वायर्ड इन द लास्ट 2 डिलीवरीज. 9 रनों की दरकार इनफैक्ट. 9 to get. Almost 6 and 4 required in the last 2 deliveries. The last chance in front of the batsmen of KFC कुरनाड. और अभी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 2 गेंदें 9 रन चाहिए. 8 for tie, 9 for win. Misses. Fantastic bowling. Again a dot ball bowled by the bowler Hubby. And now just a last ball left, 9 runs required. अंतिम गेंद बाकी 9 रन चाहिए विजय के लिए. और मैच की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज अभी इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए. डाउन द ट्रैक, not quite mid-leg it. That's it. 8 runs victory for SMC Pajir against KFC Kurnad, and with that 8 runs victory, they are through to the next round of this competition. So all the league matches of the league stage has been completed. 20 league matches of the league stage has been completed, and now it's going to be a knockout stage. The first match is coming up live exclusively right in front of you within just short while. और जहाँ तक सवाल है दूसरे दौर के मैच का, तो नॉकआउट स्टेज मैच का, तो पहला मैच यहाँ पर खेला जाएगा SVC हू हाकू कल्लू और यूनाइटेड मुडिपिनार, इन दोनों टीमों के बीच. तो लीग के फिक्सचर्स यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा, नॉकआउट के फिक्सचर्स यहाँ पर देखिए किस तरीके से. पहला मैच है SVC हू हाकू कल्लू और यूनाइटेड मुडिपिनार के बीच खेला जाएगा. उसके बाद दूसरा मैच होगा नमो फ्रेंड्स और SMC पजीर के बीच. और तीसरा मैच टेबल टॉपर MFC स्ट्राइकर्स विल टेक्स ओवर STC अयोध्या नगर. और उसके बाद दूसरे दौर का उसके बाद मैचेस खेले जाएंगे 4 नॉकआउट स्टेज के, और कुल मिलाकर 6 मैचेस, 6 मैचेस टू बी प्लेड ऑन नॉकआउट स्टेज इंक्लूडिंग अ मेगा फाइनल ऑफ दिस कॉम्पिटिशन. So SVC हू हाकू कल्लू won the toss and the what the decision they will take, just we have to wait and see. और देखते हैं क्या निर्धार इस वक्त SVC हू हाकू कल्लू के कप्तान इस वक्त लेते हैं. तो पहला मैच शुरू होगा और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगला मैच यहाँ पर शुरू होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಜ್ಜಾಗದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ SMC ಮುಡಿಪು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 10 ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹೂ ಹಾಕುವ ಕಲ್ಲು, STC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ, ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಜಿರ್ಪಿಲ್ಲಾ, SMC ಪಜೀರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್, KFC ಕುರ್ನಾಡ್, MFC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಬಬ್ಲಿ
ವಾರಿಯರ್ಸ್ 10 ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 60,000 ರು ನಗದು ನೊಂದಿಗೆ SMC ಟ್ರೋಫಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 30,000 ಮತ್ತು SMC ಟ್ರೋಫಿ. ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಗತ್ವರವರು ತುಳಸಿ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೃತೀಯ ನಗದು 15,000 ಮತ್ತು SMC ಟ್ರೋಫಿ ಸುಧಾಮ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚತುರ್ಥ ನಗದು 15,000 ಮತ್ತು SMC ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದುಬೈ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ, ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂತರದ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನಂತರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So thank you very much. We are coming to the very important stage of this MPL Mudipu Premier League 2025, which is proudly presented by Sri Mudipinnar Cricketers SMC Mudipu in this Mudipu Panchayat Cricket Stadium. After that, that great battle in the league stage matches, the three teams from Group A and 3 teams from Group B, which is qualify for Super 6, and 2 teams which is came into that top in the points table, MFC Strikers and SJC Ayodhya Nagar. They are the toppers in the points table, so that they will going to play the Super Semi. But now we are going to start the first match between 2 teams. The team which has got 3rd place in Group A, SVC Hua Kwakalu, they will going to play against the 2nd place getter of Group B, that is United Mudipinnar. So this is match number 1 of the Super 6. And after winning the toss, captain of SVC Huvina Kallu elected to field first against United Mudipinnar. And after this match, one more match will go into play. Namo Friends takes on SMC Pajir. So SVC Hua Kwakalu takes on United Mudipinnar. So it's going to be a very, very important match. After winning the toss, elected to field first SVC. So opening batters came into middle. Gaurish as well as Prajvit, the successful opening pair for their team, will go into start the innings. And the bowler Pawan will go into start the proceedings from the road and first ball. Right arm over the wicket. And this time lovely delivery, little bit confusion and hesitation for the first run, but at last they managed to complete. And Gaurish picked up his first run from the bat, and they started their journey in this very important knockout stage match. One without loss of any wicket. The bowler wanted to get a good start here for the team Pawan for United SVC. This time lovely delivery, just going shaping away from the right-hander batter Prajvit outside the line of off-stump. Just couldn't manage to make any contact with the bat and missed it complete. The wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler Pawan. Balls again, one more lovely delivery. They're going for the quick single, and the easy single at last because the mid-on fielder is in the edge of the circle. Prajvit has also got his first run. So 3 very good deliveries start with Pawan keeping that tight line and length. Just a couple of runs. And now Prajvit wanted the runner as he couldn't manage to run properly. He has got a little bit leg injury. So in place, the runner is coming to join here. And the right arm over the wicket 4th time in this over. This time again that will go into miss the direction, which is going far outside the line of off-stump. The line which is far outside the line of off-stump. So white call by umpire. The bonus run, 3 without loss of any wicket.
And right arm over the wickety balls. It's going to be this time down the leg side, and a bonus run again. 1+1, 2 run here. The Pawan, after he got a very good start from the ball, he just lost his concentration over the line. And consecutive 2 wide deliveries giving some kind of momentum for the team, Mudipu. And scoreboard is 5 on the board. After that 5, 3 extras. It's not a good sign from the bowler, opening bowler, Pawan. Lofted, and fielder is underneath it. Long off fielder, Sandesh, one of the safest fair in the deep, making no mistake at all. It's a difficult one, but he made it very easy by running very quickly to the direction of the ball. The huge wicket here for the SVC. Huakuakallu has absolutely got a good start from the ball. Even the 2 consecutive wide deliveries bowled by the bowler Pawan, but very next ball he managed to dismiss the big wicket of Prajvit back in the pavilion. Again, Prajvit the fails to contribute from the bat in the top of the order. So it's a knockout stage match, is a highly pressure game. Both the teams wanted to win this match if they wanted to be in the competition. The Prahas is a new batter in. This is a disappointment for Pawan after that wicket-taking delivery. He's bowled one more wide. This is the 3rd wide of this over. 6 for the loss of 1 wicket. Lovely delivery there from Faraz. This time Prahas, little correction. Pawan bowled that lovely delivery, and Prahas just wanted to make a little bit room to play that his favorite inside-out cricketing stroke towards extra cover. But he misses the line completely. Final time in this over. Pawan. Faraz again, lovely delivery. Fantastic comeback. Excluding that 3 wide deliveries in this over. This is an absolutely perfect over bowled by Pawan. The young man is producing a fantastic over for SVC Huakuakallu. And scoreboard is 6 on the board for the loss of 1 wicket. So Mudipu has got a slow start. United. Mudipu knows that this is a must-win match for both the teams. After that, I got a chance here to play in the knockout stage match in the Super 6, getting the position of number 2 United Mudipu and SVC Huakuakallu. They got a 3rd place in the Group A pool. The team out of the tournament, the team Amma Cricketers and team Badakate Friends from Group A. And at the same time, Bubbly Warriors in Group B, and team KFC Karnadu are also out of the tournament. The 4 teams. So new bowler in is Arish. Is a birthday boy of today, and wishing him a very, very happy birthday. And he is celebrating his birthday, Arish. So on behalf of all cricket lovers and organizer, wishing him a very happy birthday. And wait and see how birthday boy will going to contribute from his bowling. Arish. Oh, this time it's going to be a birthday gift. It's going to be a birthday gift from the batter. It's not fair, I want to tell you, from the batter giving such kind of birthday gift. The Gaurish sending that one down to deep square leg region. And of course, this is a cricket, of course. Everybody knows that. No excuse even if you are celebrating birthday. But I want to celebrate my batting here with that massive 6 down to mid wicket. The Gaurish got a 6. This time it's going to be one more. Yes, it does. 2 sixes in a row. And Arish will go in to remember this birthday for a long time. He will remember this birthday for a long time because Gaurish is the man. He's giving some birthday gift here. 2 massive 6s. And being the organizer of this cricket tournament, Gaurish did a whole hard work. We can see the last 2 days he's in
The busy customer not in the field, even outside the field as well. This time top edge, but no one there at mid-on to take the catch. Lucky escape here for Gaurish. And one more single there. With that single scored Namuzan to 19 on the board for the loss of 1 wicket. Again, far offside the line of off stump. He's under pressure now, bowler. After that punishment, he just couldn't manage to keep his line and length proper. One more wide. Coming down the track, just try to use his feet. Again, that's going to be a wide. It's not a good start there from Arish. 21 runs on the board. This is a knockout stage, the do or die match. Both teams knows that if they wanted to do before die. And in this knockout stage match, if they wanted to be in the next round, they have to perform. Lofted, but straight to the hands of long off. Prahas, the batter, wanted to get the distance, but he's just absolutely choosing one of the longest part of the ground towards wideish long off. It's not so easy to get the distance in the afternoon. Prahas is once again disappointed. He's a good batter, no doubt at all. He's got all the technique of hitting the ball. But sometime if he wanted to get the distance in that difficult areas, it's not so easy. So Arish at last has got a birthday gift, isn't it? He got a wicket even though he conceded 2 sixes in this over. And last he got a wicket here. Arish bowls and lovely delivery, beautifully bowled. There's an excitement behind the wicket, but not a confident feel. Harish have to deliver one more ball in this over. There is a long over, and it is a big over as well. Scoreboard is 21. That means the 15 runs already came from this over of Harish. Final time. This time again, the tossed up and loose delivery outside the line of leg stump. The batter Nitesh fails to take the advantage of that delivery. Lucky escape here for Arish, and he finished over number 2. And 22 on the board. That means 16 runs coming from that second over of birthday boy. Is absolutely producing that expensive over. 16 runs coming from that over. Now 2 overs remaining. That looks like the team United Mudipu, even though they are thinking about it was good to lose the toss. They got us good runs on the board. They got opportunity to bat first in this hot condition. Time is exactly 1:50 in the afternoon. And after plenty of time, the sun which is coming out of the black clouds. But now we are seeing the clear sky here. The mixing of white and blue clouds. Making this condition too hot and very humidity. Sandesh brought into attack. The good number of crowds enjoying the game of cricket even this working day, the first day of the week. The Monday, Sandesh, leg spinner is in operation. And they played it. Oh, good piece of fielding. Chance of run at wide throw coming from the fielder. Excellent piece of fielding, but throw which is not up to the mark. But if it is a direct, it might be the curtain in the innings of Nitesh. He got a quick single addition to total. With the addition of that single score, but moves on to 23. Full toss, pulls it, and short of the fielder. And Pawan did a great job, isn't it? You know exactly, it's not so easy to take the catch. It's falling short of him. And he just got a very good technique of stopping the ball after one bounce. Collected and the score, but moves on to 24 on the board. Again inside edge of the bat, going for the quick single, fumble from the fielder. They wanted to come back for the second, it's a suicider. No chance at all for the second. Nitesh is the one who is running towards the dangerous end. He is the judger of the run, but it's not a good judgment of the run. Of course, there's a misfield by the fielder, but ball is not too far away from the fielder. So Nitesh just wanted to come back for the second, pays the penalty. Wicket number 2 back in the pavilion. United Mudipu lost their third wicket, in fact. Likith, new batter in. One more very good player for the side. Is a good all-rounder for the side.
So far, Sandesh is trying to tighten up the screws. Bowled 3 very good deliveries. You know exactly the previous over, which is very expensive one. 16 from that over. Now they wanted to put some break on the run rate if they wanted to win this match. Sandesh, different bowling action with the run-off. Full toss outside the line of leg stump. Batter completely missed that one. The easy delivery sometime. It's happening in cricket. If you are lucky enough, the bowler can survive. But sometime even you are not having a luck enough, even good delivery will be dispatched to the fence by the batter. It's all happening in cricket, is a part of cricket. Again, outside the line, next time going to be a wide. One more extra then, with the addition of that extra score, Namuzan to 26 on the board. This is the one area the bowler have to be very, very careful. Conceding the extras. Means this time top edge opportunity. What a catch! Fantastically taken by Vicky. Yatiraj, let me correction, is the one standing in mid wicket. One of the best catch of the tournament. You have witnessed some good catches, single-handed screamer, diving catches, but this is one of the best catch I want to tell you, because while you were trying to take catch in front of you, charging from the deep, so you need to keep that, the body balance is very important. What a fantastic catch taken by the Yatiraj. The great catch. It looks like it is a falling shot of the fielder, but Yatiraj has got a good run to his front. And rolling before will going to take the catch. I think he's just wanted to maintain his body balance. Very important for the fielder in the deep while you are taking a catch, running to your front. Wonderfully taken. So bowler Sandesh got a vital breakthrough here. The huge wicket is back in the pavilion of Likit. Replacing him is Chittaranjan. It's a new batter, Sandesh. Ball swings and missed. Appeal for stump out. Umpire says not out. Tidy over, which is comes in here from Sandesh. Great over. 2 wickets and just 3 runs conceded after completion of over number 3. The total score, which is 26 on the board. 4 runs coming from that over. 1 wide bowled by Sandesh in that particular over. And altogether, it's a great over from the point of view of SVC Huakuakalu against United Mudipu. So next match will be played between Namo Friends versus SMC Pajir. The one more knockout match. Number 2 in the points table in the A will going to take SMC Pajir, which is number 3 in the B pool. So this is going to be a second match of the Super 6. Shishant, bowler, will going to bowl the last over. The equal battle is on in this match. 26, which is the total score in 3 overs. The last over remaining. Lovely competition is on here of Mudipu Premier League 2025 Season 7, which is proudly presented by Sri Mudipinnar cricketers in this most beautiful Panchayat cricket ground. Right arm over the wicket, first ball of the over number last. This time one more single. They wanted to come back for the second. In comes a throw. Why don't really? The Gaurish is an absolutely bad decision. He really made a one jerk there while he's taking the second. He's just made a jerk, and that jerk will make him the shot of the crease. So he's not really happy with the decision. Of course, the batter, his partner Chittaranjan, wanted to come back for the second. Once the first is responded, second he has got a jerk. That's a big problem. That Gaurish is back in the pavilion. His man is looking so good, looks so good from the bat. But unfortunately, he's back in the pavilion. But he's good. A great job for his team, hitting 2 sixes from his bat. Is back in the pavilion after scoring very important 15 runs. 27, which is the total score. And the last over is in progress and last 5 delivered remaining. Manvit is a new batter in.
The bowler again, Sushant is wanted to restrict the runs of their opposition. After that, second over, which is going to be very costly. Again, played it nicely towards the deep mid-wicket region. Again, the throw comes from the deep. Lovely throw. Excellent pick up and throw. It looks like the batter is sort of short of his crease. One more wicket back in the pavilion in the form of run out. SVC, Huha Kuakalu are looking so good in the field. The one fantastic and stunner catch which is taken in the deep by Yatiraj. After that, two excellent piece of fielding by the fielders in the deep. Yadnesh, the fielder, looking so good in the deep. The pick up and throw, which is right into the bails, over the bails of top of the stumps. In fact, in the striker's end, and the batter is finding himself short of his creases. Really great bowling and good fielding performance. Good comeback here by SVC. 28. The last over is in progress. A new batter, Vinith, came into bat, and Sushant, third time in this over. It's going to be a delivery which is punished by umpire, not by the batter. Wide call by umpire, with the addition of that extra score numbers on to 29 on the board. So they are considered some extras. This is going to be a little bit the factor here for this knockout match. One of the most beautiful cricket ground we can witness here in Mudipu. Huge ground. And third time in this over. Shushan. Vinith swings and missed. Lovely delivery, keeping that line very well. Not only keeps the line very well, but he just delivers that one along the carpet. And it's very important for United Mudipinnar that they got the momentum first. But slowly they had lost the momentum, and SVC, they are back in the game very strongly with some excellent bowling and even better fielding. This time lofted, but not more than a single. Sandesh is a quick fielder. SVC has got some good fielders in the side. One more addition with the addition of that single score, but moves on to 30. The last two deliveries left in their innings. The batter will go in to take the strike. Chittaranjan. Chittaranjan. Ball's going to be a delivery. One more dot delivery. So not a good sign here for the team United. The dot delivery. No more friends takes on SMC Pajir. The next match. Second match of the Super 6. Oh, lofted. That will going to be handsome. He's a tall man hitting the banner. I think there is a cash prize. There will be a cash prize of rupees in front of 100. It might be the best gift what you can give. That was a finishing touch given by Chittaranjan, because they are out of the runs in the last over. And that 6 will going to give a lot of oxygen for the bowlers when they're going to depend this total. So 37 will be the target for the team SVC Huha Kuakalu. And wait and see how SVC will go into chase these runs. And it's going to be a do or die match for both the teams. And I hope both the teams will go into battle hard for the victory to get the place in the next round. The time to change in voice as well as language. It's time to bring my friend Mr. Gopi in our commentary box. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So the target is 37 for SVC Hu Hakwakallu set by United Mudipu. और पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनाइटेड मुडिपु ने 36 रन बनाए और 37 रनों का लक्ष्य ने इस वक्त तय किया है. और जहां तक का सवाल है यहाँ पर इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त करने के लिए एसवीसी हु हाकुआकल्लू को इस वक्त बनाने हैं 37 रन. 37 द स्कोर. रिक्वायर्ड रन रेट इज एक्जैक्टली 9.25 रन पर ओवर. और अंपायर ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत हो. दोनों आरंभिक बल्लेबाज यति और चेतन मौजूद, जबकि नीतीश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए. और पारी की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त नीतीश. ये गेंद bowled him. Just first ball dismissal for the batsman. Just gone for a marty at the last moment. He lost his leg stump and the bowler got rid of the batsman in his very first delivery. Golden duck for him. Yeti departs and now it's not for one in the first over. This is an absolutely shackling start for SVC Hu Hakwakallu. Just using the victory target of 37 in 4 overs. They are not for one. The batsman departed is Yeti, bowled by Nitesh by a good delivery. The first wicket loss for SVC. It's not for one in the first over. Amma नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. और जहां तक का सवाल है इस वक्त अमर का, तो इस वक्त तो सामना करेंगे गेंदबाज नीतीश की गेंदों का. और नीतीश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. पहला पावर प्ले ओवर उनका इस वक्त प्रगति पर. तो इस वक्त नॉकआउट स्टेज का मैच जो कि खेला जाता है और नीतीश इस वक्त अमर के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई. गेंद पहुंची इस वक्त गली पर. फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, लो फुल टॉस. और इस बीच एक रन के साथ लेग बाय का इशारा. रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. एक रन एक विकेट के नुकसान पर. और गेंदबाज एसवीसी इस वक्त गेंदबाज नीतीश इस वक्त एसवीसी के बल्लेबाज चेतन के लिए इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. और फील्डिंग में जमावट चलते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर. और गेंदबाज नीतीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में. गेंद वहां पर फील्ड हो चुकी है और बेहतर फील्डिंग वहां पर, लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए. और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर. जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. निश्चित रूप से एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है एसवीसी हु हाकुआकल्लू के आरंभिक बल्लेबाजों को. इस बार पैरों पर गेंद टकराई. गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है शॉर्ट थर्ड मैन पर. 1 रन का इजाफा और बाई के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है. जस्ट अ सिंगल रन एडेड एंड द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 3 ऑन द बोर्ड for losing 1 wicket. The over number first in progress, the first match of the knockout stage and the 21st match of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now progressing here. और गेंदबाज नीतीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में. फील्डर मौजूद और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज नीतीश और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद बेहतर गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद को साइड पर उछालना चाहा. पैरों पर गेंद टकराई. लेग बाय का इशारा. जस्ट 1 run added and fantastic over came student from Nitesh, who conceded just 5 runs, 2 of them in the face of leg by. That means he conceded 3 from the bat. And the first over completed, and after first over chasing the victory target of 37, SVC Hu Hakwakallu made a slower start. In fact, they managed to score only 5 runs on the board after completion of first over for losing 1 wicket. 3 overs remaining, 32 runs required. That means 18 balls left, 32 runs required. Required run rate exactly 10.67 runs per hour. They have to score for victory, and still they got 9 wickets kept intact. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गौरीश. So first ball from Gaurish is now coming up. Vineet, the last match, man of the match award goes to Vineet. I request Mr. Vineet to please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. और
इस बीच गौरीश गेंदबाज यहाँ पर प्रारंभ करते हुए ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಂಸಿ ಪಜೀರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಟಾಸ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ गौरीश ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार इस बार बेहतर विकेट कीपिंग लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इनफैक्ट और विकेटों को इस वक्त सही करते हुए विकेट कीपर रखेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ ಹಿಂದಿನ पर रुक चुका ಪಂದ್ಯದ है ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರಿಗೂ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ವಿನೀತ್ ಅವರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So the next ball, Gaurish bowls right arm over the wicket this time. इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद इस वक्त फेंकी थी गेंदबाज गौरीश ने और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला. 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गौरीश फेंक चुके हैं. अब कुल मिलाकर 16 गेंदें बाकी और रन से चाहिए इस वक्त 32 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 16 डिलीवरीज और गेंदबाज गौरीश अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार था. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद. इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली. He's got a deflection on that at the last moment. Just a single he got और 1 रन के साथ बस स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 6 रनों पर 6 ऑन द बोर्ड. 1 विकेट लॉस्ट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. निश्चित रूप से जहां तक एक पार्टनरशिप साझेदारी का सवाल है इस वक्त एक पार्टनरशिप यानी साझेदारी की उन्हें इस वक्त सख्त ज़रूरत है और गौरीश अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार. 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में वो फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा एक बार फिर से डॉट गेंद. 4 फैंटास्टिक डिलीवरी बॉल बाय गौरीश इन दिस ओवर. सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रन पहले 4 गेंदों में वो प्रदान कर चुके हैं. 2 गेंदें इस ओवर में बाकी और 15 गेंदें कुल मिलाकर बाकी अब उनके पारी में और 14 गेंदें बाकी है कहना पड़ेगा और 31 रन चाहिए. 31 टू गेट फ्रॉम 14 डिलीवरीज और गौरीश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त. एक्स्ट्रा क्विक वन. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग ओवर टर्निंग आउट टू बी फ्रॉम गौरीश. 5 डॉट बॉल्स 5 फैंटास्टिक डिलीवरीज बॉल बाय गौरीश इन दिस ओवर और स्ट्रेट अवे अब ऐसा कहना पड़ेगा द प्रेशर ऑन द बैट्समैन. बल्लेबाज के ऊपर दबाव इस वक्त साफ बढ़ता हुआ क्योंकि 5 बेहतरीन गेंदें इस ओवर में गौरीश जो गेंदबाज हैं वो फेंक चुके. इस ओवर में अंतिम बार अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार गेंदबाज गौरीश. 13 गेंदें बाकी हैं. 31 रन और चाहिए विजय के लिए. 31 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग जस्ट 13 बॉल्स. गौरीश दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त. गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थोड़े से पीछे जरूर तैनात लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलता हुआ. फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम गौरीश who conceded just 2 runs in this over after 2 overs. Still the batsmen of SVC who Hakwakallu just setting for the right track. It's 7 on the board for 1 wicket down after completion of 2 overs. ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. SMC ಪಜೀರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. So let's straight away coming back to the equation. 37 minus 7 that means exactly 30 runs required in remaining 12 deliveries. The asking run rate is now gone up to exactly 15 runs for over. 30 रन 12 गेंदों में चाहिए विजय के लिए और यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए पुनीत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए दोपहर का वक्त बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है. जहाँ तक वक्त का सवाल है दोपहर के 2:10 यहाँ पर बच चुके हैं और सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक यहाँ पर करते हुए और इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट मुडीपू प्रीमियर लीग MPL सीजन 7 2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है श्री मुडिपिन्नार क्रिकेटर्स SMC मुडीपू ने.
10 प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है। तैनात अराउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थोड़े से स्क्वायर तैनात, गेंद को रोकने में सफल सीमा रेखा के अंदर, और इस बीच बल्लेबाज तीसरा रन लेना चाहते हैं, तीसरा रन ले चुके हैं। यहाँ पर कुछ हद तक मिस फील्ड के बाद गेंद को फील्ड करने के बाद दोबारा जब तक थ्रो करे फील्डर, गेंदबाज के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। 10 रन बन चुके हैं, 10 ऑन द बोर्ड, 27 टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स। नमो फ्रेंड्स आर वॉन द टॉस इन द नेक्स्ट मैच। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज पुनीत गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप बैक स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात। और इस बीच गेंदबाज यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। He hit that one this time, but not quite get that one right from the middle of the bat at the last moment. और गेंद इस वक्त हवे में डोलती हुई सीधे पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। अमर द मैन dismissed, second wicket lost. SVC who Hakuakallu are now looking in trouble. It's 10 for 2. प्रमोद का आगमन होता हुआ नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से, और निश्चित रूप से छक्के और चौकों का जहां तक सवाल है, इस वक्त कमबैक करने के लिए एसवीसी के बल्लेबाजों को चौके और छक्कों की सख्त ज़रूरत है। और गेंदबाज पुनीत अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट नए बल्लेबाज प्रमोद, जो कि इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ के गेंदबाज पुनीत की गेंदों का, और पुनीत ये गेंद इस वक्त गेंद को उछाल दिया लॉन्ग ऑन पर, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक और विकेट, सेकंड कंसेक्यूटिव विकेट फॉर द बॉलर पुनीत। इस बार गेंद को उछाला था, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर को प्राप्त करते हुए, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 10 for 3 नाउ। एसवीसी हु हाकुआकल्लू आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। Just 9 balls left in their innings. 27 more runs now they have to score for victory. They have to get exactly 3 runs per ball at the situation. और हर गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता नजर आता हुआ एसवीसी के बल्लेबाजों के ऊपर। 3 balls left in this over. और जहां तक का सवाल है नए बल्लेबाज का, न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। हरीश, और हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज पुनीत तैयार। हैट्रिक का सुनहरा मौका यहाँ पर गेंदबाज पुनीत के लिए, और देखना ये है कि वो अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। So the hat-trick ball comes from Puneet to the new man Harish. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। This time stuck to his leg, gone through for a quick single and get it comfortably in the face of leg by. और एक रन लेग बाय के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 11 रनों पर। 11 on the board for losing 3 wicket. Runs are coming still in singles now for the batsmen of SVC. They badly require a couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match. 8 balls left and 26 runs required. The asking run rate is now creeping up for them at this situation. और पुनीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार ड्राइव किया गेंद को, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में बेहतर गेंदबाजी। फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम पुनीत। और एक और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुका है। 7 balls left, 26 runs required. और इस ओवर में अंतिम बार पुनीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हरीश के लिए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन का इजाफा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट and a single to end the over. One more good over in United Cricketers' point of view, Kingston, and 12 on the board. 3 overs completed, 25 to get from last over. 25 to get from last 6 deliveries. और अब ऐसा कहना पड़ेगा एसवीसी को सिर्फ छक्के या चौके ही अब सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं।
लिखित गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ करते हुए और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ एसवीसी की पारी में। और लिखित इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार चेतन। और पहली गेंद लेकर तैयार, 6 गेंदों में 25 रनों की दरकार, कठिन सा लक्ष्य लेकिन नामुमकिन नहीं। और इस बीच पहली गेंद लेकर लिखित तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, गेंद को खेला भी जरूर लेकिन मिड ऑन फील्डर के हाथों में सिर्फ 1 रन मिलेगा। 13 द स्कोर, नॉट 24 टू गेट इन रिमेनिंग 5 डिलीवरीज, 5 गेंदें बाकी और 24 रन और चाहिए विजय के लिए। और इस बीच लिखित अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार हरीश सामना करने के लिए तैयार लिखित की गेंदों का। और ये गेंद इस बार लिखित हरीश के लिए, गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर, मिसफील्ड इस वक्त एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। एंड नाउ 23 to get from remaining 4 deliveries. The last chance in front of the batsmen of SVC. Almost 4 sixes required in the last 4 deliveries. 23 to get from last 4 deliveries. लिखित इस ओवर में तीसरी बार दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, यह गेंद उछाला इस वक्त, गेंद लॉन्ग ऑन पर नहीं, गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया गया है आफ्टर फर्स्ट बाउंड सीमा रेखा के अंदर। जस्ट सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नाउ 22 टू गेट फ्रॉम 3 बॉल्स। इस बार चूके विकेट कीपर चूके और 1 रन इस बीच पूर्ण करते हैं, लेकिन ये 1 रन कुछ ज़्यादा उनके लिए मायने यहाँ पर नहीं रखता है। अब 2 गेंदें बाकी हैं और 21 रन चाहिए। 21 रन टू गेट फ्रॉम 2 बॉल्स, एब्सोल्युटली impossible task if the bowler cannot bowl no ball or voids in this remaining 2 deliveries. Is beat better gain the dot gain, then now just a last ball left. 21 run required and this is an absolutely impossible task in front of the batsman. Or Likhit, that's it, 20 runs comprehensive victory, 20 runs, a big margin victory for United Mudipu against SVC Huhakuakallu, and with that 20 runs big margin victory, United cricketers are now through to the next round of this competition. So the first match in the knockout stage has been came to an end, and United Mudipu defeated SVC Huhakuakallu by a big margin of 20 runs. ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜ್ಜಿರಿ ಗುತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜ್ಜಿರಿ ಗುತ್ತು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Thank you. The man of the match of this match award goes to Gaurish, who batted brilliantly, scored 15 runs including 2 massive sixes, and he bowled very economically, conceded just 2 runs in his 1 over, and because of this all-rounding performance, Gaurish of United Mudipu adjudged man of the match. I request Gaurish to please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. So the next match, Namo Friends will take over SMC Pajir in the second match of the knockout stage, and we'll be back right after a short break with my friend Satish in English when the next match will going to commence. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
Thank you very much, Gopi, and good afternoon, cricket lovers. And we are into the one more big match. Number Friends takes on SMC Pajir. After winning the toss, Number Friends they elected to field first, so that the opening batters are in the middle. Rachan, the striker, the first ball starts by Adarsh, is a very good starter, and the previous match also he produced a wonderful first over for the team. And again, he starts with a dot delivery in this big match, do or die match, just like a quarter final. United Mudipu, they won the match. They are into the next round, almost like, they are qualified for the semi-final. And there is a second ball, nicely reverse played by the batter. One more single, and Rachan he picked up a first run from his bat, and that brings the danger man Vinith into strike. Now he's a big striker of the ball. The previous match, when the must-win match also, he played an excellent knock for his team. Scored a 25-8 quick 5 runs from his bat. Now he is wanted to continue that performance in this match also. His jersey number is 27, but he scored a 28 in the previous match. And here is a second one. Full toss, but mistimed pull shot and straight to the hands of Rabada. Down at deep mid-wicket region, making no mistake at all. Huge wicket as far as the contest is concerned. This is a big match, and team Number Friends definitely will going to enjoy this wicket. This is really going to be a prize wicket, because this is a punishable delivery. It's not like it's going to be a wicket-taking delivery. In the afternoon session, bowling a full toss and getting the wicket of Vinith means definitely the batter dealing with some, bowler is dealing with some luck. Adarsh once again is a lucky man, as he got a wicket for that full toss delivery. As Vinith pulls the ball, but not coming from the sweet part of the bat. And almost once it looks like ball is going to travel over the head of that mid-wicket fielder, but the fielder in the deep mid-wicket, Rabada, is making no mistake at all in the deep. You know exactly, this is a huge fish in the net for them to dismissing the danger batter Vinith early into that in this do or die match. So hero of the previous match is out for 0. Again played it down, gently down to mid-off. Misfield there by the fielder. They wanted to grab this opportunity. The little margin for error when when you're playing big matches like this, they need to be very, very accurate in the fielding. And the fielder in the mid-off is misjudging that ball while trying to field the ball. And unforced error by the fielder at mid-off. One more single, with the addition of that single, scored Namuzan to 3. In the over number first is in progress. The batter will going to take the strike, Rachan. So now we are seeing that perfect weather condition what we are witnessed in the afternoon in the previous day, yesterday. The bright, sunny as well as a windy afternoon. Some strong wind is passing in the ground now. Outside the line of off time. Lovely delivery there from Adarsh. Watching the batter till the last moment. Seeing the movement of the batter very cleverly. You know exactly the batter just moving towards outside the line of leg stump. Try to make a little bit room to play the shot. He bowled again away from the right-hander batter. And defeats him with a flighted delivery and quicker one from Adarsh. He's bowling a final time in this over. Again played it nicely down to deep long off. Protection there in the deep. Fumble. They wanted to come back for the second. This is not a good fielding by the fielder. Grabbing this opportunity and picked up a couple of runs here. The first over which comes in and tidy over ball by Adarsh. After completion of first over, he's got wicket as well by conceding 5 runs in the first over. So SMC Pajir, they got a slow start. Quite understandable. The man who back in the pavilion who did a lot of damage in the previous match, Vinith back in the pavilion in that first over. The power play over belongs to the team Number Friends. Fantastic tournament is in progress after that
successful day number 1 of Mudipu Premier League 2025 season 7, which is proudly presented by Sri Mudipinnar cricketers. Fantastic arrangement, well organized cricket tournament with very good quality live coverage of this cricket tournament from one of the most popular YouTube channel, King Sports. Is making a lot of remarkable achievement in this field, with giving some good standard in that live coverage, the quality live coverage. And this is a one good big tournament, the Mudipu Premier League, the very prestigious cricket tournament, will going to make history here in Panchayat Cricket Ground. Wonderfully organized. We are in the very important stage of this cricket tournament, as the teams are battling hard for the place in the next round of the prestigious MPL season 7. Second over, Dhanraj brought into attack and welcome with the huge one. This is one of the biggest sixer, I want to tell you, with the direction of the wind. Little margin for everyone bowling from the water tank, and Dhananjay bowls that juicy delivery for the batter. Rachan hit that one pretty well right from the middle of the bat towards the mid wicket for a 6, and with that 6 covered now moves on to 11 on the board. Played it into the mid wicket. One more single. The long on fielder coming across towards a cow corner to field the ball. Rabada. One more single with the addition of that single scope, and moves on to 12. So after this match, we are going into the big match. The Super Semi will be played between the two toppers of the points table. MFC Strikers takes on SDC Ayodhya Nagar. That will go into commence in after this match. The winner will go in to get the place in the mega final. The loser will go in to play winner of this match, as well as United Mudipinnar. The one more match will go into commence. And here is again the ball, which is going to be a wide, called by umpire. The bowler is under tremendous pressure. It's all happening when the batter hit you for a 6. The level of confidence absolutely decreasing. So very next ball, it's a wide outside the line. So with that wide scoreboard, 14 on the board. Again played it just right off the bowler. Just a single, and with that single scored, moves on to 15 on the board for the loss of 1 wicket. The partnership is slowly building up. Again, Rachan again is in aggressive frame of mind. They wanted to get one more big shot in this over, but this time he's not really getting that much of timing in that stroke. Just a single with that addition of that single scope, and moves on to 16 on the board for the loss of 1 wicket. Dhananjay bowls, lovely delivery indeed. This time almost targeting the midland off stump of the batter, and Sachin couldn't manage to make any contact with the bat, and a leg by call by umpire. And last time in this over, one more addition. 17 on the board. This time he lofted it. Rachan is on fire today. Sachin lit correction. He's lofted that one right from the middle of the bat. After Rachan has got a 6, now he's joining the party. Sachin hit that one pretty well. And after completion of over number 2, total score is 24 on the board. Going exactly 12 runs per over. Correction in the scoreboard, it's a 23. After completion of over number 2, it's a 23 for the loss of 1 wicket. The 2 massive 6s coming from the previous over. Very expensive over ball by Dhanraj. After that, a very good first over by Adarsh. Conceded 5 runs, now 18 runs coming from this over. That is only because of 2-6 which is came from that over. Both the batters are hitting 1-6 respectively, Rachan as well as Sachin. Sampath brought into attack.
winner of this match will go into play against United Mudipinnar. That will going to be almost like a second semi-final. This time he's gone. He's out of the crease. Very good presence of mind by the wicket keeper. He just wanted to go for the switch hit. While trying that switch hit, he's not really realizing that he is out of the crease. But one is the absence of mind of the batter, but another which is the presence of mind of wicket keeper. And he's just realizing that the batter is out of the crease. Uprooted the stumps and got a wicket of Rachan back in the pavilion. The huge wicket. Bharat, the new batter in the wicket number 2, which is back in the pavilion. It's almost the very good competition is going on. So Bharat is a new batter in. They wanted to go for the switch hit. This time it looks like no contact with the bat. No signal coming from umpire. There is a contact with the bat. One more single. With the addition of the single, Skobana moves on to 24 on the board. Umpire given the third umpire for that wide, whether it is going to be wide. Umpire decision, field umpire decision is wide. So umpire, third umpire will go into watch. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೆ ಕುರ್ನಾಡು ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ವಾ ಕುಯತ್ತಬೈಲು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ MPL Season 7 and warm welcome by Sri Mudipinnar cricketers. It's a legal ball called by umpire, third umpire. It's a fair delivery. It's a fair delivery. And that's called from the third umpire. Sampat balls, lovely shot, no one there in the deep, no need to run for that, lovely placement but not a ideal delivery, and outside the line of leg stump, and the batter is absolutely a subtle batsman. Sachin in the middle, no way to miss the opportunity to swing his bat to the line of the ball. He's not really having an ample pace in the bowling, and he didn't got adequate field for that, got a punishment. They're breaking the shackles here. One more boundary that takes the total score into 28 now for the loss of 2 wickets. The very good competition is on in that very hot condition and sunny afternoon. The bowler need to survive. Sampat. Oh, this time little bit extra bounce defeats the bat of Sachin. Just he wanted to go for that switch it. Fails to make a contact. Wicketkeeper behind the stump uprooted the stumps, but will not going to get the result for that. The Sampath really survived from that. Again the delivery, which is if a batter will going to play that orthodox cricketing stroke, can be punishable. Coming down the track using his feet, played it down to deep long on region for a walkable single. With the addition of that single score, but now moves on to 29
for the loss of 2 wicket. That brings Bharat, the batter, into strike now. Again, Bharat wanted to go for switch it, deflected from his leg. One more leg bite. So 30 on the board, over number 3, which is comes to an end after completion of over number 3. The total score of team SMC Pajir 30. They're going exactly 10 runs per over. And the projected score will be a 40 in the same run rate. If they manage to get another 10 runs in the last over, then the score will be a 40. It's considered to be a good score to depend in this knockout stage match. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೆ ಕುರ್ನಾಡು ಇವರಿಗೆ ಗೌರೀಶ್ ಮುಡಿಪು ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಕೈ ಮಾಲಕರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಡಿಪು ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Thank you. And one more wide delivery outside the line of leg stump. This is the one the problem for Nikhil, as he bowled again the wide, because the last match is considered a lot of runs from his bowling. 27 runs which is conceded with the 7 wides, one of the biggest over as far as MPL is concerned. This time full toss delivery and defeats the infield. This is not a good fielding there by the fielder at fine leg. The ball is running down to define leg boundary. Just inside the boundary line, they managed to... Oh, mix up. Chance of run out. Appeal for run out. They miss the ball. And looks like again. Oh, my goodness. The appeal for run out. Now, it's going to be a very interesting umpire asking for the third umpire from the non-strikers end for the run out. And Nikhil Rabada is very close to the stump. I don't know why you are trying for throwing the ball. He can hit the stumps by holding the ball in his hand, but he just tried to hit the stumps in the non-strikers end. That might be a really disaster, but if it is a direct hit, it might be a chance of run out. But wait and see. The number of friends really, they are not up to the mark in the field. Almost, I think they're run 4. They run 4. They appeal for the run out for the third run in the non-strikers end. If it is a not out, then it will be a 4 runs. Appeal for the run out for the third run, non-strikers end. Appeal for the run out in the non-strikers end. So out is a call from the non-strikers end, and batsman is out of the crease. So that means only 2 runs will be given. The batter is out in the non-strikers end, and because Nikhil Rabada, he hits the stumps in the non-strikers end, that time batter is out of the crease. The Bharat will be the batter is out.
So Bharat, the batter, will be the out batsman, and Nikhil Rabada is just survived from some firework from the fielders. He's got a direct hit. That's why he survived. Otherwise, everyone will going to shout at him, why you are trying to hit the stumps. He's very close to the stumps. But so altogether 3 balls bowled in this over. 2 balls. One is a wide. The first run is a single. Second one is a wide. So altogether it's a level of competition we can see there between these two teams to get the place in the Super Semi. 4 balls remaining in this over. 4 balls remaining in this over. Round the wicket. Balls. Again one more wide. Second wide of this over. With the addition of that wide scoreboard Namuzan to 36 on the board. Huge runs on the board. Again outside the line of off time. Going to be one more wide. This is a big problem for Nikhil Rabada so far in this tournament. He fails to get this concentration over the line. Balled him. Cleaned him up. The last thing he wanted to do here is to get the ball into the into the middle stump. And at last, long breath taken there by Nikhil Rabada as he got a wicket of the danger man Sachin, the back in the pavilion. After scoring some important runs from his bat, he's back in the pavilion. So they exceeds the time limits too early. The over number 4 is in progress. They have to bring one fielder inside the ring. Sachin, after contributing 15 runs from the bat, he came into pavilion. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So here is again this time he lofted, handsome looking drive, and he got a huge 6 down to deep long off. So again the Nikhil Rabada has been punished in this match as well. So not ideal delivery to ball. Even the new batter coming into the middle, but he bowled a short pitch delivery for Varun, and he played it down to deep long off for a 6. So Manoj ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲನ ಹಿಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Second, they made it quite easily in that. They were looking for the third as well. Everything is going wrong here for team Nama Friends cricketers. Again, the Nikhil Rabada are becoming expensive. Still there, one more deliveries left. 46, which is the total score. Already 16 runs conceded in this over of Rabada. Again, lovely delivery, and chance of run out is gone. He's out of the crease. That's it. The team MFC, correction, SMC Fajir, they are finished with the total score of 46 in the stipulated 4 overs, and they set a target of 47 to qualify for the Super Semi. And now wait and see how Nama Friends will going to get that 47 in the stipulated 4 overs. It's going to be a very interesting match here. And a lot of runs which is conceded. The expensive over, once again the 16 from the last over, 18 in the second over. That 2 over really making a big impact. But Nama Friends also got some good players in the side. They got some batting department in the side, especially the Chetan, the big man in the side. I have to do the work with some good players in the side. If they manage to get a good start here, this will be a very good match again in this knockout stage match. And wait and see how well the team will go into battle for the victory for the next round of this prestigious MPL 2025 Season 7. The time to change in commentary box. It's over to Gopi. Take over the microphone here in Hindi language. Thank you.
So next match will be played between two table toppers team, MFC Strikers versus STC Ayodhya Nagar, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for the toss procedure. STC Ayodhya Nagar after won the toss in the next match against MFC Strikers. धन्यवाद सतीश. Right, it's the target is 47 for Namo Friends, set by SMC Pajir. And their innings now going to start. The first ball of their innings is now coming up. दोनों आरंभिक बल्लेबाज संपत और चेतन इस वक्त मौजूद, जबकि गेंदबाजी शुरू करते हुए कार्तिक और पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता है. और जहाँ तक 47 रनों के लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है निर्धारित 4 ओवर में, तो इस वक्त नमो फ्रेंड्स को चाहिए एक बेहतरीन शुरुआत. और देखना यह है कि दोनों आरंभिक बल्लेबाज संपत और चेतन क्या वो बेहतरीन शुरुआत अपने टीम के लिए दे पाते हैं या नहीं. गेंदबाजी कार्तिक के हाथों में गेंद और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार कार्तिक का दाहिने हाथ ओवर द विकेट. पहली गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला. इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. ऐसा कहना पड़ेगा. Just rocked on the back foot and punched it away through the offside. A square of the wicket at deep extra cover and he finds the gap as well. और इस चौके के साथ स्कोर रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. 4 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है. पहली गेंद पर इस वक्त संपत गेंद को डिस्पैच करने में सफल, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर. अगली गेंद बीमर के तौर पर गेंद वाइड का इशारा, और वाइट के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर. 5 ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले गो. और गेंदबाज इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. कार्तिक गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद उछाला इस वक्त फील्ड क्लियर करते हुए, लेकिन फील्डर मौजूद. डीप लॉन्ग ऑफ पर एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर. पहले बल्लेबाज 6 रनों पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एसएमसी पजीर ने 46 रनों का स्पर्धात्मक का स्कोर यहाँ पर खड़ा किया है. 47 रनों का स्पर्धात्मक लक्ष्य वो इस वक्त उन्होंने दिया है नमो फ्रेंड्स के लिए. और देखना है कि 47 रनों के स्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव लक्ष्य तक क्या नमो फ्रेंड्स के बल्लेबाज पहुंच पाते हैं या नहीं. नए बल्लेबाज चेतन दूसरे आरंभिक बल्लेबाज सामना इस वक्त करते हुए. ये गेंद इस बार फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, मिड ऑफ पर रन्स नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है अब 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 6 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और एक बार फिर से गेंदबाज कार्तिक अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. नॉकआउट दौर का दूसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ और गेंदबाज इस बीच कार्तिक का दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, 2 बाउंस इनटू द फेंस. This is an absolutely perfect struck came to the bat of Chetan. गेंद को इस वक्त फील्ड क्लियर करते हुए उछाला था लंग ऑफ और लंग ऑन के दरमियान खाली क्षेत्र चुनते हुए, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. 10 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. 4 डिलीवरीज बोल्ड इन दिस ओवर, 2 डिलीवरीज लेफ्ट. और
जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। 2 balls लेफ्ट इन दिस ओवर और चेतन सामना करने के लिए तैयार, खासकर मजबूत शुरुआत की सख्त ज़रूरत है और आरंभिक बल्लेबाज संपत और चेतन इस बात से वाकिफ, और इस बीच अपने ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज कार्तिक का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन के लिए। और जहां तक चेतन का सवाल है, 2 चौका इस ओवर में अब तक वो झड़ चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस, swings it away, this time not connected that one properly in fact, और 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। Not quite get that one right from the middle of the bat at the last moment, और एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता है। 15 runs came from the first over and this is an absolutely terrific start for Amma friends, chasing the huge target of 47 in 4 overs. They are 15 without loss, still 32 to get from remaining 18 deliveries, 18 गेंदें बाकी और 32 रन और चाहिए विजय के लिए। और निस्संदेह 3 ओवर में इसी तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी नमो फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें 47 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचना है। तो और जहां तक सवाल है SMC पजीर के गेंदबाजों का, तो बचे हुए 3 ओवर में उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी अगर 47 रनों के लक्ष्य के अंदर रोक कर रखना है यहाँ पर नमो फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को। तो स्पर्धात्मक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, भरत गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। चेतन सामना करने के लिए तैयार, पहले ओवर के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। हवा का रुख काफी तेज, मैदान की दाईं से बाईं और हवा इस वक्त गुजरती हुई, और ये हवा जो गुजर रही है, खिलाड़ी और दर्शक जो मैदान पर मौजूद है, दोनों को इस भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत दिलाते हुए। और इस बीच गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार चेतन के लिए। गेंद को खेला इस वक्त, गेंद जाती हुई शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर, 16 ऑन द बोर्ड। ये टू लूज एन विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इन फैक्ट काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। भरत इस वक्त संपत के लिए, ये गेंद संपत ने गेंद को उछाला है और गेंद इस वक्त लंगोन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। So this is an outstanding struck, just stand and delivered and just got that one right from the middle of the bat। और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त संपत के बल्ले से लगता हुआ और जरूरतमंद छक्का इस वक्त लग चुका है संपत के बल्ले से, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर, 22 ऑन द बोर्ड। फाइन प्रोग्रेसिंग हियर फॉर नमो फ्रेंड्स। और गेंदबाज भरत अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार फिर से गेंद को उछाला लेकिन फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ फॉर नॉट मोर देन फंबल देयर, दिस इज एन स्लॉपी एंड इट्स क्रॉस ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। जहां पर सिर्फ 1 रन मिलना चाहिए था, वहां पर चौका प्रदान करते हुए यहां पर फील्डर हड़बड़ाहट में गेंद को फील्ड करने के हड़बड़ाहट में गेंद से अपनी नजरें उन्होंने हटा ली थी और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई धीमी गति से सीमा रेखा के पार कर गई लॉन्ग ऑफ पर चौके के लिए। 26 ऑन द बोर्ड, नाउ 15 balls लेफ्ट एंड 21 रन्स रिक्वायर्ड। तो इस वक्त गेंद को उछाला है, गेंद हवा में, जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जहां तक रनों का सवाल है, रन्स मिलेंगे 1। अली इलेक्ट्रिशियन ಎಲ್ಲಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು। तो 1 रन का इजाफा, 27 ऑन द बोर्ड, 20 runs required in remaining 14 balls. Still the match is now evenly balanced। और गेंदबाज भरत चेतन के लिए, यह गेंद उछाला इस वक्त चेतन ने, दिस इज गॉन many miles, one more biggie, this time came from the bat of चेतन। This is an outstanding struck,
खड़े खड़े ही गेंद को इस वक्त डिस्पैच कर दिया और स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 33 रनों पर एंड नाउ द थिंग्स गेटिंग मच इजियर नाउ फॉर द बैटिंग साइड नो मोर फ्रेंड्स 14 नीडेड इन रिमेनिंग 13 balls 13 balls Chetan and 6 number 3 came in this over. So 2 overs completed and with this first 2 overs Namo friends are looking in a commanding situation. 39 without loss after 2 overs, just 8 to get for victory in remaining 2 overs and now the equation seems to be a much easier for them. What a fantastic batting display came from Chetan and Sampath in the first 2 overs. They added 39 runs in the first 2 overs. और लक्ष्य इस वक्त आसान ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಒಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಪ್ರಸಾದ್ ಪದ್ವಾ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತಬೇಲ್ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಆಯೋಜಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. धन्यवाद. 8 runs to get from 12 balls और गेंदबाज किशोर इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाज ही एसएमसी को इस मैच में वापस ला सकती है और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद को खेला इस वक्त मिड विकेट पर गेंद पहुंची. जस्ट अ सिंगल ही गॉट 40 ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. और इस बीच गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिना हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद उछालना चाह नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली. इन फैक्ट द बॉल रनिंग डाउन टू अ डीप मिड विकेट. इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. 41. नो नीड टू पैनिक एट ऑल एट दिस सिचुएशन. कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है. 10 गेंदें बाकी है. रन से चाहिए सिर्फ 6. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाह. रन इस बीच नहीं मिलेगा और इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं. निश्चित रूप से एक बेहतरीन मजबूत आरंभिक शुरुआत यहां पर दे चुके हैं संपत और चेतन. फलस्वरूप उनकी टीम इस वक्त अपनी मंजिल की ओर सही मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए और 9 गेंदें बाकी 6 रन चाहिए. इस बार अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था अंतिम क्षण में. गेंद के उछाल को पहचानते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया मिड ऑफ पर और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं. 42 ऑन द बोर्ड. येट टू लूज एनी विकेट. 5 रन टू गेट फ्रॉम 8 balls और गेंदबाज किशोर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार चेतन के लिए. यह गेंद चेतन गेंद को खेला मिड डाउन पर. बेहतर फील्डिंग इस वक्त मिड डाउन पर. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे. बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका किशोर का जिसमें सिर्फ 3 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं. 7 balls एंड 5 रन टू गेट और चेतन इस ओवर में अंतिम बार सामना करते हुए किशोर की गेंदों का. दाहिने हाथ ओवर द विकेट किशोर. यह गेंद उछालना चाहा फिर से मिड ऑफ पर. रनआउट का खतरा. ओ निशाना चूका. आसान सा रनआउट वहां पर था लेकिन निशाना दागा इस वक्त. फील्डर ने उनका निशाना चूका और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. थर्ड ओवर केम टू एंड 43 ऑन द बोर्ड. नाउ जस्ट 4 रन टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर. दैट मींस इन रिमेनिंग 6 डिलीवरीज और एक बेहतर ओवर कहना पड़ेगा किशोर का समाप्त हो चुका है जिसमें 4 रन वो प्रदान कर चुके हैं और अब 4 रन चाहिए. 6 गेंदें बाकी. अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಚೇತನ್ ಅವರು ಪಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸಂಪತ್ ಬಜಲಾಡಿ ಇವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Thank you very much, Gopi. What an outstanding victory for the Nammo friends and the opening batters. Did a great job. The Sampath and Chetan, the opening batters, the finishing the things by taking their team into the next round. This is going to be a big match and
battle for the place for the mega final for the tabletop toppers of the A and B group. And here is the first delivery of this super semi. STC won the toss and elected to field first. And the opening batters of MFC Strikers are on the middle. And first ball just wanted to go for the reverse sweep and deflected from the leg. So that leg by call by umpire. First run in the form of extra for the MFC Strikers. So one without loss of any wicket. The two top teams and they played a fantastic game of cricket in this league stage matches. After their very good performance, they deserve the place in the top in the points table. Now both the teams doesn't want to lose the opportunity here to get the place in the mega final if they're going to win this match. And they will going to get the place in the semi-final, in the final in fact. This time played it straight to the fielder. Chance of run out which is created. But mid-on fielder in fact, Ramesh, the experienced campaigner, just a little bit fumble and grabbing the opportunity. Both the batters are complete the singles. So with that single, Shiva and Shushant to the hands of the bowler. I think Guru Dikshit, the fielder, may not be correction. Dikshit, the fielder, fields the ball and returns the ball to the hands of Vikas, and Vikas just complete the formalities of making that run out. Unfortunately, the wicket number first pitch is back in the pavilion. It's 2 for loss of 1 wicket. There's one more experienced campaigner, Sujir, coming in the position where his team is required his experience here. He's a good striker of the ball, got a very good tournament from the bat and ball. Vikas so far he's got a very good first over. 3 balls, 2 runs, 1 run out. 2 for 1. Shiva back in the pavilion. Now all up to this man Shushant, one who played an excellent knock in the previous match. Got some runs from the bat. Bowled him, cleaned him up. This is the peach of the delivery coming from the hands of Vikas. So 2 dangerous opening batters of MFC Strikers are back in the pavilion. And Vikas produced a dream start for his team. So 2 big wickets are back in the pavilion. It's been unbelievable bowling performance here from Vikas, as he got a beautiful incoming delivery. Always the left-arm bowler is very effective because they're bowling the leg spin deliveries, but all that is coming into the batter. For the right-hander batters, coming into the batter and beaten by the flight and turn. Excellent stuff there from experience Vikas. Now trouble time for MFC Strikers. They lost both the opening batters back in the pavilion. New batter Akil came into middle, lofted into that long on area. 1 bounce collected by the fielder. They're turning for the second. Looks like it's going to be a 1 more opportunity. Looks like Sujir is struggling to reach his home, even though umpire asked for the third umpire, but might be the Sujir looks like not comfortable. But all up to the third umpire will going to decide whether the batter is sort of crease or not. But it's always going to be a risky run from this to batter to get that couple of runs. Sujir might be try to put the bat into the crease instead of try to drag his bat into the crease. Always very important when you're running between the wicket is concerned. The dragging the bat is very important, but if you try to put the bat inside the crease is always the trouble. But wait for the umpire decision whether the batter is safe or not. All we can see that this is a big match between 2 big teams. Those who got a toppers in the points table. And he's a shot of crease. What I'm talking about is gone. And the bat is in there. What I'm talking about, the same thing I'm not asking. The problem for Sujir is not really try to drag his bat. They need to drag the bat. If you try to put the bat, that will not going to save your wicket from the run out. How many times in cricket they are missing that technique of saving your wicket. Why you are not dragging your bat, why you are trying to put your bat into the crease.
The bat is in the air. So 3 wickets, big wickets back in the pavilion of MFC Strikers. Again, swings and miss. Wicketkeeper also missed it. No signal. Of course, it's a leg by call by umpire. With the addition of that one more extra. Over number first pitch is completed. Outstanding over there from Vikas. 4 runs we conceded. And 3 wickets back in the pavilion. 2 run-outs and 1 wicket for Vikas. Great start for the team which is came into the top in the points table. SDC Ayodhya Nagar are looking in top in the first over, but it's a 4 overs game. Still that opportunity for the team MFC Strikers to back in the game. They needed some good overs in the form of runs. At the same time, SDC, after they got a strong grip over this match, they wanted to continue that grip in the next over as well. Suraj brought into attack, that icon player for the side, the very good all-rounder. Suraj is a left-hand batter and a right-hand bowler. The rare talents we can see that in the international cricket also. The bowler who is bowling the right hand, he can they bat in the left hand. The Suraj brought into attack to ball the second over. Right arm over the wicket balls. Played it nicely down to deep long on. Both the batters have to rebuild the innings here. After losing 3 wickets, they are going for the one more extra run. This is a very good presence of mind by both the batters, grabbing this opportunity, converting that single into 2 now. With that a couple of runs, Kobarna moves on to 6 on the board. Akil got a couple of runs. This time Akil hoisted it over and he got the distance. Ramesh, the fielder at deep long on, he's tried to save the 6, but he's not tall enough, isn't it? I am not saying that a tall fielder in the side. They always need to keep one fielder, especially in the long on and long off. They need to have the tall fielder. At least they wanted to save the 6. Ramesh is not really tall enough to get that one into that playing area, and that might be a welcome 6 and for the team MFC Strikers. That condition where the things are really skipping out of the hands, and Akil is just breaking the shackles in the right time. And now little bit promotion given for Ramesh from long off to mid wicket. Because of that, not a good attempt, and that's long off region where trying to save the 6. Lovely comeback, excellent comeback, excitement behind the wicket, but not a confident. That ball is missing the bat and the wicket as well. It's a good comeback here by the bowler after that 6, Suraj. The scoreboard is exactly 12 on the board. The battle is on. Again across the line, played it down to deep long on region. Oh, this is going to be a sloppy, but even better fielding by the fielder. Excellent back up by the fielder. Looks like when the fielder is missed the ball at wide-ish long on, it looks like it's going to be a boundary, but a very good backup by Yatiraj. Is a very good fielder. One who taken out one of the best catch of the day, number 2nd in the mid wicket in the previous match. He is a very good fielder in the deep. Again, wanted to go for the across the line. Akil this time missed it completely. No run scored. Scoreboard remains on 14 for the loss of 2 wickets. Fantastic competition is on between 2 top teams to get the place in the mega final. Again, deflected from the leg by call by umpire. With that addition of leg by, Scoreboard moves on to 15 on the board. Over number 2 which is completed. 11 runs coming from this over of Suraj. 4 in the first, 11 in the second. Akil, the man who scored 6 in that over. After completion of over number 2, it's 15. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. So 2 overs remaining. 12 balls remaining excluding wides and no balls. Wait and see how many runs they will going to score here. The 2 toppers of the points table.
STC, they are the toppers in the Group B. And even the team MFC Strikers also, they are toppers in Group A. And this is a battle for the place in the mega final. So third over, the bowler brought into attack from the road end. Praveen. Akhil again wanted to drag the ball from outside the line of off stump. If you see that, Akhil is every time he wanted to go for across the line. "16" on the board. Praveen. Oh, lovely delivery, beautifully ball, dot delivery. The batter Gautam with the uncertain, with the beautiful leg cutter from the bowler brought into attack again. Praveen bowled some strong line, which is required for the team badly in the situation like this for STC. So far, it's been equal battle is on between the two very good teams. 17 on the board. Praveen balls. Akhil went for reverse sweep, missed it completely. One more dot delivery. This turning out to be a good over is in progress for Praveen. From Praveen for the team STC. Ayodhya Nagar again played it down to deep long on region. Ramesh, the fielder in the deep long on, fields the ball, returns the ball. With the single, the bowler will not go into bother about the single so far in this over. Tidy line and length. Akhil, the man, has got a 6. Again, played it back to bowler, not for run. Excellent over, which is comes in here from Praveen. Very tidy over indeed. After completion of over number 3, the scoreboard is 18 on the board. Just 3 runs coming from this over. What a great over. The point of view of team STC. Ayodhya Nagar. Now last over remaining in the innings of MFC Strikers. And we are seeing that the tense dugout of MFC Strikers, because this is the big match. They doesn't want to take another chance here. Both the teams wanted to get into the final in the first attempt, because always when you are looking for the comfortable zone, always asking for trouble. Guru Dikshit brought into attack to bowl this last and final over of the innings of MFC Strikers. Full toss, swings it away, and fielder is there in the deep, and a lovely stop. Excellent stop, even though batter is not connected to it one properly, but with the direction of the wind, his ball is just going and going. But excellent stop by the fielder in the deep long on again. Wideish long on. Stopping certain 6 for the team. The couple of runs. Akhil again without coming to the line of the delivery, wanted to go for the on drive, missed it completely. Good comeback here by the bowler. 20 on the board. The last 5 balls remaining. Again swings and miss because of that wide delivery. He missed the ball completely. One more extra. 21 for the loss of 3 wicket. This time lofted down to deep long off. They wanted to come for a second. Oh, this is not a good thinking by the fielder. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಒಗೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಮಾನ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಜೋಗಿ ಬದಿಯಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2007ನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಮಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಜೋಗಿ ಬದಿಯಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you. One more dotted delivery. Warm welcome for all the chief guests, Kiran Shetty and Satish Jogi. This time lofted and straight to the hands of deep long on. So one more wicket is back in the pavilion of MFC Strikers are looking in trouble. They are absolutely deep in trouble because they got only 23 on the board and last 2 deliveries left in their innings. Akhil's innings which is comes to an end.
This is the final day of this prestigious cricket tournament, MPL, Mudipu Premier League 2025 Season 7, which is proudly presented by Shri Mudipinnar Cricketers, Mangalore. So last delivery of their innings. Correction. Guru Dikshit going to ball the last delivery of the last over, and it's going to be only a single in the form of a leg by. That's it. MFC Strikers, they finished their 4 overs quota. They only managed to score. ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುರ್ಮಾನ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಜೋಗಿ ಬದಿಯಾರು ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲನೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಿಖಿತ್ ಇವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲನೆ ನೀಡಿ MPL ಸೀಸನ್ 7ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7 2 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು 10 ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುಡಿಪು ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Welcome back, and again it's going to be a very not a big total, it's just a competitive total, you can say, in this big match, the match for the place in the mega final for the table toppers of the points table. But MFC Strikers have to do something special from the bowling because they are depending a small total 24 and 25 to win the match for the team STC Ayodhya Nagar. They are now need to get 25 from 24, and the batters out there in the middle, Ramesh, the experienced campaigner, along with him Suraj, the icon player, as a non-striker, and the bowler will go into start the proceedings, Sharat, the first ball.
And this time pushing the ball in front of the bowler and got a single for that. So Suraj's intention is very clear that he doesn't want to take any risk in that power play over. He just wanted to deal with the single. Maybe the reason that he wanted to bring his partner into the strike. He's a left-hand batter. He's got a more benefit in the afternoon, especially the onside region. The Suraj will be the little bit effective, the left-hand batter, to take the strike. That's why Suraj picked up Ramesh picked up a single and brought Suraj into strike now. Sharath. Power play over, deep square leg and deep long on. The two fielders outside the circle. All we can see that inside the ring there is a mid-on, short mid-wicket square leg. This time he lofted up and over, but not really going to travel. And the ball is missing his hand and looks like it's going to be a boundary. So Suraj just played that exquisite lofted stroke. Even the wind, which is not really helping that stroke to get the boundary line, but still he managed to get the boundary because a little bit misjudgment by the fielder while he's just running back to try to take that, try to stop that boundary, but he fails to do that. And straight away 5 runs on the board. Suraj off the mark with the boundary. Not a bad line to bowl to Suraj to get him into that offside region, but he's not really keeping the field at that long off, so that Suraj quite cleverly played it into that long off. This time swings it. What I'm talking about for the left-hander batter, it's going to be ideal condition. The weather condition which is really helping. He just hit the ball and the wind which is did the rest to get that huge 6. With that 6, scoreboard jumps into 11 on the board. 11 already on the board, and the team absolutely there cruising towards the victory. The first over itself, the Suraj is on fire. 10 in 2. Again, he wanted to go for the one more big shot, doesn't get hold up then properly, too early into the stroke. For the next match, I request United Mudipu, as well as I request the Namo Friends captain, please be reported here immediately for knockout stage match. That might be the second semi. Looks like it's the second semi-final. This is the first semi-final. The loser of this match will, little correction, the winner of this match will go into get the place in the big final, and the winner of this match is get the final, and the loser will go into play against the winner of this next match. So a couple of runs which is taken there. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 14 on the board. This time again played it nicely down to deep long on region for a easy single. Runs are coming very freely. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದಂಥ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಕುರ್ಮಾನ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಜೋಗಿ ಬದಿಯಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸರ್, ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. So we are grateful and thankful for all our chief guests today who are contributed heartily for the success of MPL Mudipu Premier League 2025 Season 7, which is proudly presented by Shri Mudipu cricketers. And here is the first ball. Suraj played. Oh, caught and ball opportunity, missed out. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಟಮೆ ಇವರು ಉದ್ಯಮಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಂಟಮೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. 15 already on the board. And they needed some magical comeback here for MFC strikers. But Suraj, they're very composed and exactly no need to panic at all. Both the batters are dealing with the singles after getting some runs in the power play over. One more single and scoreboard after that power play, the very expensive power play.
The scoreboard is 17 on the board. Another 88 more runs required for the victory. Again wanted to go for the sweep shot, deflected from his leg. One more addition, leg by call by umpire. With the addition of that one more extra, scoreboard moves on to 18 on the board. Suraj back on strike. Shushan. Balls this time wanted to go for switch it, but they will going to get the single anyhow in the form of leg by. That's good enough for them to come close to that victory target. And scoreboard is 19 on the board. Suraj drives towards a wideish long off. One more single. All the runs in this over coming in form of singles. With that single, scoreboard moves on to 20 on the board. ಇವರಿಗೆ ಸುಧೀರ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲನ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So 6 balls, 6 singles in this over. After completion of over number 2, it's 21 on the board. So 21 without loss of any wicket. Both the opening batters absolutely doing the job here, but it's not great to see. It's going to be a last 4 runs required for the victory in 2 overs, 12 ball, 4 runs required for the victory. I request the captain of Namo Friends as well as United Mudipu, please be reported here for the tossing ceremony. Namo Friends ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. This time straight to the answer fielder, the first wicket. But it might be too late for MFC strikers to get the wicket here. They needed directly breakthrough if they wanted to restrict the runs. But after getting more runs for the first wicket, they got a wicket of Suraj. But Suraj has played a very good innings for his team. The much required runs coming from his bat. It is going to be good enough for take them into this the mega final. Vikas is a new batter in. One more fantastic all-rounder for the side. And quality drag strike. Oh, lovely stop by the fielder. And technically very sound player. One of the classical player in the offside region. The 500 rupees for 6 for Ramesh. The owner of the team is announcing that 500. Inside out cricketing stroke is trying for appeal for stump out. No runs scored. Still they have to wait for another 2 runs to win this match. Three runs required. Correction. Again, they wanted to go for the switch. Wicket keeper not really backing up by call by umpire. 2 runs required for the victory. And batter will go into face the opportunity for Vikas to grab the 500 rupees. And no, it looks like one bounce taken by the fielder. With that single, the scoreboard score which is level. And just 1 run required for the victory. Again played it down to long off. That's it, the victory run for the team. Namo Friend, correction, SDC Ayodhya Nagar. They are coming to the final, the first team to qualify for the mega final of this Mudipu Premier League 2025. Congratulations for the team STC Ayodhya Nagar. They deserve the place in the mega final, but nothing to lose the heart for MFC strikers. They got one more opportunity here. They will going to play against the winner of United Mudipu and Namo Friends. The match will going to commence right now. Till then we are saying yes, goodbye from commentary box, and congratulations for the team STC Ayodhya Nagar. They qualify for the mega final. Ali ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಯಕರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾನೇ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ.
So warm welcome for Nandan Kulshekar, who is one of the big fan of on-drum cricket. Is coming to watch this MPL from long way from Mangalore to here. So warm welcome for Nandan Kulshekar as well on behalf of all cricket lovers and organizer. And that's it. We are saying thank you very much for the organizers for the golden opportunity being the part of this cricket tournament. For some urgent work, I will go into leave here. So thank you very much for the opportunity for the organizer of prestigious cricket tournament Mudipu Premier League 2025. Thanks to see every organizing committee members of Mudipu Premier League 2025 season 7 for this wonderful opportunity being the commentator of this cricket tournament. Myself Satish Salyan. And it's time for changing committee boxes over to Gopi to take over the microphone. Thank you. Thanks a lot. ಸೊ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲೇ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದು 2 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಇದು 10 ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಟಮೆ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಗಿದು ನಂತರದ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮುಡಿಪು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಒಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. धन्यवाद सतीश। तो जहां तक सवाल है इस वक्त मैच नंबर 24 का, तो सो द मैच नंबर 24 इज नाउ कमिंग अप एंड नमो फ्रेंड्स विल टेक्स ओवर यूनाइटेड मुडिपिन्नार। और एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त सतीश का अभिवादन करते हुए काफ़ी बेहतरीन किरदार उन्होंने निभाया। यहाँ पर अंग्रेजी में बेहतरीन आंखों देखा हाल उन्होंने सुनाया। और निश्चित रूप से एक बार फिर से संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से हम उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। हार्टली वेलकम टू यू माय डियरेस्ट फ्रेंड सतीश फॉर योर वंडरफुल कमेंट्री इन इंग्लिश इन दिस टूर्नामेंट। तो इस वक्त जहां तक सवाल है, नमो फ्रेंड्स का मुकाबला होता हुआ यूनाइटेड मुडिपिन्नार के साथ। और यूनाइटेड ने टॉस से पहले जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ओपनर्स ऑफ नमो फ्रेंड्स। और पिछले मैच में नमो फ्रेंड्स ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 47 रनों का लक्ष्य उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाजों ने पार किया था सिर्फ 3.3 ओवर में। और निश्चित रूप से उसी तरीके की बल्लेबाजी की उम्मीद में इस वक्त दोनों बल्लेबाज चेतन और संपत मैदान पर उतरने की तैयारी में। और जहां तक सवाल है यहाँ पर यूनाइटेड मुडिपिन्नार का, तो उन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन अपने पिछले मैच में दिया था और यहाँ पर उस सफलता का सिलसिले को जारी रखने के प्रयत्न में। तो एक बेहतरीन मैच नंबर 24 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now coming up, which is proudly organized by Sri Mudipinnar Cricketers SMC Mudipu. 10 prestigious franchise teams are participating in this tournament, and now knockout stage matches is now going on here, and we are just waiting for the openers of Namo Friends.
So the first ball of the match number 24 of this prestigious cricket tournament is now coming up. MPL Mudipu Premier League 2025 Season 7, which is proudly organized by Sri Mudipinnar Cricketers SMC Mudipu. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त आरंभिक बल्लेबाजों का, तो चेतन और संपत इस वक्त आरंभिक बल्लेबाज के रूप में मौजूद। नितेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और संपत सामना करने के लिए तैयार। द फर्स्ट बॉल ऑफ द एलिमिनेटेड मैच इज नाउ कमिंग अप। और पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर इस 4 ओवर के मैच में इस वक्त शुरू होता हुआ। और पहले गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर। एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल रन इज गॉट। और एक रन के साथ इस वक्त नमो फ्रेंड्स का रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना से नुकसान के। और नमो फ्रेंड्स के दूसरे आरंभिक बल्लेबाज चेतन सामना करते हुए इस वक्त नितेश की गेंदों का। और नितेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा। गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। 1 रन का इजाफा हो चुका है। लेग बाई का इशारा। और लेग बाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 2 विदाउट लॉस। 2 बेहतर गेंद इस ओवर में नितेश यहाँ पर फेंक चुके हैं और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार पुल किया है। फुल टॉस गेंद विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। लगभग ऊंचाई पर गेंद आती हुई गेंद को पुल करना चाहता ऑन साइड पर, लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराई और विकेट कीपर ने आगे क्यों आकर इस कैच को लपक लिया। और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका। फर्स्ट विकेट डाउन एंड द मैन संपत इज नॉट ए पार्ट। नाउ फर्स्ट विकेट लॉस्ट फॉर नमो फ्रेंड्स। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। इस मैच की विजेता टीम अगले मैच में MFC स्ट्राइकर्स का मुकाबला करेगी। लगभग सेमीफाइनल दौर का मैच है और उसके बाद द फाइनल मैच में देखते हैं कौन सी टीम प्रवेश करती है। यहाँ पर STC अयोध्या नगर जो टीम इस वक्त मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुकी है, उसका सामना करने के लिए इस वक्त कौन सी टीम इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करेगी ये पता चलेगा लगभग 1 या 1.5 घंटे के बाद। और इस बीच संघर्ष जारी है नमो फ्रेंड्स और यूनाइटेड मुडिपिन्नार के बीच में। और नितेश और नए बल्लेबाज श्रेयांक जिनका आगमन हो चुका है, एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, नमो फ्रेंड्स की ओर से इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और नितेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा। गेंद पहुंची शॉर्ट फाइल लेग पर। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और नितेश एक बेहतर लेंथ तो लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा। लेग स्टंप पर इस बार जो वाइड का इशारा। शॉर्ट फाइन लेग पर बेहतर फील्डिंग इस वक्त फील्डर गौरीश ने इस वक्त की, लेकिन इस बीच वाइड का इशारा हो चुका है। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर। अपने सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए नितेश अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्पिन के तौर पर अगली गेंद। ये गेंद इस बार बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी मत स्ट्रेट लाइन। लो फुल टॉस के रूप में गेंद आई थी और इस गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो 3 रन बन चुके हैं और इस बीच अंतिम गेंद बाकी और नितेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। और इस बीच नितेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी टू एंड द फैंटास्टिक ओवर। So first over has been came to an end and a fantastic over from Nitesh came to an end after first over after being losing the toss and putting to bat by United Mudipinnar. Namo friends made a slower start. In fact, they managed to score 3 for the loss of 1 wicket after completion of first over and a fantastic over bowled by Nitesh. तो 1 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है और 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और देखते हैं यहाँ पर इन बचे हुए 3 ओवर में नमो फ्रेंड्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाता है। फिलहाल जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो कम से कम 30 का आंकड़ा उन्हें यहाँ पर पार करना होगा। निर्धारित 4 ओवर में अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो गेंदबाज गौरीश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। और जहाँ तक गौरीश का सवाल है इस श्रृंखला में बेहतर ऑलराउंडिंग प्रदर्शन उन्होंने दिया है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में भी बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिया है और यहाँ पर देखना है कि उस सफलता के सिलसिले को इस मैच में भी वो क्या आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं।
तो गौरीश ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए चेतन सामना करते हुए। ये गेंद अच्छी गेंद थी इस वक्त, बल्ले का भीतरी किनारा गेंद टकराने के बाद शॉर्ट स्कोर लेग पर पहुंची। शॉर्ट मिड विकेट पर कहना पड़ेगा, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। विकेट कीपर द्वारा अपनी बाईं ओर जाने के बाद इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। 4 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर सेकंड स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले गो। और गेंदबाज गौरीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मिनट, बहुत स्लोवर डिलीवरी, और इस गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए और चकमा खा गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज गौरीश फेंक चुके हैं और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त। एक बार फिर से गेंद को उछालने के प्रयास में चूंकि निश्चित रूप से दबाव इस वक्त नमो फ्रेंड्स के बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ और सिर्फ 4 रन स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ। एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए यूनाइटेड मुडिपिन्नार के गेंदबाज और गौरीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद। तो ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर मौजूद। नॉट मोर देन अ सिंगल आफ्टर फर्स्ट बॉल्स कलेक्टेड बाय द लॉन्ग ऑफ फील्डर, बट बिफोर दैट द बैट्समैन हैड गॉट अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू क्रॉस ओवर फॉर दिस सिंगल। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। 5 रन, 5 रन सिंगल्स के रूप में बन चुके हैं और कुल मिलाकर 10 गेंदें उनके पारी के फेंके जा चुके हैं। एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज यूनाइटेड मुडिपिन्नार के और गौरीश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट चेतन इस वक्त सामना करते हुए गौरीश की गेंदों का। ये गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, अगेन ही बॉल मच स्ट्रेट लाइन, द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड। और इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में चूके गेंदबाज बल्लेबाज चेतन और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज गौरीश इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। कोई मौका इस वक्त प्रदान नहीं कर रहे कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछाला इस वक्त डीप मिड विकेट पर 6 रनों के लिए। सो फर्स्ट कॉन्फिडेंट स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ चेतन। इस बार गेंद की उछाल को पहचानते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ स्कूप कर दिया इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है चेतन के बल्ले से और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 2 अंकों पर, यानी 11 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पर। 11 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs for Namo friends. They are still searching for the right track. So half the way mark, आधा सफर तय हो चुका, आधा सफर और भी तय होना बाकी। और जहां तक 11 on the board, 1 wicket loss, 2 overs completed. Match number 24 of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now progressing here, which proudly presented by Sri Mudipinnar Cricketers MNSMC Mudipu. इस सुंदर से विशाल से पंचायत मैदान मुडिपू का जो कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है, और यहाँ पर एक और बेहतरीन और मशहूर श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए आज इस श्रृंखला का दूसरा और अंतिम दिन का तीसरा अंतिम मैच यहां पर खेला जाता हुआ। पुनीत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सामना करने के लिए तैयार। श्रेयांक ओवर की पहली गेंद। ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಯಶವಂತ ಸರ್ ದೇವರಾಜ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿತಿನ್ ಅರಸ್ ಸಜಿಪ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So just a single he got, and the scoreboard is now moving up to 12 now on the board for losing 1 wicket in the open number
3 इन प्रोग्रेस और पुनीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था इन हाथ राउंड द विकेट चेतन के लिए इस बार बाउल्ड हिम जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन एंड लॉस्ट हिज स्टंप. Puneet got the breakthrough and Chetan departs. So important wicket lost for no more friends at this situation. The batsman just gone for a mighty heave. He's got a gap between his bat and leg and the ball passed in that gap and his leg stump, off stump has been uprooted. And one more wicket lost. It's 12 for 2. संजय दी नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करते हुए पुनीत की गेंदों का. पुनीत तक गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेला बैक टू द बॉलर की दिशा में रनआउट का मौका इस वक्त थ्रो पहुंच चुका है और यहाँ पर ऐसा देखना पड़ेगा. सो इट्स नो सिग्नल केम फ्रॉम द अंपायर. इनफैक्ट आई थिंक इज मेड इट. तो एक रन मिलेगा जरूर. बल्लेबाज पहुंच चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 13 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और गेंदबाज पुनीत लॉस्ट इट. दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस. इट्स अ बिग वन. फुल टॉस डिलीवरी and he just connected that one right from the middle of the bat and a fantastic struck came from the bat of Shreyank. और इस छक्के के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. रन की गति में कुछ हद तक एक्सेलरेशन इस वक्त आती हुई और इस छक्के के साथ और 19 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर पुनीत. और 2 गेंदें इस ओवर में बाकी और पुनीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. श्रेयांक छक्का लगाने के बाद काफी आत्मविश्वास पर नजर आते हुए एक बार फिर से चूके गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 19 रनों पर. स्टिल 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज पुनीत इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज श्रेयांक के लिए अपनी ओर की अंतिम गेंद. यह गेंद चूके बेहतरीन गेंद बेहतर कमबैक रनर की मदद से इस वक्त श्रेयांक खेलते हुए 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं. अपील होता हुआ लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं. बाय 3 overs completed and a 20 for the loss of 2 wickets. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ನಿತಿನ್ ಅರಸ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಶವಂತ ದೇರಾಜೆ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. धन्यवाद. और लिखित the bowler starts a fresh proceedings from that side end. And the 4th and the last over starts in their innings और स्कोर है इस वक्त 20 रन दोनों आरंभकार को होने के बाद. और इस वक्त लिखित गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज श्रेयांक के लिए जो कि इस वक्त रनर की मदद से खेलते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर लिखित गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला. इस वक्त मिड ऑन पर कहना पड़ेगा मिसफील्ड यहाँ पर होता वो यहाँ पर रनर रन के लिए दौड़ पड़े और यहाँ पर सर्टेनली आई थिंक श्रेयांक इज बैकिंग टू पेविलियन नाउ क्योंकि श्रेयांक के रनर पहला रन पूर्ण करने के बाद श्रेयांक को स्ट्राइक देने की वजह से वो दौड़ पड़े लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दूसरे छोड़ के बल्लेबाज संजय द्वारा. और दुर्भाग्यवशात यहाँ पर श्रेयांक रनर की बदौलत आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं. 1 run added and a wicket lost. 21 for the loss of 3 wicket. तो श्रेयांक का विकेट यहां पर गिर चुका है. रनर की मदद से खेल रहे थे और यहां पर रन आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए नए बल्लेबाज धनंजय इस वक्त
उनका आगमन यहाँ पर होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज लिखित के गेंदों का, और लिखित गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली दूसरी गेंद अपनी ओर की लेकर लिखित तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ये गेंद इस बार गेंद को पुल किया है डीप मिड विकेट पर, नॉट क्वाइट मिड विकेट, चांस फॉर द डीप मिड विकेट फील्डर, ओह ही ड्रॉप दैट वन, ही ड्रॉप दैट वन। और यहाँ पर बल्लेबाज जीवदान के साथ साथ 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि गेंद तक पहुंच जरूर गए थे, लेकिन आखिरकार गेंद को यहाँ पर अपने दोनों हाथों में लपकने में असफल, और बल्लेबाज यहाँ पर 2 रन प्राप्त कर चुके हैं इसकी बदौलत। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, एक्स्ट्रा बाउंस फॉर द बॉलर, चांस ऑफ रन आउट, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। हालांकि बल्लेबाज दौड़ने लगे थे, गेंद उनके पैरों पर टकराई और यहाँ पर आखिरकार 1 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल। स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। So we have to just wait for the umpire decision. So umpire, single run completed. Yes, 1 run completed, 24 on the board. और लिखित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद गेंद को इस वक्त खेल दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद, बल्लेबाज 1 रन पूर्ण कर चुके हैं, स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचता हुआ, थ्रो पहुंच चुका है और यहाँ पर पहले प्रयत्न में गेंद को इस वक्त लगाने में असफल। और इन दी सेकेंड अटेम्प्ट जब तक वो गेंद को यहाँ पर विकेटों पर लगाते हैं, बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे, 2 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं। 26 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 4th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनके बारे में, जस्ट 2 डिलीवरीज लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। और लिखित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेला, इस वक्त गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, फिर से 2 रन मिलेंगे, थोड़ी सी मिसफील्ड और बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। Fantastic running between the wicket between these two batsmen, adding 2 couples in the last 2 deliveries, 2 consecutive deliveries in fact. और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। लास्ट बॉल लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज लिखित अंतिम गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर, इनटू द गैप एज वेल एंड he's got the distance. He just finished the innings in a style with a 6. धनंजय के बल्ले से ये छक्का लग चुका है और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा, नमो फ्रेंड्स स्टार्टेड स्लोली, प्रोग्रेस्ड slowly but finished well with 34 on the board in the stipulated 4 overs, and now the target for United Mudipu is 35 to qualify for the qualifier match number 3 of this competition, surprisingly. और जहां तक सवाल है, इस वक्त इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए 35 रनों की दरकार निर्धारित है 4 ओवर में। The required run rate is exactly 8.75 runs per over. 35 they have to score in the stipulated 24 deliveries. That means in the stipulated 4 overs, with the help of 10 wickets, they have to score for victory. The present equation shows for them. और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो उनके पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर छोटे से अंतराल के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद खुद मेरे साथ गोपी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा जब यहाँ पर यूनाइटेड मुडिपिन्नार की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है कि ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
ಸೊ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮತ್ತು 2 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 10 ಓನರ್ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು 10 ತಂಡಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಡಿಪಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತಿನ್ ಅರಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಶವಂತ ದೇರಾಜ್ ಸರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ Right, 35 the target for United Mudipu set by Namo friends to qualify for the next round of this competition, and the innings now going to start. First ball of the innings is now coming up from Adarsh to the right-handed batsman Gaurish. Meantime, the non-striker is Prajwit. And we are just waiting for the first ball of their innings. And the first ball of their innings is now coming up. Right arm round the wicket. First ball, beamer delivery, and wide declared by umpire. He bowled too far high at the last moment, and the ball went into the hands of short fine leg fielder, and a single run added, and that single run brings the runs out of one for them. It's one without loss in the first over, and others once again here he bowls right arm round the wicket to the right-handed batsman Gaurish. This time played that one, and it just dropped that one at the last moment. That wasn't a chance at the last moment. He's got a hand on to that at the last moment, but the ball was flicked out of his hands, and the batsman got a life and a single, and with that single run the scoreboard is now moving up to 2 on the board for losing 1 wicket. And as far as the victory is concerned for United Mudipu, they desperate to make a strong start if they have to reach the target of 35 runs in the stipulated 4 overs with a required run rate of exactly 8.75 runs per over. And now once again others, here he comes, this time bowling to the right-handed batsman Prajwit. 4 to 5 steps on his run-up, right arm round the wicket bowls. This time just wanted to turn it away after covering the stumps. Not succeeded. The ball was not so missing too far outside the leg stump and collected by a wicket-keeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. And the scoreboard stays at 2 for the loss of 1 wicket. First and only power play over of their innings is now progressing here. And others just looking for the big one in this power play over, just ready to face the bowler Adarsh, and here he comes, right arm around the wicket bowls outside the off stump, lofted that one this time, but this time I don't think it's gone all the way, and it taken just inside the fence by the long off fielder. He just hit that one, but the placement was too wrong, and he just paid the penalty for that at the last moment. Long off fielder made no mistake. He took the catch comfortably just inside the fence. Sanjay, the fielder who took the catch at long off, and the man Prajwit departs for duck, and the first wicket lost for United Mudipu. They are now 2 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Still 33 more runs now they have to score for victory, and remaining 3.3 overs. That means 21 deliveries. And now Prahas, the number 3 batsman, is now coming out to the middle. He'll be joining Gaurish, and Gaurish at the non-striker. And meantime some fielding adjustments is going on there. 7 fielders stood inside the 20-yard circle as far as the power play is concerned. Just 2 fielders stood outside the 20-yard circle, one at long off in fact, and one at deep mid wicket. And now once again Adarsh comes right arm round the wicket to the right-handed batsman Prahas. He is now going to face Adarsh. 4 to 5 steps on his run-up. Here he comes, right arm round the wicket, bowls. This time, good one, stuck to his leg. This time, slight bit of misunderstanding. This could be in trouble if the throw was directed to the stumps.
But the last moment, he survived because of that just slipped of wide throw and just a single run has got and a leg by declared by umpire. That brisket run increasing the total to 3 on the board for losing 1 wicket in the open number, first in progress for United Mudipu. Still they have a long way to go. 32 more runs now they have to score for victory in 3+ overs. That means exactly 20 balls remaining in their innings. And now others once again. Here he comes. Right arm around the wicket bowls. Outside off the cracks it away through the offside and he finds the gap as well. This is an absolute outstanding struck came from the bat of Gaurish. Just stand and delivered. And he took the full advantage of that power play. And he just played that one successfully into the extra cover fence for a boundary. Fantastically struck. So that boundary increasing the total to 7 on the board, yet to lose any wicket, and this is the over number first in progress in fact. And now once again Adarsh, here he comes. Gaurish got more confident after being hitting a boundary in the previous delivery, a deep extra cover. Now once again Adarsh comes, right arm around the wicket to Gaurish, right arm around the wicket. Here he bought, just played that one delicately and gone through for a quick single and get it comfortably at last. So he keeps the strike and first over has been completed, and after first over United Mudipu chasing the victory target of 35 in 4 overs. They made a mixed start in fact. They managed to score 8 runs on the board for losing 1 wicket after completion of first over. So let's straight away coming back to the equation, 35 minus 8, that means 27 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. The required run rate is now gone up to a little bit of higher, 9 runs per over at this situation. And we're just waiting for the bowler who will be starting the next over from that side. And so it's already 4:10 in the evening. The rays of sun getting brighter and brighter as the time progresses. So this is the third last match of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now progressing here, which is proudly organized by Sri Mudipinnar Cricketers SMC Mudipu. 10 prestigious cricket teams are participating in this tournament. 20 league matches completed today afternoon. After that, this is the 4th match of the knockout round is now going on here. So the bowler starts the fresh proceedings from this side end, wearing a number 44 jersey. So Nikhil Urf Rabada is now going to face, and now he bowled expensive overs in the previous matches. In the one match he conceded 27 runs. He bowled 8 wides in that one over just 2 matches back, and now after that in the previous match he also become expensive, conceded 16 runs in his 1 over, but still the captain of his team got a faith on him, and he is now starting the bowling. So first ball of his fresh over is now coming up. Gaurish is now going to face right arm round the wicket this time. This time turns it away down to the ball just changing its direction after sticking to the stone at deep back of the square leg, and the batsman because of that come back for the second run. Couple of runs added to their total. And with that couple run, the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 for the loss of 1 wicket after completion of the first power play over. Fielding restrictions has been taken off. And once again Rabada, here he comes. Right arm round the wicket. 2 for Sadi off stump. And a wide declared by umpire. And with that wide run, the scoreboard moving up to 11 on the board. Runs are badly required for United Mudipu to get back into this match. And also a partnership is badly required for them to heading towards to their victory mark. Nikhil, once again here he comes. Right arm round the wicket, bowls to the right-handed batsman Gaurish. He's playing a sensible knock for their side, facing Nikhil. This time left-side, and I think it could be taken. No, in fact it's gone all the way. It's a biggie. This is an outstanding struck came from the bat of Gaurish. He just got that one right from the middle of the bat and lofted that one down to Whitey's long on fence for a big one. The scoreboard is now raising up to 17 on the board. Much needed sixer came from the bat of Gaurish. And with that 17 on the board, still 18 more runs now they have to score for victory. In remaining 16 delivered. The thing's getting much easier now.
And now once again, lofted again, the same result. 6 number 2 in this over. And Gaurish looking on fire. What a fantastic batting display coming from Gaurish in this over. 2 consecutive massive sixes. And with these 2 massive sixes, I must say, United Mudipu are strongly back in the game. It's 23 on the board, just 12 to get. And 15 balls remaining. The thing's getting much easier now for the batting side with that 2 couple of sixes. So this is an outstanding batting performance from Gaurish. Continuing fantastic batting performance right from the previous match to this match. Once again, the bowler straight away under pressure. He bowled beamer delivery this time and a wide. Frustration on the face of the bowler. Nikhil, once again he become expensive in this match. So 24 on the board, 16 runs already scored in this over so far. Again, Nikhil bowls. This time, just gone for a big one, not connected that one properly. Ball running down to a long on. Has got a single, and with that single run, the scoreboard moving up to 25 on the board for losing 1 wicket in the over number 3 in progress. And some miracle bowling badly required for Nammo friends to get back into this match. And just 10 runs required. In fact, it's 10 runs required for victory. Nikhil bowls. 2 for Asadi off stump. Straight away, the pressure on the bowler. Bowled 2 for Asadi off stump after conceding 2 consecutive sixes. He bowled 2 wides in this over. 26 on the board. And again, Nikhil comes right arm around the wicket. Yeah, he bowls loft at that one. Chance and misses. And it's gone over the fence for a boundary. So the pressure shown on the faces of the fielder. This time, that could be a chance, a difficult chance at the last moment. But he misses on the ball after beating him. It went over the fence at long on for a boundary. And now, United Mudipu are looking right on top. 30 on the board. Just 5 to get for victory. Remaining 2 plus overs. Nikhil. Here he comes. Full toss. Turns it away. No one in that area. One more boundary. Long chase for the fielder. But he won't get that one. And it's crossed over the fence for a boundary. And with this boundary, I must say, the scores are now leveled. So 26 runs conceded by Nikhil Urf Ravana in this over. Once again, he become expensive in the 3rd consecutive match. And he has become expensive. Absolutely, there is no doubt about that. So, just 1 run required in remaining 2 overs with a required rate of 0.50 runs per over. In fact, it's a half runs per over, the required 100 for them. So just a 1 run required, surrounding fielding, and that's it. Comprehensive victory for United Mudipu with 11 balls to spare, and they registered a big margin victory of 9 wickets, and they are through to the next round of this competition. In fact, qualifier, they are moving to the qualifier number 3 of this competition with this victory, and now they will meet MFC Strikers. The loser of the qualifier number 1, they will meet MFC Strikers, and that match will be played right now, right after the short break. And the man of the match of this match award goes to, undoubtedly, the man who batted fantastically, scored 24 runs, including 2 sixes and 2 boundaries. Gaurish adjudged man of the match. I request Gaurish, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizer. So match number 25 and the second last match of this prestigious cricket tournament, MPL, is now coming up live and exclusively right in front of you within just short while. Till then, we're taking short break, and we'll be back right after short break with myself, Gopi, once again when the next match will going to begin. Now it's time for break. Thank you. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇರುವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೌರೀಶ್ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಅರಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಯಶವಂತ ದೇರಾಜೆ ಸರ್ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೀ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ SMC ಮುಡಿಪು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 10 ತಂಡಗಳ 2 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿತಿನ್ RSS ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಶವಂತ ದೇರಾಜೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿತಿನ್ RS ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು. ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 60,000 ಮತ್ತು SMC ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ನಗದು 30,000 SMC ಟ್ರೋಫಿ. ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ತುಳಸಿ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೃತೀಯ ನಗದು 15,000 SMC ಟ್ರೋಫಿ ಸುಧಾಮ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚತುರ್ಥ ನಗದು 15,000 ಮತ್ತು SMC ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದುಬೈ ಇವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಸಜಿಪಾ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಚೇತನ್ ಸಜಿಪಾ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Right, it's MFC. Strikers are won the toss and what the decision they will take, just we have to wait and see. The semi-final match of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now coming up live exclusively right in front of you between MFC Strikers versus United Mudipinar within just a short while. So, the second last match of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now coming up. ಸೊ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ STC ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ, ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಜರಿಪೆಲ್ಲ, SMC ಪಜೀರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್, KFC ಕುರ್ನಾಡ್, MFC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಜಯನಗರ, ಬಬ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 10 ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಡಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಅಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲಂಕೃತರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲನ್ನ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7 ಅವರದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. 10 ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Right, the semi-final match is now going to start. In fact, MFC Strikers will take over United Mudipu, and MFC Strikers, after won the toss, they elected to field first, and because of that, their fielders are spread it out on the field. And the openers of United Mudipu at the crease are Gaurish and Prajvit. Meantime, the bowler starts the fresh proceedings is Sharat, and the first ball of the semi-final match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज शरत इस वक्त तैयार, जबकि सामना करते हुए इस वक्त गौरीश। और जहां तक सवाल है पहली गेंद का, तो इस वक्त देखते हैं पहली गेंद पर गौरीश किस तरीके की बल्लेबाजी बैटिंग यहां पर अपनाते हैं। So the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर शरत इस वक्त तैयार गौरीश के लिए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद गौरीश के लिए हल्के से गेंद को पुश कर दिया, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से गौरीश जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट में की है पिछले मैचेस में, इस वक्त उनके टीम को इस मैच में भी उनके बेहतरीन बल्लेबाजी की जरूरत है। और देखना यह है कि इस मैच में वो इस सफलता के सिलसिले को आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। इस बीच गेंद को उछाला, इस वक्त गेंद पहुंची वरीश लॉन्गॉन पर, एक रन का इजाफा हो चुका है और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर। रंजीत और प्रज्वित दोनों अपना खाता इस वक्त खोल चुके हैं और गेंदबाज शरत अपने ओर के अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए प्रज्वित के लिए इस वक्त रनर आ चुके हैं क्रीज पर और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस वक्त उछाला मिड विकेट पर 6 रनों के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त।
So this is an outstanding strike came from the bat of गौरीश और डीप मिड विकेट पर सीमा रेखा के अंदर जो फील्डर खड़े हुए थे जीतोड़ कोशिश तीर उन्होंने जरूर की लेकिन गेंद को रोकने में असफल और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है छक्के के लिए बेहतरीन स्ट्रोक और गौरीश एक बार फिर से गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार शरत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट अगली गेंद ये गेंद इस बार बैकफुट पर गई गेंद को कट करना चाहा लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं और गेंद इस वक्त गली पर जब तक फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रन सेमीफाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एमपीएल मुड़ीपू प्रीमियर लीग सीजन 7 2025 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ और गेंद इस वक्त तैयार शरत की गेंद ऑन साइड पर उछाला 6 रनों के लिए 6 number 2 came in this over this time from the bat of Prajvit and this is an absolutely a fantastic start for United Mudipu 15 on the board and still a ball left in this over दोनों आरंभकार इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची थोड़ी सी मिसफील्ड और बल्लेबाज वाइड का इशारा 1+1 2 runs now added to their total लक्ष्य से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी इस वक्त गेंदबाज ने और 2 रन इस वक्त वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ चुके हैं और जहां तक सवाल है इस ओवर के अंतिम गेंद का तो शरत काफी महंगे इस ओवर में साबित हो चुके अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार और यहाँ पर सामना करते हुए गौरीश ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को छोड़ दिया एक बार फिर से वाइड का इशारा द बॉल पुशिंग टू फॉर द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के 18 ऑन द बोर्ड एंड द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज शरत दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा पैरों पर गेंद टकराई तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का कुछ हद तक अपने पैर में इस वक्त दर्द महसूस करते हुए बल्लेबाज गौरीश घुटनों पर हाथ लिए इस वक्त खड़े हुए हैं लेकिन इस वक्त कुछ हद तक सही सलामत दिखाई देते हुए ओवर की समाप्ति फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर यूनाइटेड मुडिपिनार they managed to score 19 runs on the board after completion of first over and this is an absolutely a terrific start for them in any cricketing point of view तो जहां तक सवाल है दूसरा ओवर का तो देखते हैं कौन सा गेंदबाज इस वक्त दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ करते हैं इस श्रृंखला के मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है यूनाइटेड मुडिपिनार और एमएफसी स्ट्राइकर्स के बीच और इस मैच के विजेता टीम इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले यानी मेगा फाइनल में एसडीसी अयोध्या नगर का मुकाबला करेगी और निश्चित रूप से देखते हैं कौन सी दूसरी फाइनलिस्ट के रूप में टीम यहां पर फाइनल में प्रवेश करती है एसटीसी का मुकाबला करने के लिए गेंदबाज सुशांत गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ करते हुए गौरीश के लिए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं पावर प्ले समाप्त हो चुका फील्डर मैदान पर छा चुके हैं गौरीश के लिए ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद छोड़ दिया गेंद को इस वक्त वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 20 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इनफैक्ट और अगली गेंद यह गेंद उछालना चाहा नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल थोड़ी सी मिसफील्ड लेकिन बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके यशस्वी तम्मा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 21 रनों पर 21 ऑन द बोर्ड दोनों आरंभिक बल्लेबाज गौरीश और प्रज्वित काफी आत्मविश्वास के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए प्रज्वित सामना करने के लिए तैयार इस वक्त सुशांत की गेंदों का इस बीच उछाला गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से लंबे छक्के के लिए प्रज्वित ने absolutely fantastic strike. He just caught that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over deep mid wicket fence for a massive one. Fantastic strike. 27 on the board. और अगली गेंद के लिए तैयार एक बार फिर से प्रज्वित ने गेंद को खेला फॉलो थ्रू में मौका जरूर कॉटन बॉल का लेकिन यहाँ पर मौका गवाते हुए मुश्किल सा मौका था गेंदबाज के लिए कॉटन बॉल का और इस बीच 1 रन का इजाफा 28 on the board in the over number second in progress. This is an absolutely fantastic progressing year for United
मुडिपिनार। और सिर्फ दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर एक लंबे स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ यूनाइटेड मुडिपिनार। और गेंदबाज इस वक्त सुशांत, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार। ये गेंद इस वक्त उछाला, इस वक्त गौरीश ने लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और छक्कों की बौछार यहां पर लगाते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज इस बार देखे किस तरीके से मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया था, एफर्टलेसली प्लेड, एंड दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप एज वेल एट लॉन्ग ऑफ फॉर अ मैक्सिमम 34 ऑन द बोर्ड। सुशांत काफी महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। और अगली गेंद, यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करते हैं डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। दैट सिंगल स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 35 on the board, and with that single Gaurish moving up to 17, and Prajvit batting on 13, and still 1 ball left in this over। और सुशांत अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, 1 ball left in this over। सुशांत इस ओवर में अंतिम बार प्रज्वित के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, एक्स्ट्रा क्विकर रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन जरूर मिलेगा। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, खासकर गौरीश द्वारा। जैसे विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी, गौरीश ने दौड़ना शुरू किया। हालांकि प्रज्वित के रनर ने दौड़ना कुछ देर से शुरू किया था, लेकिन यशस्वीतम अपना रन ये पूर्ण करते हुए 22 के रूप में। और 2 ओवर के समाप्ति के बाद ऐसा कहना पड़ेगा, स्टिल दे आर लुकिंग इन अ कमांडिंग सिचुएशन। इट्स 36 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs फॉर यूनाइटेड मुडिपिनार। सो हाफ द वे मार्क, स्टिल हाफ हैव टू गो, दैट मींस 2 overs लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಎಂ ಮುಡಿಪು ಸರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ, ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. सुजीर गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए, तीसरा ओवर शुरू होता हुआ यूनाइटेड मुडिपिनार की पारी में। और सामना करते हुए इस वक्त प्रज्वित फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग स्पिन गेंदबाजी। यह गेंद उछाला इस वक्त डीप मिड विकेट पर, इनटू द गैप एज वेल, 1 more बाउंड्री। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर, 40 ऑन द बोर्ड, yet to lose a wicket, and slowly and steadily this partnership is now building up for United Mudipinar। और खाली क्षेत्र चुनते हुए वाइडिश लॉन्गॉन और डीप मिड विकेट के बीच गेंद को डिस्पैच कर दिया था खूबसूरती के साथ बल्लेबाज प्रज्वित ने। चौके के लिए इस बार खेलना चाहा था, चूंकि लो फुल टॉस के तौर पर गेंद थे और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 40 रन बन चुके हैं, तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। और फिर से एक बार सुजीर गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बाउल्ड आउट, लॉस इज ऑफ स्टंप। एट लास्ट द बाउलर्स of MFC strikers got the breakthrough, and Prajvit, after playing a fantastic knock of 17 runs including 2 sixes, 2 massive sixes and 1 boundary, is back into pavilion, and 40 runs opening partnership has been broken for United Mudipinar in the face of Prajvit. They lose their first wicket, and now it's 40-1. ಇವರಿಗೆ ವರುಣ್ ಅವರು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. प्रहास नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर मौजूद। 40 रन के आरंभिक शुरुआत के बाद साजदार इस वक्त टूट चुकी है। पिछले गेंद पर प्रज्वित को एक बेहतरीन गेंद के जरिए बोल्ड आउट करने में सफल गेंदबाज सुजीर, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सुजीर। नए बल्लेबाज प्रहास सामना करते हुए ये गेंद उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इनफैक्ट बॉल रनिंग डाउन टू अ लॉन्ग ऑन, has got a single for that stroke, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर। 41 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. So what a fantastic battle we are just watching here in this semi-final match of this prestigious cricket tournament MPL 2025 season 7. इस बार उछालना चाहा गौरीश ने, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रन पर। रन आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए यूनाइटेड मुडिपिनार के लिए, और सुजीर इस वक्त अपने ओर के अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, अपील इस वक्त जारी है।
लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ आते हुए, और गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 42 रन। तो पहली गेंद पर चौका प्रदान करने के बाद एक बेहतरीन कमबैक का सुधीर यहां पर कर चुके हैं बाद के 4 गेंदों में। इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, जिस गॉन फॉर अ माइटी हिव नॉट सक्सीडेड, गॉड इज आउटसाइड एज, और गेंद जब तक शॉट थर्ड मैन पर 20 गज के दायरे के अंदर फील्ड हो, 1 रन का इजाफा हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 43 ऑन द बोर्ड, एंड द थर्ड ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड। स्टिल after completion of 3 overs, still United Mudipu looking right on top at the situation. Just a last over left in the innings, अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं ओवर लास्ट ओवर लेफ्ट इन देयर इनिंग्स नाउ। शाम के 4:40 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मैदान पर मौजूद है। First ball 4, second ball dot, third ball wicket, fourth ball single, fifth ball wide, after that 1 dot, and last ball single. So 6 balls bowled in the previous over, 6 right deliveries bowled by the bowler Sujir in the previous over, and then the bowler starts a fresh proceedings. गेंदबाज नया ओवर प्रारंभ करते हुए चरित, और इस बीच सामना करने के लिए तैयार गौरीश। इस श्रृंखला में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन अब तक बल्लेबाज गौरीश दे चुके हैं। इस बार उछालना चाहा, अपील रन के लिए दौड़ पड़े, इस वक्त कुछ देरी से जरूर दौड़े थे प्रज्वित, माफ कीजिए बल्लेबाज प्रहास, और इस बीच तीसरे अंपायर के लिए मांग यहां पर की गई है, बोल्ड आउट के लिए मांग की गई है। देखना यह है कि गेंद इस वक्त स्टंप्स को छूकर निकल चुकी थी या नहीं, तो देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। No doubt is the call and the batsman survived. और जहां तक सवाल है रनों का, तो 1 रन इस गेंद पर मिल चुका है, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 44 रनों पर 44। और चरित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, नए बल्लेबाज प्रहास इस वक्त सामना करते हुए निश्चित रूप से एक बेहतरीन स्कोर की ओर, एक लंबे स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ यहाँ पर यूनाइटेड मुडिपिनार। और चरित दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए प्रहास के लिए। Lofted. This time I think it's got the distance. It's a massive one. It's gone many a miles from the fence. This is an outstanding strike came from the bat of Prahas. And with that 6, the 50 comes up for United Mudipinar. 50 came in 3.2 overs. For losing just a single wicket. This is a terrific progressing year for them. Again, the same treatment. This time, little bit of a straighter. 6 number 2 in this over. Consecutive sixes for Suhas. And the scoreboard is now raising up to 56 now. Prahas, the batsman who hit consecutive sixes in the last 2 consecutive deliveries. और 3 गेंदें अब बाकी, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद 6 number 3. This is an absolutely fantastic batting display came from the bat of Prahas. So it's a biggie number 3 in this over consecutively from Prahas. 3 consecutive sixes. So 62 the score now. Again 6 number 4. छक्कों की बौछार यहां पर लगाते हुए प्रहास, तो 4 छक्के अंतिम ओवर में लगा चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 68 रनों पर, 68 on the board. This is a tremendous batting display coming from Prahas in this last over. Last ball of the match of their innings is now coming up. Lofted again. 6 number 5. What a way to finish their innings. 5 sixes in the last over. And Prahas are looking right on top at this situation. 74 the score. Highest score of the tournament registered by United Mudipinar. And they set a huge target in front of MFC strikers of 75 runs.
तो यहाँ पर 1000 रुपए का नगद पुरस्कार 1000 rupees cash prize declared by the franchisee owner of United Mudipu for Prabhas for hitting 5 consecutive sixes in the last over. This is an outstanding batting display. So he is remained unbeaten on 31 in just 60 deliveries with a strike rate of 517. This is an outstanding, absolutely outstanding. और गौरीश ने भी बेहतरीन पारी खेली 18 रनों पर नाबाद रहे. गौरीश remained unbeaten on 18 including 2 sixes. Prajvit the only man dismissed for 17 in just 4 deliveries. The strike rate of 425 and now the huge target in front of MFC strikers 75. They have to score in the stipulated 24 deliveries. That means in the stipulated 4 overs with a required run rate of exactly 18.75 runs for their inning starts. So with the just short while team we are taking short break और एक छोटे से ब्रेक के बाद खुद मेरे साथ गोपी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा जब यहाँ पर MFC स्ट्राइकर्स की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಕಾಸ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮುಡಿಪು ಸರ್, ಇವರು ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೈರಂಗಳ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಪುತ್ರರಾಗಿ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. So the innings of MSC striker is now going to start. Stupendous task in front of them. 75 they have to score in 4 overs. First ball, पहली गेंद उछालना चाहा इस वक्त चूके और गेंद गली पर पहुंची इस वक्त. Just a single he got and with that single MFC strikers are off the mark. It's one without loss in the first over. So Nitesh starts the fresh proceedings. And now once again here he comes. This time bowling to right-handed batsman Sushan. This time just gone for a big one, not succeeded. Wicket keeper just timing towards to the ball at the last moment, unable to collect that one. But there is no possibility of any run in this delivery. And the scoreboard stays at one without loss. Nitesh, 2 good deliveries bowled by him in this over. Once again here he comes, right arm over the wicket. Lofted in the air, chance for the mid-wicket feeder. Oh, misjudgment. This is an absolutely misjudgment. The catch for the mid-wicket fielder, but at the last moment, he's just leaving the ball to the hands of a deep mid-wicket fielder. Because of that, the ball fell in the vacant area in between the 2 fielders. And the chance is now gone in vain. Single run added, 2 runs on the board here to lose a wicket again. The bowler bowls. Lofted that one this time. Chance and taken at long off. First wicket fallen. Shiva the man departs. And finally long off fielder made no mistake. Now it's 2 for 1 in the first over for MFC strikers. Number 3 batsman Sujir is now comes out to the middle. The striker, they badly require some miracle batting at this age, at the situation to reach the phenomenal score of 75. Next one, much straighter line. Just wanted to loft that one, not succeeded. And collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Good over progressing here so far from the bowler Nitesh. Here he comes last time in this over. This time misses, stucking to the stump. Just we have to wait for the umpire decision. Now it's going to be a third umpire. So I think automatically stump done by wicketkeeper at the last moment, and because of that, just we have to wait for the third umpire decision. Over completed. In fact, it's third umpire review for bowled, I think so. Stump, automatically stumped. So we have to wait for the third umpire decision when the ball hitting to the wicketkeeper's leg. After hitting his leg, it stuck to the stumps, and that time the batsman
was stays at the crease or he is out of the crease. Just we have to wait for the third umpire decision and what the decision came from the third umpire. He's gone, in fact. He was just shot out of his crease when the ball hitting to the stumps after hitting the wicketkeeper's leg. Automatically stumped done by wicketkeeper. And because of that, the man, Sujir, has to go. And a second wicket loss for them. Now they are 2 for the loss of 2 wickets. Absolutely some phenomenal batting required for MFC Strikers to reaching the magical mark of 75 in 4 overs. They are really struggling at this situation. 2 for the loss of 2 wicket after completion of first over, and a fantastic over came student from Nitesh, who conceded just 2 runs and got a couple of wickets. 73 to get in remaining 18 balls. Only boundary and sixes can change the picture of the match on the sides of MFC Strikers at this situation. So first ball of his fresh over is now coming up. Gaurish, the bowler, who batted brilliantly throughout this tournament and he's done a good job also in the bowling department. Here he comes. First ball of his fresh over, right arm over the wicket. This time, driven that one, not connected that one properly, but he got a single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 3 on the board. In fact, they come back for the second because of that misfeed and get it comfortably at last. Couple of runs added. New batsman Sharath. Sushant got a couple of runs in the previous delivery. Once again, Gaurish bowls. 2 runs are the off stump. And wide declared by umpire. With that single run, the scoreboard moving up to 5 on the board for losing 2 wicket. Runs are hard to come by at this situation for the batsmen of MFC Strikers. Still have a long way to go. 71 run, 70 exactly runs they have to score for victory. This time just gone for a big one. Extra quicker from the bowler. Came along the ground from the bowler Gaurish, and the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 5 for the loss of 2 wicket in the over number. Second in progress. Gaurish bowls. This time lost it and has got the distance. Exactly the same type of some more strokes needed for the batting side MFC Striker to get back into this match. Maybe 7 or 8 sixes can change the picture of the match on the sides of MFC Strikers. The 6 number 1 of their innings came from the bat of Sushant. And again Gaurish comes. This time driven that one down to mid-on. Can't got any run. And the scoreboard stays at 11 on the board in the over number. Second in progress. Again Gaurish bowls. Right arm over the wicket. This time just gone for a big one. Get some extra bounce for the bowler. And the ball, after beating the batsman bat, it's went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. And the scoreboard stays at 11 on the board for losing 2 wicket. So really a struggling time continue here for the batsmen of MFC Strikers at this situation. Gaurish lost it. This time he's got the distance. 6 number 2 in this over. But that is not enough for them. What I told you before. They badly required a couple of 7 or 8 more sixes at this stage to get back into this match. 17 on the board, 2 overs completed. 58 to get from 12 deliveries. That means from the 2 overs. The required run rate straight away gone up to exactly 29 runs per over. 12 balls, so 58 runs required. Still, I must say, United Mudipu are looking right on top at this situation. Fantastic live coverage we are just watching here from King Sports under the great leadership of Mr. Irfan. And now, not even in India, but in the outside of India, thousands of spectators watching this fantastic tournament, which is proudly telecasted fantastically by King Sports.
And now once again the ball starts a fresh over from Puneet. First ball. Driven that one down to long on. In fact, he's got a single for that stroke. With every ball, the pressure is now building up on the sides of the batsman. The asking rate is now creeping up for them. Now, 18 on the board. That means 57 to get from remaining 11 balls. 57 runs to get from 11 balls. And now Puneet once again comes right arm round the wicket here. In fact, here he bowls. Gone for a big one, misses. Good one from the bowler. Went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman. There is no possibility of any run. 10 balls, 55 runs required. In fact, it's a 57 runs required from 10 balls. Misses. And now, even 9 sixes can not changing the picture of the match on the sides of MFC strikers. 57 to get from 9 deliveries. Lofted. And one more 6. Sushan, 6 number 3 came from the bat of Sushan. The scoreboard is now moving up to 24 now. 51 to get from remaining 8 balls. If the batsmen convert all 8 deliveries for 6, that is not enough for them at this situation. And Puneet, after making some fielding adjustments, here he comes right arm round the wicket. In fact, here he bowls to the right-handed batsman Sushan. Again, turns it away down to a square leg. Slight bit of fumble there. Gone through for a quick single and get it comfortably at last. Slight bit of fumble made by the square leg fielder. And before that, the batsman got a time for a crossed over for the single. 25 for the loss of 2 wickets now. 7 balls left. Exactly 50 runs required. It looks like just a formalities remaining in this match if any miracle things will not happen in this remaining 7 deliveries. 50 exactly runs required in remaining 7 deliveries. Puneet comes last time in this over. Right arm round the wicket. This time misses. Quick piece of work made by wicketkeeper. Brilliant wicket keeping made by wicketkeeper. And now the over has been comes to an end. So the batsman survived and the third over has been came to an end. 25 on the board, 2 wickets lost. Exactly 50 required from last 6 balls. It's going to be purely one-sided game at this situation. And I must say, United Mudipu are heading towards their victory. Just a formalities remaining in this last over. In fact, if any miracle things will not happen, the bowler Likith starting a fresh over. First ball of his fresh over is now coming up. Right arm over the wicket. Here he bowls. First ball. Loved it and taken comfortably inside the fence, and that is the end of the good innings from Sushant. Hit 3 sixes, scored 22 runs, and he's back into pavilion. And one more wicket loss for MFC strikers. 5 balls remaining, 50 runs required, and now it's just a formalities remaining in this match. So we are just waiting for the number 5 batsman. Charit, the number 5 batsman, is now comes out to the middle. Charit, who conceded 31 runs, he conceded 5 sixes, which hit by Prahas when he is bowling. Lofted and taken once again. One more wicket. Consecutive wickets for the bowler Likith, and now he is now looking on hat-trick. So number 6 batsman is now comes out to the middle. Prithvi. And just 4 balls left in the innings. And Likith is now on a hat-trick.
hat-trick balls comes from Likith, right arm over the wicket, bowling to the right-handed batsman Prithvi. Full toss, beam delivery and a wide declared by umpire. 26 on the board. Again, here he comes. This time misses. Wicket keeper just jumping towards his top side to gather the ball fantastically at the last moment, and the scoreboard stays at 26 without loss. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ನಡಿಗುತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಯೋಜಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ವಿಜಯ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಡಿಗುತ್ತು, ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಡಿಗುತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So just 2 balls left. And Likith bowls right arm over the wicket. This time gone for a big one. Misses. Lost his wicket. Bowled out. And now just 1 ball left. 49 runs required. So the last ball of the semi-final match is now coming up. Just formalities now remaining. And just the bowler Likith complete the formalities. Driven down to long on. That's it. A big margin of 48 runs victory for United Mudipinar, defeating MFC Strikers, and with that victory they are through to the grand finale of this competition, and of the grand finale, mega final of this prestigious cricket tournament. MPL Mudipu Premier League season 7 2025 is now going to play between United Mudipinar versus STC Ayodhya Nagar, and that mega final grand finale match is now coming up live exclusively right in front of you within just a short while. Till then we're taking a short break, and we'll be back right after the short break with myself Gopi when the match mega final match will going to begin right after the short break. And now it's time for break. Thank you. ಶ್ರೀ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ SMC ಮುಡಿಪು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7 ನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 10 ತಂಡಗಳ 2 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೊಂದು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ 2 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ SDC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮೈದಾನ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ. 10 ತಂಡಗಳ ವರ್ಜರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. So man of the match of this match, undoubtedly the man who hit 5 consecutive sixes in the last over of their innings and scored 31 runs in just 60 overs with a strike rate of 517. Prahas edged the man of the match. He also got 1,000 rupees cash prize from the franchisee owner of United Mudipinar. Prahas of United Mudipinar, I request Mr. Prahas to please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. And also he has to receive 1,000 rupees cash prize from the franchisee owner of United Mudipinar. Thank you. ಇವರಿಗೆ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಡಿಗುತ್ತು ಸರ್, ಇವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 1,000 ನಗದುವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟದ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಲಭಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಹಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ತಿರುವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂತ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಹಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಪಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮೈದಾನ, ಮುಡಿಪು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ SDC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಅಂತೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 10 ತಂಡಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಓನರ್ಸ್ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ SMC ಮುಡಿಪು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯಕ ನಡಿಗೊತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮುಡಿಪು ಸರ್ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೈರಂಗಳ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. SDC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಅದು ಬಹುತೇಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂತೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮದುಮಗಳ ಕೃತಿಯಂತ್ರ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಂತ ಆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಯಾರ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಡಿಪು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಇರುವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 60,000 ನಗದುರೊಂದಿಗೆ SMC ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ನಗದು 30,000 SMC ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ತುಳಸಿ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೃತೀಯ ನಗದು 15,000 ಮತ್ತು SMC ಟ್ರೋಫಿ ಸುಧಾಮ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚತುರ್ಥ ನಗದು 15,000 SMC ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದುಬೈ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಭಾಗ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ SDC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ SMC ಮುಡಿಪು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7 10 ತಂಡಗಳ ವಿಭಾಗದ 2 ವಿಭಾಗದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಎಂಬುದ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ
ಇದು ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ನಡಿಗುತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಸರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೀ ಮುಡಿಪುನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ SMC ಮುಡಿಪು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ದ ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 10 ತಂಡಗಳ 2 ವಿಭಾಗದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪೂಪಾಟಿಕಲ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವಾ ಕೋವೆತ್ತಬಲ್ ಸರ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವಾ ಕೋವೆತ್ತಬಲ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. The SDC Ayodhya Nagara, the Amma cricketers Majirpalla, the SMC, the Pajir, the United Pudipinar, the KFC Kurnat, the MFC Strikers Vidyanagara, the Webley Warriors 10 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಂತತದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಓನರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಶಯಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋವೆತ್ತಬಲ್ ಸರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕೃತರಾಗಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಧನುಷ್ ಇವರು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲ್ವಾ ಕುವೆತ್ತಬಲ್ ರಂಜು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಚು ಬಲಿ ಚೂಚು ಓಲಿತನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ 2 ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಕಪ್ತಾನರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಮಹಾಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅತಿಥಿ ಮಹಾಗಣ್ಯರನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯಕ ನಡಿಗುತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮುಡಿಪು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೈರಂಗಳ ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವಾ ಕುವೈತಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಆಯೋಜಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ SDC ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪು ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹಾರಿಸುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರು ಅವರನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ SMC ಮುಡಿಪು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಂತ SDC ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಮಹಾಗಣ್ಯರ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಲು ಅತಿಥಿ ಮಹಾಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ನಡಿಗುತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮುಡಿಪು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೈರಂಗಳ ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವಾ ಕುವೆತ್ತಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಶುಭ ಆಶಯಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ 10 ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗೆ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಂತಹ SDC ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ಒಂದೆಡೆಯಾದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೀಸನ್ 7 ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಒಂದು ಮಧುಮಳಗತ್ತಿ ಅಂತ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಯಾರ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗದೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಂತೂ ನಾವಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರ ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 25 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಫೈನಲ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು SDC ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ಇದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಕೂಡ ಇದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗದೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನಗಳ ಇದು ಪಾಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಮಹಾಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನದ ವಿತರಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ SDC ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 7ರ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Right, the grand finale of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now coming up live exclusively right in front of you between United Mudipinnar versus SDC Ayodhya Nagar. So news is here from the center that the captain of SDC Ayodhya Nagar, after won the toss, he elected to field first. And because of that, their fielders are now spreading out on the field, and we are just waiting for the openers of United Mudipinnar. And so as far as the journey is concerned for SDC Ayodhya Nagar in this tournament, they are unbeatable. They won all the matches, all the league matches. After that, they won the qualifier match, and they are straight away through to the final. They are undefeated till now. And as far as the United Mudipinnar is concerned, they lost only one match in their league stage. After that, they come back very well like a phoenix, and after that they won all the league matches and knockout round matches, and after that they are through to the grand finale of this competition. So we are expecting some fantastic battle in this grand finale of MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now coming up live and exclusively right in front of you. And myself, Gopi, once again welcomes you behalf of the organizers from the all spectators. And now we are just witnessing a final battle is now going to begin. And let's see who will be the champion of MPL Season 7 2025.
So opener batters, as usual, comes out to the middle for United Mudipinar or Gaurish and Prajvit. In fact, the bowler starts the fresh proceedings is Vikas. And we are just waiting for the first ball of the mega final, grand finale of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025. So it's already cloudy atmosphere. It's 5:25 in the evening, and the final battle is now going to begin for the title. First ball of grand finale match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. अंपायर ने इशारा किया कि फाइनल मैच की शुरुआत हो. पहली गेंद लेकर गेंदबाज विकास की गेंद इस वक्त लेग स्टंप पर आते हुए, और गौरीश ने गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. और फिर से एक बार गेंदबाज विकास इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद गौरीश के लिए उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एंड चांस एंड ड्रॉप्ड. He dropped the golden opportunity, gone in vain. The key wicket survives for United Mudipinar. आसान सा मौका यहां पर गवा चुके हैं शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर, और वो भी गौरीश का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में, इस श्रृंखला में बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है. और यहाँ पर उनका विकेट, उनका कैच गंवाना निश्चित रूप से यहाँ पर एसडीसी के लिए काफी भारी पड़ सकता है. तो इस वक्त गौरीश जीवदान के साथ साथ एक रन प्राप्त कर चुके हैं. प्रज्वित सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद प्रज्वित के लिए, गेंद को उछाला इस वक्त इनटू द गैप एज वेल, वन बाउंड इनटू द फेंस. फैंटास्टिकली स्ट्रक. Just after exposing the stumps, lofted that one, finds the gap as well. Just taking the, so his intentions is pretty clear. Just taking the aerial route, just taking the power play advantage, and he just lofted that one in a style just wide of the long on fielder and got the boundary for that. Fantastically struck. और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर. एक बार फिर से विकास इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट. बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद को उछालना चाहा, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और लगभग उनके पिछले पैर पर टकराई, बैक लेग पर टकराई. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 5 विदाउट लॉस. और गेंदबाज विकास अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार लॉफ्टेड. दिस टाइम आई थिंक इट कुड बी अ चांस. नो वन इन दैट एरिया. इन फैक्ट द बॉल फेल बिटवीन द 3 फील्डर्स. And the batsman come back for the second run. हालांकि गेंद काफी देर तक हवा में जरूर थी, लेकिन आखिरकार खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान और बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर. रनर इस वक्त प्रजीत के लिए आ चुके हैं. और इस ओवर में अंतिम बार विकास गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वित के लिए इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है. ये गेंद इस बार क्विकर गेंद, बेहतरीन गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर. द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड अ गुड ओवर as far as the power play is concerned. In the power play, Vikas bowled a perfect over, good over. He conceded just 7 runs in the power play over, and after first over steady start for United Mudipinar. It's 7 without loss. 7 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के पहले पावर प्ले ओवर के खत्म होने के बाद यूनाइटेड मुडिपिनार इस वक्त जोड़ चुका है. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है इस छोर का, तो देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त इस छोर से गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हैं. सूरज गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ यूनाइटेड मुडिपिनार की पारी में. दर्शकों की तादाद इस वक्त काफी हद तक बढ़ चुकी है. मैदान के चारों ओर दर्शक इस वक्त नजर आते हुए, और भरनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेगा फाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत एमपीएल मुडिपू प्रीमियर लीग सीजन 7 2025 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ. और ओवर की पहली गेंद लेकर सूरज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ
ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लेग स्पिन के तौर पर यह गेंद इस पर उछालना चाहा गौरीश ने, चूंकि ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। हालांकि गौरीश ने मांग जरूर की वाइड की, लेकिन अंपायर ने इशारों से कहा कि जी नहीं, गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही। हालांकि विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटकाए, लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद, बैक लेग क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। और अगली गेंद दाहिना तो बढ़ता विकेट, इस बार गेंद को खेला डीप मिड विकेट पर, मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद आई थी उनकी और डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में आफ्टर फर्स्ट पॉन्च, पहले टिप्पे के बाद, लेकिन गेंद की रफ्तार को भापने में असफल और गेंद पर अपने हाथ जरूर उड़ाए, लेकिन गेंद उनके हाथों को चीरती हुई सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो सूरज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गौरीश के लिए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया गौरीश ने, इस वक्त गेंद पहुंची वाइडिश लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा, जस्ट सिंगल रन एडेड टू द टोटल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर, 12 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। फैंटास्टिक फाइनल बैटल इज नाउ स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट MPL मुडिपू प्रीमियर लीग सीजन 7-20-25। और सूरज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, पंजवीत इस वक्त सामना करते हुए, और ये गेंद इस बार पंजवीत के लिए बाउल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन एंड लॉस्ट हिज मिडल स्टंप। एक्स्ट्रा क्विकर डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर सूरज एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। The ball came much straighter line, passed between his bat and leg and stuck to his middle stump. Bills are disturbed and that is the wicket number 1 now. Now it's 12 for the loss of 1 wicket and Prajvit departs. शाम के 5:30 यहाँ पर बज चुके हैं और धूप लगभग मैदान से गायब हो चुकी है, लगभग बदली भरा वातावरण, क्लाउडी एटमॉस्फेयर मैदान पर छा चुका है, और यहाँ पर वक्त जो कि ढलता हुआ और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी भी मैदान पर कम होती हुई यहाँ पर। और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो इस श्रृंखला MPL मुडिपू प्रीमियर लीग सीजन 7 2025 का चैंपियन कहलाने के लिए यहाँ पर संघर्ष जारी है इस मेगा फाइनल मैच में। सूरज दाहिना तो ओवर द विकेट ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, और गेंद को जब तक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। ऑन साइड पर गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया था अंतिम क्षण में और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, 14 ऑन द बोर्ड, losing 1 wicket in the open number 2 in progress. Still a ball left in this over. सूरज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ over the wicket, again quicker, absolutely fantastic delivery, and this time I think it's just got the rid of the batsman. This is a peach of the delivery, extra quicker, and the ball passed between the batsman's bat and leg and stuck to his uprooted his middle leg stump. So perhaps the man departs and a second wicket loss. They are looking in trouble now for the first time in this match, United Mudipu. Now it's 14 for the loss of 2 wicket. And the second over came to an end. So this is an extraordinary delivery ball by the bowler Suraj. The ball came like a lightning at the last moment and passed between batsman's bat and leg and stuck to his uprooted his middle leg stump. Outstanding delivery from the bowler Suraj. So 2 overs completed, 14 on the board, 2 wickets lost. Still the batsmen of United Mudipu searching for the right track at this situation. Praveen, the bowler, brought into the attack. The bowling department is so good for SVC cricketers. SVC who Hakuakallu. STC in fact. STC Warriors in fact. And now third over starts in their innings. STC Ayodhya Nagar in fact. The bowling lineup is pretty good for them. And now once again, this time gone for a big one, not succeeded. Has got a single for that stroke. 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर, 15 ऑन द बोर्ड, for losing 1 wicket at the start of the third over. प्रवीण गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं, सामना करते हुए इस वक्त नितेश।
फ्लाइटेड गेंद, बेहतर गेंद इस वक्त टॉस की गई थी, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, गेंद के फ्लाइट को समझ नहीं पाए और गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई सीधे गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। गण्य अतिथियों के सम्मुख में फाइनल मैच इस वक्त प्रगति पर। यह गेंद उछाला, नॉट क्वाइट मिडल की चांस फॉर द मिड ऑफ फील्डर और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। नितेश की भी पारी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर करारा प्रहार करना चाहता लेकिन गेंद मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, टॉप एज पर टकराई, हवा में उछली और मिड ऑफ पर इस कैच को बाखूबी लपक लिया गया फील्डर द्वारा 20 गज के दायरे के अंदर। वन मोर विकेट फॉल एंड द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर द बैट्समैन ऑफ यूनाइटेड मुडिपिनार। और टॉस जीतकर पहले जो फील्डिंग करने का निर्णय लिया था एसडीसी अयोध्या नगर के कप्तान ने उस निर्धार का संपूर्ण समर्थन जस्टिफाई करते हुए इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज एसडीसी अयोध्या नगर के, और निश्चित रूप से यहां पर रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए बल्लेबाज यूनाइटेड मुडिपिनार के। तो 3 बॉल्स लेफ्ट। तो इस वक्त So now everything set for the next ball of the match और गेंदबाज इस वक्त तैयार प्रवीण, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद ढीली गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए दिशाहीन गेंद थी और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर। 16 on the board for losing 2 wickets. In fact, turns it around the corner down to a deep square leg. In fact, he's got a single side bit of fumble is going on there. In fact, they're looking for the second but won't get it. और बल्लेबाज सिर्फ 1 रन के साथ यहाँ पर संतुष्ट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। 17 for the loss of 3 wicket. और अभी भी रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए बल्लेबाज यूनाइटेड मुडिपिनार के सामना करते हुए इस वक्त गौरीश जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए, और इस बीच गेंदबाज तैयार, इस बार लॉफ्ट किया है डीप मिड विकेट पर सीधे फील्डर के हाथों में। द प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड गौरीश जस्ट पेड द पेनल्टी फॉर दैट। इज आउट फॉर 10 इंक्लूडिंग 2 बाउंड्रीज, ही स्कोर्ड 10 runs. In fact, 1 boundary scored, 7 runs he scored, 1 boundary. He hit 1 boundary, including and after being playing a knock of 7 runs, including 1 boundary, he's back into pavilion. It's 18 on the board, 4 wickets lost, and this is a really testing time continuing here for the batsmen of United Mudipinar. We're just waiting for the number 6 batsman. नंबर 6 बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है। चित्तरंजन नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए निस्संदेह चंद चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत है यूनाइटेड मुडिपिनार के बल्लेबाजों को अपनी टीम के रन की गति को एक्सेलरेशन देने के लिए। 17 ऑन द बोर्ड। थ्री रन स्कोर्ड इन दिस ओवर और गेंदबाज इस वक्त तैयार, रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहता, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट टर्न बैन पर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 18 नाउ। 18 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। 3 overs completed, 18 runs on the board, and still first 3 overs belongs to the bowlers of SDC Ayodhya Nagar. They bowled brilliantly and they conceded just 18 runs in the first 3 overs and captured 4 vital wickets of United Mudipinar. And they are looking right on top at the situation. अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस अंतिम ओवर में यूनाइटेड मुडिपिनार के बल्लेबाज क्या बंधनों को तोड़ पाते हैं, क्या चौके और छक्के लगा पाते हैं इस अंतिम ओवर में। गेंदबाज गुरदीप इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, ಗುರುದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾಫ್ ಕೀಜಿಯೇ ಇಸ್ ವಕ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಪಲಾಯ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So the first ball of his fresh over is now coming up. गुरु दीक्षित गेंदबाजी शुरू करते हुए, डीली गेंद इस बार पुल किया गेंद को खूबसूरती के साथ डीप बैक स्क्वायर लेग पर इनटू द वेकेंट एरिया फॉर अ बाउंड्री. शफल होते हुए स्टंप्स कवर करते हुए गेंद को ऑन साइड मोड़ दिया खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए बल्लेबाज ने, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर. चित्तरंजन के बल्ले से चौका लगता हुआ. जस्ट 5 balls left इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन द इनिंग्स और गेंदबाज चित्तरंजन इस वक्त गेंदबाजी माफ कीजिए गेंदबाज गुरदीप इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. गुरदीक्षित चित्तरंजन के लिए अगली गेंद.
ये गेंद उछालना चाहा, गेंद को उछाला भी, लेकिन फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर। एक रन मिलेगा, एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। बेहतर फील्डिंग वहां पर डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा। और ಇವರಿಗೆ ವರುಣ್ ಇವರು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಗದೀಶ್ ಪಿಲೈ ಸರ್ ಇವರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. so single he got, and next one from the bowler is bar. Oh, caught and bowled. Caught and bowled. He just wanted to play that one too early, and the ball got his stoppage. और गेंद सीधे पहुंची गेंदबाज के हाथ में, कॉट एंड बोल्ड। और इसी के साथ बल्लेबाज लिखित की पारी भी यहां पर समाप्त हो चुकी है। 23 for 5. They are looking in trouble now. United Mudipinar, 3 balls left in their innings. 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, और निश्चित रूप से यहां पर एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज यूनाइटेड मुडिपिनार के, माफ कीजिए, गेंदबाज एसटीसी अयोध्या नगर के एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव कवरेज किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का मुआयना करते हुए यूट्यूब में, जो कि इस वक्त किंग स्पोर्ट्स यहां पर कर रहा है, एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट कहा जाएगा। और जहां तक सवाल है अंपायर का, तो अंपायर ने कहा कि उनका निगदित समय समाप्त हो चुका है, देयर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। ये गेंद, इस बार गेंद कौन साइड पर खेलना चाहा, फील्डर काफी पीछे तैनात है, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, थ्रो पहुंचा इस बार, ओ इस बार कोलिशन, दूसरा रन मिल सकता था इस बार। दिस इज अ फनी थिंग्स इज हैपनिंग देयर, दिस इज एन एब्सोल्युटली फनी थिंग्स। मौका पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे प्रयत्न में भी मौका उनके पास जरूर था, लेकिन आखिरकार इन 3-4 प्रयत्नों में गेंद को वो ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। तो भाग्य बल्लेबाज का साथ देता हुआ, couple of runs added to the total, 25 on the board, 2 balls left. गुरु दीक्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार उछालना चाहा, not connected that one properly, just a single he got, 26 on the board. लास्ट बॉल रिमेनिंग इन द इनिंग्स, अंतिम गेंद लेकर गुरु दीक्षित इस वक्त तैयार, स्ट्राइक लेते हुए चित्तरंजन। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, गुरु दीक्षित टू चित्तरंजन, lost it this time and taken inside the fence. That's it. 26 runs scored by United Mudipinar at batted first in the simulated 4 overs. And a fantastic bowling, thanks to the fantastic bowling performance shown by the 4 bowlers of STC Ayodhya Nagar, and because of that they restricted the batsmen of United Mudipinar for just 26 runs, and now the 27, the target for STC Ayodhya Nagar to become the champion of this MPL Mudipu Premier League Season 7 2025. 27 they have to score out of their 24 stipulated deliveries. That means in their stipulated 4 overs with a required run rate of exactly 6.75 runs for with the help of 10 wicket, the present equation shows for them. और देखते हैं SDC अयोध्या नगर के बल्लेबाज इस 27 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं, निर्धारित 4 ओवर में 10 विकेटों की मदद से, और 24 गेंदे, निर्धारित 24 गेंदों पर 27 रनों ने बनाने, और उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे साथ गोपी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा अंग्रेजी में, जब यहाँ पर एसडीसी अयोध्या नगर की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Right, welcome back once again to the last session of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025. The target is 27 for SDC Ayodhya to become the champion of this prestigious MPL Season 7 2025, which set by United Mudipinar. The innings now going to start. The openers are the crease, Ramesh and Suraj. In terms the bowler starts the fresh proceedings is Nitesh. First ball outside the off stump, starts off with a wide. And with that wide run, the runs account begin for them. It's one without loss in the first over. 27 runs SDC Ayodhya have to score for victory. And this time turns around the corner after being covering the stumps. And he's got a single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 2 on the board. Yet to lose any wicket in the over number first in progress. And as far as the victory of United Mudipinar is concerned, despite have to bowl very well right from the start of their innings as far as the victory of United is concerned. And now the bowler Nitesh, here he comes. Right arm round the wicket. This time, lofted that one and into the gap as well. One bounce into the fence. Fantastically struck came from the bat of Suraj. And he just lofted that one, just taking the advantage of the power play. And just clearing the infield. And he's got a boundary for that. Fantastically struck. 6 on the board. And again, Nitesh comes. Right arm over the wicket. Just 2 fielders stood inside the 20-yard circle. As far as the power play rules and regulations of this power play is concerned for this tournament. And Nitesh once again comes right arm around the wicket, bowls. Again, full toss! Lost that one! This has gone many a miles! It's a biggie! Outstanding struck came from the bat of Suraj. And he's just looking on fire. 11 on the board. In fact, it's a 12 on the board. And this is an absolutely terrific start for them. So 15 more runs required. Again Nitesh ball. Full toss! Lofted! This time I think it's taken inside the fence. So this is the end of Suraj's short but good innings. And he is taken inside the fence at wide is long on. But he done all the damage in the first 3 deliveries he faced. And he's backing to pavilion. So 12 for the loss of 1 wicket. And this is the first over in progress. So number 3 batsman, because he now comes out to the middle. Now he is going to face Nitesh. And here Nitesh comes. Right arm bowling to Vikas. Driven that one, down to long off. In fact, he's got a single. They're looking for the second clean pickup, not more than a single. And with that single run, the scoreboard moving up to 13 on the board. Still a ball left in this over, and Nitesh once again comes. Right arm around the wicket ball. Still some fielding adjustments is going on there. And Nitesh bowls this time. Driven that one down to mid wicket. Gone to for a kick single. This could be in trouble. No, throw came slower. And because of that, the batsman crossed over for the single very safely in the end. So first over completed. After first over, SDC Ayodhya Nagar just chasing the victory target of 27 in 4 overs. This is an absolutely fantastic start for them. All because of that man Suraj, who scored 10 runs in just 2 deliveries, including 1 4 and a 6. And because his help, they are 14. They managed to score 14 runs on the board after completion of first over for losing 1 wicket. Just 13 runs required. The required run rate straight away coming down to exactly 4.34 runs per over at this situation. And absolutely some miracle bowling required for the bowlers of United Mudipinar to get back into this match. So the bowler Gaurish, the very experienced campaigner of their side, a perfect all-rounder, is now brought into the attack. He bowled very well throughout this tournament. And after the completion of first over, the fielding restrictions has been taken off. Fielders are now spread out on the field. And after making some fielding adjustments, Gaurish, first ball of his fresh over. Here he is now coming up, bowling to Vikas. Lofted and taken. Oh, he misses. He misses and conceded a 6. This is a chance for the deep mid wicket fielder. He's got a hand on to that, but in the last moment unable to grab that one. And the ball flicked out of his hands and it's crossed over the fence for a 6. Lucky 6 for the batsman Vikas. And the scoreboard is now moving up to 20 on the board. In fact, the 6 came from the bat of Ramesh.
Just 7 runs required. This time, not quite connected that one. Gone through for a quick single and get it comfortably at last. 21 for the loss of 1 wicket. Leg bye declared by umpire. They are cruising towards to their victory at this situation. Just 6 more to get. And this is a completely dominant performance shown by the players of SDC at Ayodhya Nagar in this final match. Lefty batsman Vikas is now going to face. Here Gaurish bowls. Swept it away just delicately down to a square leg. Gone through for a quick single and get it comfortably at last. And with a single run, the scoreboard moving up to 22 on the board. Just 5 to get for victory to become the champion of this prestigious cricket tournament. MPL Season 7 2025. Again, Gaurish comes. Bowling to Ramesh now. This time God is outside edge, wanted a single but rightly sent back by the non-striker at the last moment, and because of that he is survived and back to his crease very safely. Finally no damage done. Again Gaurish bowls. Oh, good one, absolutely fantastic one, but missing 2 for Osadi off stump and a wide declared by umpire. 23 on the board. Runs are coming quite easily now for STC Ayodhya Nagar. This time not quite get that one, but he got a single. Wide is long on feeder after it, and now it's look like just a formality is now remaining in this match. If any miracle things will not happen in remaining deliveries of the innings of SDC Ayodhya Nagar. Lofted, he dropped that one. He's got a hand on that at the last moment, but the ball was flicked out of his hands. 25 on the board, just 2 to get for victory. This time turns it away. That's it. Deep square leg fence, and that's it. SDC Ayodhya Nagar become the champion of MPL Mudipu Premier League Season 7 2025, defeating United Mudipinar by handsomely 9 wickets with exactly 2 overs to spare. That means exactly 12 balls to spare, and with that 9 wickets comprehensive victory, they become the champion of SDC. They become the champion of MPL Mudipu Premier League Season 7 2025. So congratulations for SDC Ayodhya Nagar for the winners, and congratulations for United Mudipinar for the runners up. They finished in this tournament. So all the cricketing actions is now over in this tournament, and now we are just taking a short break for the last time, and we'll be back right after the short break in the presentation ceremony, and we'll be back right after the short break, not with cricketing action, but in the prize distribution ceremony with our fantastic voice of Gautam, and right in the presentation ceremony right after the short break. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. Her. Fun. Hull. 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 Hull.
So now it's time for the presentation ceremony, which will be starts with just a while. Once again, I will thank the organizers and all the members of the committee of MPL Mudipu Premier League Season 7 2025. Thanks for giving the opportunity. Myself, Gopi, and my friend Mr. Satish Sali, on behalf of both, I will give much more thanks for the organizers of MPL that they are providing the opportunity for us to be a behalf of this, be a part of this tournament. And once again, we are giving a heartful thank to the organizers of MPL, myself, Gopi, and my friend Satish, to be a part of. They are providing the chance to be a part of this fantastic tournament, Mudipu Premier League Season 7 2025. Once again, heartful thanks to the organizers from myself, Gopi, and my friend Satish. Thank you. And we'll be back right after the short break in the presentation ceremony. Thank you. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಟೀಮಿನ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಪಿಂಕ್ ಹೆಸರು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಸಿಬಲ್. ಟಾಟಾ IPL ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್, ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡೋಣ.
ಹಾಂ
ಹಲ್ 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 ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಓನರ್ಸ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ 10 ತಂಡಗಳ ಓನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಶ್ರೀ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ SMC ಮುಡಿಪು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7 ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 10 ತಂಡಗಳ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ SDC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ಅದ್ಭುತ ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತು. ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವಂತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 10 ತಂಡಗಳ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪೂಪಡಿಕಲ್ SBC, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ STC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ, ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಜಿರ್ಪಲ್ಲ, SMC ಪಜೀರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್, KFC ಕುರ್ನಾಡ್, MFC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಬಬಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಧುಮಳ ಗತಿಯಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು 10 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ನಡಿಗೊತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಇರ್ತಂತ ಇರುವರು ಅಂಪೈರ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಸಿರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಮುನ್ಜೀರ್ ಉಬೈದ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ಗೋಪಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಗ್ತಾ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂತಹ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಗೋಪಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 10 ತಂಡಗಳ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯೋಜಕರು ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಶ್ರೀ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ SMC ಮುಡಿಪು ಇದರ ಪರಗತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಒಂದು 10 ತಂಡಗಳು ಅಂತೂ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ತಂಡಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪೂಪಡಿಕಲ್ SVC ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಜಿರಿಪಲ್ಲ ಇದರ ಓನರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಜಿರಿಪಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ. ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಬ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಓನರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೂರದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ತಂಡ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿತ್ತು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ SMC ಪಜೀರ್ ತಂಡ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಇರುವರು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಈ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 2025ನ 7ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಇರುವರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುನ್ವಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಬೈದ್ ಸರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಮುಡಿಪಿನ ಪರಿಸರದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಭಾಗವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇನ್ನುವರು ಮುನ್ಸೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅನುಭವಿಗಳ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ
ಲೈವ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈವರೆಗಿನ ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನಮಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದವರು ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂತಹ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಹರ್ಷದ್ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹರ್ಷದ್, ಅಜ್ಮೀಮ್, ಅದನ್, ಇರ್ಫಾನ್, ಶಾಹೀಮ್, ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಾದರೂ ಓರ್ವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಿದೆ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ತನ್ನು ಮನಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸ್ಕಂದಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಸಿಂಗ್ಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವರು ಸ್ಕಂದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಸಿಂಗ್ ನ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಶಿವು ಇವರು ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅದ್ಭುತ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದವರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ SMC ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀಡಿದವರು ತುಳಸಿ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಡಮ್. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಸುಧಾಮ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದುಬೈ ಸರ್ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೂರಜ್ SDC ತಂಡದ ಸೂರಜ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ರಮೇಶ್ SDC ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾನರ್ ಮೊಬೈಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು ದ ವಿಕಾಸ, ದ SDC ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು. ದ ವಿಕಾಸ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ದ ವಿಕಾಸ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ದ ವಿಕಾಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ದ ಪ್ರಹಾಸ, ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ದ ಪ್ರಹಾಸ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ. ದಯವಿಟ್ಟು ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರಹಾಸ್. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಸಿಕ್ಸರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಹಾಸ, ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಹಾಸ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಬಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಡಿಸಿ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ರು ದ ಪ್ರಹಾಸ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗೌರೀಶ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ದ ಗೌರೀಶ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅದ್ಭುತ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಎನಿಗೆಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಗೈನ್ ದ ಸೂರಜ್ ದ SDC ತಂಡದ ಸೂರಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಕಪ್ತಾನ್ರು ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥವರು ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. MFC ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಬರಬೇಕು. MFC ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬರಬೇಕು. So Mudipinar Premier League, the Mudipu Premier League 2025 ಸೀಸನ್ 7ರ 10 ತಂಡಗಳ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 30,000 ನಗದುನೊಂದಿಗೆ SMC ಟ್ರೋಫಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ SMC ಮುಡಿಪು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಗರ್ಜಿಸಿದ ಹುಲಿಗಳ ಆರ್ಭಟಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದಂತಹ SDC ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ಈ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ. ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 60,000 ನಗದು ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. SDC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates.